दिल नशी दिल नशी दिल नशी दिल नशी दिल नशी इश्क के जान में आग सी नहीं है तुम हो आग सी नहीं है इश्क के जान क्या अरे हम लोग इंटरव्यू देते हैं हम वीजा के लिए हम देखते ही थे इसे इसमें दिक्कत क्या है तुम बात करना नहीं जानते तो करोगे क्या नहीं बहुत गहराई से सब चीज पूछती है सब वो तो पूछे ना ये तो बढ़िया चीज है जितना इंट्रोवर्ट रहोगे उतना पिटाओगे ये ध्यान रखना जिंदगी में इंट्रोवर्ट का भी मत बनो वो पूछ रही है तुम कंप्यूटर साइंस लिए क्यों लिए हाँ क्यों ले लियो ये देखो मेरा गिटहब दिखा देता हूँ क्यों लिया हूँ और तुमको और कौन सा फील्ड पसंद है और क्यों पसंद नहीं है अगर फील्ड नहीं है सब फील्ड पसंद की बात नहीं है एक इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट नहीं है बाकी सब ओह शिट मैं तो अपना टेस्ट नहीं है इश्क के जान में आग सी लगी है तुम हूँ मैं हूँ भैया ये आपके दोस्त थे या भैया मेरा भाई है छोटा भाई छोटा भाई गुड आफ्टरनून भाई काम धंधा चालू करते हैं आज का हम्म,
तो भाई मेरे को पता करना है नंबर पैरेंड्रोन है कि नहीं। पैरेंड्रोन क्या होता है? उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो, एक ही जैसा दिखता है दोनों साइड से। So what I know is okay. So if I want to find that if this number is palindrome or not, some number is palindrome or not, what I will do that okay, one, two, three is there, and two and one. Now if I reverse it, dragon problem solve हो गया। ओ, अच्छा क्वेश्चन है वो, अच्छा क्वेश्चन है। भाई ग्रेजुएटेड हो या अभी नहीं, अभी नहीं बड़ी, 1 year लेफ्ट। 1 year left. So if I want to find out if this is a palindrome or not, what I will do is just reverse it. So after reversing, it will become like this. And what I know is if this is a palindrome, then after reversing, if I check it with original number, and if both are same, fourth, yeah, if both are same, then it means that this is palindrome, otherwise not. So okay, I've given this question. Let's try. Oh wait. Oh, this is the practice section. Try yourself. लिंक्डइन आईडी बताओ अपनी। लिंक्डइन ओके, वेट, आई हैव टू चेक। है भी कि नहीं है, नहीं है तो सही, बट मैं भूल गया हूँ क्या क्या था। ओके लेट्स सी। अरे मेरी आईडी निकल गई, ये रबड़ी। हाँ बोलो, आप लीड करो कोड फोर्सेस का ग्राफ दिखाओ। मैं जस्ट ग्रेजुएटेड मींस 26 पास आउट लास्ट मंथ। ओ, सो आर यू अ वर्किंग प्रोफेशनल और समथिंग, और जस्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब? आई I have to join you. I'm also dev DSA full stack web. Okay, so in which company you are working currently? Okay, so what I have to do here is, wait a moment, I have to do something, right? Yes, bro, I am a remote engineer currently. I am 1 year currently. Oh, that's good. That's good. I am also learning, and soon I will also get a job. So what I have to do? Okay, in this question there is also a negative number. So if I somehow encounter negative, what I will do is n is equals to minus n. Fine. Uh, Previous one is mentioned in my LinkedIn. Current I can't say now just because. Oh, it's okay. It's okay. So what I have to do? There is answer. I will put it equals to 0, and I will check. Okay, while my n is there, what I will do? I will find whatever the last is. Okay, last is there, and after finding last, what I will do? I will write it as 0, and okay, answer plus equals to what? Okay, answer is equals to whatever answer I will get. I multiply with 10 and add the last into 8, and then what I will do is divide it by 10, and I will check if I have to create another variable interval int. Okay, interval is equals to n, and I will check. Okay, if my answer is equals to val, I will return true, else what I will do, I will return false.
False. Yeah, it's working. Hmm. Now another question is Tower of Hanoi. What the hell? So you are given in disk placed on the starting rod with the smallest disk on the top and the largest at the bottom. There are three rods: starting rod, the target rod, and the auxiliary rod. You have to calculate the minimum number of moves required to transfer all end disk from starting rod to target rod following these rules. Only one disk can be moved at a time. A disk can only be placed on top of a larger disk or on the empty rod. Return the minimum number of moves. Okay, so okay. Uh, but it is given that I have three positions. Okay, so this is given. And now there is a disk in this list, this rod. So I have to check that how many minimum operation I have to perform to put all the disk in this final one. So I have one disk, so I can directly put it here. So I have to do some observation. Okay. What I've seen here is okay, when I have one disk, if I have one disk, what I want, okay, how many steps I need? One move. Fine. It's a great concept. It's a recursion question. Yeah, buddy, yeah. Let's try. Okay, and now I have two disks. Okay, so if I have two disks, what I have to do is, wait, yeah. So if I want to put it, what I will do, I will put it here. And so this will take one move, and now I will move it here. This will take two move, and this is here. So it will take three move. So for 2 days, 2 days, what I observe is it take how many moves? Three moves. Okay, and now I will place it here. So I am also uh, working on creating some project previously, but because of some problem, I am shifting towards that DSA. Though I have a craze on competitive programming because of HFTs, but as I am on Tier 3 college, here from here going towards HFT is too much difficult. So that's why I am learning development also. And I completed all the portion, but because of interest, I am again coming towards this. But it's little bit late that I come in fourth year and I started DS in fourth year, but let's see. Bro, जवाब दे दो मैं भेजू प्रैक्टिस कर लो. Do both DS and I am also from Python college. Yeah, yeah, I am currently doing both. ब्रो जवाब दे दो मैं भेजा हूँ प्रैक्टिस करने. मतलब मतलब okay, so if I have three this what I will do is okay, so maybe what I will do is I will put this disk here or here. So let's see if I put it here, what's the problem? Is there any problem or is everything good? So one move, uh, then two move, uh, then three move, and then four move, five move, and this is wrong. So this is wrong. A previous message.
I have to join university. Join university. Uh, J means there. So if I move it here, and so second move, this is third move, this is fourth move, this is fifth move, this is sixth move, and this is seventh move. So it's totally takes 7 move. Okay, so 3 days it required 7 move. 7 moves. Fine. Now let's apply it with 4. Will it be possible to move 4 days? So 1 days, 1 move, 2 move, 3 move, 4 move, 5 move, 6 move, 6 move, 7 move, 8 move, 9 move. नहीं 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 9 move. If I move it here, that's the problem. I don't move it here. There's something gone wrong. 1 move, 2 move, 3 move, 4 move, 5 move, 6 move, 7 move, 8 move, 8 move, 9 move, 10 move, 11 move, 12 move, 13 move, 14 move, 15 moves. So for 4 days, for 4 days, it required 15 moves. 15 moves. 15 moves. So if I see the pattern, yeah, it's 15. So if I see the pattern, this will be 2 raised to power 0 minus 1. And now this will be 2 raised to power 1, 2 raised to power, sorry. This is this is 2 raised to power 1 minus 1. This is 2 raised to power 2 minus 1. And what is 2 here? 2 is basically how many disks I have. And if I see here, this is 2 raised to power 3 minus 1, and this is 2 raised to power n minus 1. Oh, sorry, not n, it is 4 minus 1. So for n disk, it is equals to 2 raised to power n minus 1 moves. So basically, the answer will be a return to 2 raised to power n. There is something called I have to use the power function. So what is the constraint? N is equals to 20 now. So if I create another power function, int power n 2 raised to power n. So int n, and what I will do, there is a base case that when n is equals to 0, I will return what? I will return 1.
And otherwise, what I will do, I will return 2 multiply by whatever the power function power into n minus 1. Okay, and what I will do inside power, I will pass whatever the 2 raised to power n is given minus 1. So what is power? Power h return. So will I store it somewhere? I will take int n, and now I'll check if this is n is equals to 0 or not. If it is equals to 0, then I will return 1, and otherwise I will multiply with 2, that how many terms I have. Means what I was thinking is, like, if I want to calculate 2 raised to power 5, it is same as 2 into 2 raised to power 4. So 2 raised to power n means 2 into 2 raised to power n minus 1. I think so. So wait. So what's the problem? In Tower of Hanoi, I have to return that what all are the outputs. So I see that, okay, int answer equals to power h, and inside that I will pass that, okay, my base is this and my exponent is something else. So if n is equals to 0, I know that I will check, okay, if n is equals to 0, I will return 1. Means 2 raised to power 0 is 1. Okay, and otherwise what I will do, I will take whatever the 2 and I will decrease the power by 1. Okay, oh, sorry. Oh, okay. I've passed the beat also, no? Sorry, sorry. Into base. So basically I have to return 1, and here also I have to pass whatever the base is, that I have this base and I will multiply it base. Then base into base. So base is 2, and now I multiply. What I also observe here is that what I have to do. So if someone tells me that, okay, that I have to print that how actually the Tower of Hanoi will work, what I observe. Let's copy it down. Let's try.
that how actually this will be created. This is the power function in the moment. I have to stop somewhere. Like when I have to stop, that I will stop when my every disk will reach, or what I have to do is I have to write a void here, and inside the void I will pass when n is equals to 0, I will return. Okay, now what I observe is that if I see here in this, what I actually do is if I have 4 disks, wait, yes, sorry, if I have 1 disk, I will simply put it here. Okay, now if I have 2 disks, suppose if I have 2 disks, then what I will do, I will put all of the disks somehow at this point, and that largest disk will be placed here, and all the n minus 1 disk that is left will be put after it, right, somehow. So this is the observation. So what we actually do is, what we actually do, right away, good proof. So what I have to do is that I have to put tower of n on. Okay. So what I will do, I will put n minus 1 days, uh, and n minus 1 days. So basically it is given that this is from, okay. I have to create 3 rods here. One rod, okay, see, I have to check. Control C and control V. And if I have 2 disks, is there? Okay, if I have 2 disks, this is 1 disk and this is second disk. So what I actually have to do is that, okay, that I don't know how many disks are there. What I have to do, if I want to place this disk inside this, first I have to remove all n minus 1 disks into the auxiliary one. So if I consider this, this is from, and this is 2, not this is not 2, this is auxiliary, and this is 2. So I have to move, uh, what I have to do? What I have to do is, I have to start it from, right? And I will move n minus 1 disk from, okay, so I will start it from, and where I have to put it in auxiliary. So 2 will become auxiliary now. Okay, and so I will left with 2 here. So I will put it 2 to be auxiliary. Now after that what I will do, that when I put this, okay, so n minus 1 will be shifted to auxiliary, and now what I have to do is I have to shift that 1 disk from to 2. Okay, from to 2. So will I have to print? So will I have to print this? So what I will do, I will print it. Okay, see out. There is some disk. Whatever the n is, and there is some from, and see out to print that. Okay,
this is the inner disk from, and I have to place it from to 2. I have to do something like this, maybe. And after placing that one disk, let's see. After placing this one disk, all n minus 1 disk will be again put from auxiliary to, so auxiliary to 2. So it means that after that again I will call the tower of NOI, and now there are n minus 1 elements that is present. So what I will do, I will start it from, so from is become auxiliary and 2 is become 2 here, and now my auxiliary will become from. So this is what actually happens. Okay. Uh, int from, int to, and int auxiliary. So according to this, mm, mm, so I have to pass. Okay, so I will write that, okay, I have n is equals to 3, so I have total 3 disks, and now I will call tower of Hanoi. And what I will do, that okay, n is there, and what happen is, now my from is 1 and my 2 is 3. It means that from 1 I have to place that node into, I have to place that disk into 3, and my auxiliary will be treated as 2. So basically this is all operation. So what I have to do, okay, so what I was thinking, okay, so there is 1 and this will be 2 and this will be 3. So I will start it from n. So I have total 3 disks, and what I have to do actually is I have to perform this. Okay, I have to perform this. Let's try it if this will work or not. Uh, what the hell? No, I have to write here. I have to write here something. What? From, and I have to write 2 also. And after that, rather than putting this, I will put this in 1, 2, 3. Okay, so I have to give some gap. Now let's run it again. And let's try this. Oh, I want to speak. This is tower of honor. Okay, so I have hmm, oh, rod got tilted. What the hell? Okay, leave it. So I have this rod, sorry, this, and this one. So see, and this is controlling. Okay, this one. So, one from 1 to 3. So this will be from 1 to 3. And now 1 to 2. 1 to 2. And then 3 to 2. Okay. And then 1 to 3. Okay. And then 2 to 1. Okay. 2 to 1. And then 2 to 3. 2 to 3. And then 1 to 3. 1 to 3. Yeah, it's working. So this is Tower of Hanoi.
So there are two observations. The first observation is that how many moves are required. So if someone asks that if I want to move the disk from 1 to 3 and I have total one disk, so it required only one move. If I have two disks, it required three moves. If I have three disks, it required seven moves. For four devices or for four disks, I need approximately five moves. Okay. So it means that for n moves, I require 2 raised to power, sorry, for n disks, I require 2 raised to power n minus 1 moves. And so basically, this is the amount of move that I require. Now, one thing I also observe is that, okay, if I want to place all the disks from starting point to ending point, what I've seen here is, okay, I have auxiliary rod. So what I will do, I want to first put the largest disk inside the ending point or ending dot. So what I will do, I will take out n minus 1 disk and put it inside the auxiliary disk somehow. And after that, what I will do, I will put that largest disk and put it inside the last rod. And after that, I will put all n minus 1 rods into the last rod. So from this observation, what I've seen here is, okay, what I have to do is, okay, I will again call tower of Hanoi, and what I will do, I will put n minus 1 rod or n minus 1 disk from, so okay, it is already given that, okay, the starting point is this and ending point is this and auxiliary point is this. Okay, so what I have to do, I have to put n minus 1 disk and I have to put it from the first row to the second row. So it means that I will start it from and where I have to put it inside auxiliary. So now 2 become auxiliary and auxiliary will become 2. After that, I have left with the largest rod. So what I will do, I will tell that, okay, so there is the largest rod, the largest disk. What I will do, I will put it from to 2. Okay, so now the from to 2 means from first to third. And after that, what I will do, I will left with n minus 1. So all the elements will be present inside the auxiliary rod. So now auxiliary become from, and I have to put it inside the third rod, which is 2. So 2 is similar as 2, and now auxiliary become from. So this is how actually the power of an works. Maybe. Hmm. So what's the question? Question is non-attacking black and white knight. Given integer n and m representing the dimension of chessboard, find the number of way to place one black knight and one white knight on a chessboard such that they cannot attack each other. The knight have to placed on different square. Okay, so I have two knights. Fine. One is the black knight, another one is the white knight, and I have to put it on a chessboard. Now there are some conditions that a knight has to placed on a different square. Okay, fine. A knight can move two square horizontally and horizontally and one square vertically, or two square vertically and one square horizontally. Okay, the knight attack each other if one can reach the other in one move. Okay, so what is n here and what is m? So the first knight can placed in any of the four cells. So what is n first?
n is the two integer and m is also the integer. So I don't know what that integer is. So will n is equals to 2, m is equals to 2. So what is n and m? The first byte can be placed in any of the four cells. Wait, this is little bit confusing. Let me understand the comment. So okay, given integer n and m represents the dimension of a chessboard. I understand that. Find the number of way to place one black knight. Okay, I have to tell that how many ways I have to place one attacking black knight and white knight so that they can never attack each other. And what is n and m? N is something, m is something. And there are 12 ways we can place a black and white knight on a chessboard such that they cannot attack each other. So what is n and m? What it actually telling? Given two integer representing, okay, understand. So basically this is the dimension, fine. So the dimension is 2 cross 2. N and M representing the dimension of a chessboard. So first let's analyze. Okay, so I have 2 cross 2 chessboard. So if 2 cross 2 chessboard, it something look like this. So how there is a 12 way? 12 ways? How there is 12 ways? And for 3 into 2, it says 1 is not 20. For 3 cross 2 chessboard, there are 12 ways we can place a knight. N is equals to 2, M is equals to 2, which represents the dimension of a chessboard. Find a number of ways to place one black knight and one white knight on a chessboard such that they attack each other. Okay, so if I place one knight here and other knight here, so I know that they never. So what is the total possibility that I can place it here? Now with respect to this knight, this is black knight and this is white knight. So this is the one way I can place it here, or I can place it here, or I can place it here. So with respect to this position, there are total how many ways? With respect to this position, I can place it here, here, and here. Three. Yeah. 56. Okay. Hmm. 4 cross 4 chessboard.
One way is that, okay, I will place the black knight here, and with respect to this, I can place the white knight here, and white knight here. Fine. Now, if I place the black knight here, then also the three possibilities that I can either place white knight here, white knight here, white knight here. So total 3 into 3, 9. And now if I place it here, it will become 3 again. So 3 into 3 into 3. And again I got 3. So there are 3 into 3, 6, 3, 9, 90, 80, 81. So there are not 20, 81 ways. Actually, it's wrong. I was thinking in a wrong direction. I have to think something else. Any of the four cell, and the second knight can be placed in any of the remaining three for the knight to attack. One dimension must be at least three. So yeah, I was thinking in that direction maybe. It is given that the first knight can be placed in any of the four cell, right? And the second knight can be placed in any of the remaining three cells. For a knight to attack, one dimension must be at least three. Hmm. How will I get 12 moves? How will I know that, okay, this is 12? That the single knight has 12 moves. Wait. So if I see here that, okay, if I see here, if I see the dimension is 2 into 2, which is less than 3. In any other direction, I will see that, okay, no, there is no 3 dimension. This is 2D array. So what I will do, I will place that, okay, my white knight is first will be put in here. So I will see that, okay, for black knight to not attack, what I will see, okay, I have this position left, this position, this position. So there are total 3 possibilities. Now if I put my white knight here, what I will see is, okay, I will left with this point, and this point. Total 3 points. So maybe I will tell that, okay, now I have more 3 points. Now if I put knight here, white knight here, I will see that, okay, now I currently have 3 position where I will left with where I will put my black knight so that they will never attack each other. Now after that I will see that, okay, if I put my white knight here, again I will left with 3 positions. So there are 3 positions. So if I calculate it, I got 12 ways. So there are total 12 ways so that I can put my black knight with respect to white knight so that they can never attack each other. Fine. So so I will count that after putting the white knight. So what I was thinking, okay, after putting the white knight, what I will see here is I have to count that how many cells I have left. Okay. So how will I know that how many cells I have left? So I know that the dimension is 2 into 2. So there are 4 dimensions. So there are 4 cells. And now one cell is filled. Now how many cells I have left with? I have left with that how many cells? I have left with how many cells? I have left with 3 cells now. So I will tell that, okay, for this I have 3 cells left. So there are 3 possibilities.
For this, three cell left, three cell left, three cell left. So maybe this is some logic. I don't know if this logic is work or not. Let's see. So now I have this array. So basically, okay. So there is a knight. So if I put my white knight here, now I can put my black knight here, black knight here, black knight here, black knight here, but I will never put my black knight at this point, this point. So how many positions I am left with? So what I was saying here is, okay, so if there is a dimension which is either a row, I have seen that, okay, a row has three, and now my column is also column is two. Okay. So what I was thinking is, okay, if I put my white knight here, and so how many cells I actually have? So I have six cells, right? And okay, I have six cells, fine. Now what I also know is that, okay, if I have six cells, it means that my knight will move either horizontally or vertically. So I have to check that at which point I will not put my knight, right? So I know that my knight will move at least in a six dimension. So either it will move like that, that one, two, and three, one, two, and two and half, or two and half, and one. So maybe this is the two way. Right. So one thing I know is, okay, so if I have more than two by two dimension, or if any dimension is more than two, what I see is, okay, I will calculate that how many cells I have. Now in that cell, at one point, I will put my knight, so I will subtract it. And now what I also think is, okay, so I don't know where my knight has to be put in, but one thing I know is that if I put, if I move my knight, it will point to some cell. So it means that for for my black knight, there is one position where I will not put. So maybe I will subtract one more. So I will get there are total 4 points. Fine. Now this is the one possibility. Okay, if I am here, if I am here, uh, if I put my white knight here, what I will see is, okay. So if I am here, I have total five possibilities are there, and at some cell, my white knight is also jumped when I take a one move. So there I will not put my black knight. So again, I have four moves. Now if I put my white knight here, again I have four moves. Okay. If I put my white knight here, again I have four moves. Sorry, four places left. Now if I put my white knight here, if I put my white knight here, there is no way in this cell so that my knight move in any direction and it will cut the black knight. So at this point, what I have observed is, okay, when I am not at the edge points or edges, what I've seen is, okay, when I am not on edges, right? I'm not on this point or on the top row or the bottom row. What I have observed is that, okay, when I put my white knight here, I will check that, okay, from this point,
I will never move, I will never move two positions. And from this point, I will never move two position upward or two position downward. So it means that when I put my knight here, what I have seen here is okay. So basically, I can put my black knight in any of the five positions. So for this I have five, and for this white knight also there is five positions. So if I add them all, 5 plus 5, 10, and 16, which is 26. So I have 26 positions where I will put my black knight so that they will never attack each other. So this is the observation. Now let's see how it actually work. Now I have to write the code. So how will I write it? So one thing I observe is okay, if my n is less than equals to 2 and my m is less than equals to 2, then I got 12 as an answer. So it means that how how will I get 12 as an answer? So I am at certain point, and from that point I have three positions left. So I will calculate that how many positions I have, four positions, and for each position I have three points to 3 points. So okay, I can observe it that this is how actually it will work, but I don't understand how to write the code of this. I have to understand the code also. There is a mathematical formula also, and there is a counting approach. Hmm, let's see both the codes. Room. So I understand that what actually is. Okay, so it is given that to solve this problem using a brute force approach, we can simulate placing the first knight on the every possible square I comma j of n cross m chessboard for each position of the first knight. We then count how many valid squares are available for second knight. A square is invalid for the second knight if it is exact same square at first knight and it is within the move range of first knight as L shape away. For knight placed at I, j, there are up to 8 possible attack position. Yeah, we just need to check how many of these 8 position actually led inside the boundary of n cross m. If the knight at I, j has a valid attacking move on the board, then the number of safe square for the second knight for this position is that the total number of chessboard I have. Okay, and after that I will subtract the one position for that white knight, and after that I will check that how many attacking positions they have,
I will remove that. So we sum this up for every single square. Okay, so attacking position, that from this point how many attacking positions are there, and will be and that attacking position will be inside this or not. So I know that there are total 8 attacking position for a particular point. So if I have this, oh wait, if I have this, and the in a worst case, okay, I will mark it this like this also. Ah, and now one, two, three, and now I have four also. And now if I somehow put my white knight here, so from this position they will move here, they will move here, and from this point they will move here, here, from this point here, here, and from this point here and here. So from a particular point, there are only 8 possibilities. So I have to check in a particular checkboard how many possibilities are there to move. So I will subtract that possibilities. Okay, for each what each cell, and I will calculate. Okay, so when I am standing on this point, I will check that. Okay, I have suppose if I have this much checkboard, I will check that. Okay, from this point, how many possibilities are there inside this checkboard? So these are the amount of positions where I will put my black knight so that they can never attack each other. So it means that first I have to calculate that how many checkboard I have. Then I will subtract one cell where my white knight is standing, and after that I will calculate that how many attacking positions are there. So I will remove that attacking positions. So that is the amount of cell from this point we can put my black knight. Okay, so I understand this. So how will I calculate all the attacking position? Oh, what the hell is this? Okay, so I will calculate. So these are the all the attacking positions. So the 8 possible direction moves of the knight. So what I will do is I will calculate the total ways. Okay, total ways, and there is a total square. So for each point, I will calculate that how many attacking nodes I have. Okay, so there is Ni and Nj. So I will take that dimension and I will check if this will be. Oh, okay. So I will try to write it. And optimal is the mathematical total way to place the distinct knight n cross m total square. The first knight can go on any n cross n. The second knight can go on any of the remaining n cross m n minus 1. Total configuration is there. Counting the pairs for every time two knights attack each other, they form a opposite corner of either a 2 cross 3 or 3 cross 2. Subgrids on the chessboard. A 2 cross 3 block contain exactly two attacking pair of knights, and 3 cross 2 block also contain exactly two attacking pair of a knight. So counting the blocks, the number of 2 cross 3 that can fit on n cross m. Uh, Bro, that's sick. You did 8 hours straight yesterday. How much did you study in live stream a day? 2 times more than. So, okay. There is no time, buddy. मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मैं कितनी देर पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन यही करते रहता हूँ। काम धंधा नहीं है पढ़ाई के अलावा कुछ भी।
तो वो तो मैं लाइव स्ट्रीम 7 घंटे ही कर रहा था, लेकिन उसके पहले मैं 6 घंटे पढ़ चुका था सुबह से उठ के। और फिर स्ट्रीम के बाद भी मैं 2-3 घंटे और पढ़ा था। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, 12 ऐसे पढ़ लेता हूँ, 14-15 घंटे पढ़ लेता हूँ। वेट अ मिनट। द मेन मोटिव इज टू अर्न मनी। और इस टाइम पे अभी कुछ काम धंधा नहीं है, तो यही तरीका है कि यूट्यूब वगैरह खोल लिया है। और कॉलेज कॉलेज में जाता नहीं हूँ, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए, और वैसे ही 4th ईयर में कॉलेज उतना जाना रहता नहीं है, तो मैंने सोचा घर पे ही पढ़ लेता हूँ। तो घर पे अकेले पढ़ते पढ़ते बोर हो रहा था, तो यूट्यूब पे आ गया पढ़ने। ये है। बहुत ज्यादा देर पढ़ते रहो तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और बोरियत आती है, तो इस वजह से मैंने ये चालू कर लिया। 4th ईयर में कॉलेज अटेंडेंस का कुछ लेना देना नहीं है। 4th ईयर में कॉलेज होता ही नहीं, मतलब 4th ईयर है ही नहीं कॉलेज। ऐसा है। या आई एम इन 4th ईयर। So, what is the proof force? So, int night. Which college? Which state? Okay, I am in KCC college, which is in Greater Noida, and from UP. If I am from UP. Night, uh, night two, something like that. Int. Okay, and what I've given? I've given something. I will paste this. That how many moves I have. So this is the all moves. So from this particular point, on which position I will jump. If, wait, I will try. Will try that. What all the other positions? Yeah, I remember now. You told me a few days ago. Yeah. Thank you, buddy. Bye bye. Bye bye. Okay, so night tour, and what I've given here is okay. I have this much board. This is my board. Fine. And now what I have to do? I have to, for each pair, I have to calculate that how many moves I have. So what I will do that, okay, when I'm standing on 0 and 0, so basically if this is X and Y, now what I observe here is, okay, when I am on this point 0, comma 0, I can move up to this point. Okay, this point. So what is this? So basically this is, if I consider this I, now row is not changes, but my column, okay, first consider this point. So from this, I can move it till here. So what is this position? So this position, if I see that, okay, when this is my 0, comma 0, or this is my I, comma j, this is basically what? I minus 2, I minus 2,
And if I consider what is my j here is, so because this the row is also changed and one column is changed, so basically this is j minus 1, I can say. And now this is I minus 2, I minus 2. And if I see this column, which is j plus 1, fine. Thank you, Verdi, for subscribing. Thank you. Thank you so much. Now, if I see here, if I consider this point, now what I observe is, okay, so the row is I minus 1. If I consider this I, this is I minus 1. And if I see this column, the column is j plus 2 because I come uh, forward 2 steps. And if I see this, this is basically I plus 1 and this is j plus 2, the j plus 2 here. So now let's write it down. So I know that I and j is not changes. So I will create an array. Inside that I will put that what all positions I have, and there is dy. Fine. So I am observing that okay, when my first point is that we start in minus 2, and for j it will be minus 1. Okay, and now for another point, I will say that okay, for I minus 2, I got j plus 1. And for after that, what I will see that for I minus 1, I will get what? J plus 2. Okay, and again, I will see that for I plus 1, I will get j plus 2. So this is what I actually observing. After that, what I have seen here is okay, this is I, and I will see that okay, this position will be I plus 2. So basically, not I plus 2. Yeah, this is I plus 2. Fine. This is I plus 2. And if I consider this column, the column will be j minus 1. So the row is increases, column is decreasing. And here I will see that okay, I plus 2 is there and column is j plus 1. This is what I observe. So what I am observing is okay, when my I is 2, I will see that my j is minus 1. After that, when I see that okay, when my I is 2, I was observing that okay, 1 is there. And then after that, I will see okay, my column will be decreases 2 times. So it means that and if I see that for one time my row is also decreasing, which is I minus 1 and j minus 2, and this is I plus 1 j minus 2. So for I minus 1, I see that j is minus 2, and for I1, I will say that j minus 2. I plus 1 j is minus 2. So basically, this is the all points. Okay, so this is all point that I will get. Yeah. Oh, okay. So now what I have to do is I have to iterate. So I will take that, okay, I will take n and m here. N, comma, m, c in n, and I will remove this. Okay, and now what I will do for each position, like for n and for m also. So I have to know that how many positions I have. So in first I will check that for this
a particular from this particular point how many attacking positions I have. So I will check that okay, I have to calculate that how many attacking positions I have. So I will run a loop int I is equals to 0, and there is not I basically, this is k. So it will run and this will be j. So it will run how many times? Dx and dy, which is totally 8 positions. So will it be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? So it will be run till as I starting from 0, it will go till 7. And what it actually do is that it will calculate. It will calculate what? So it will calculate that pause, pause x, position of x. So I know that I am standing on some point, and that some point is what? That some point is I. After that, I will add, yeah, I will add what? I will add whatever the dx and plus this k. And after that, I will find that what is y position, and I will see that okay, y is there, and I will take it with j. So if you not understand, what I actually do is what I know. When I am on, suppose, if I am on this point, 0, comma 0, right? Now I have to know all the attacking position. What I will know is that, okay, so now the attacking position for, so the x attacking positions are k is equals to 0. For k is equals to 0, I will go inside dx. I will see that, okay, minus 2 is there. So it means that whatever I is, I minus 2. Okay, and then I will check, okay, with j, what I have to combine? I have to combine this minus 1. So what I will see is, okay, dy k 0, which is minus 1. So I will write j minus 1. So I will check, okay, from this point, where I will stand, I will check that, okay, from this point, is there any way to reach this I minus 2 and j minus 1? So how will I check? What I know is, so if my I point, whatever the I point, if it is either less than 0, okay, so, okay, and also if my, uh, if any of the point, okay, I have to check all the 4 directions now. So how will I check? So I know that if my, whatever ni, and if this isn't okay, so, okay, fine. So I will check, how will I check is that, okay, I found that this is my pos x, and if this is greater than 0 and pos y, sorry, pos x, if this is less than n, it means that this will be in range of a matrix. And second thing is, if my pos y, position y, is greater than 0 and if my pos y is less than m, if this will be in range. So what I will do, I will check, I will tell that, okay, this will be my attacking positions. Now for this point, I am calculating all the attacking positions. So for this point, what I will do, I will remove that. Okay, so I know that, okay, total positions I have, total, total positions I have, total positions is n into m, fine. And now I have answer is equals to, what I will do, I will take the all total position and now subtract 1 where my white knight is standing, and also subtract all the attacking positions I have, and this is how I actually got it. After that, what I will do, as I want to return the total answer, total moves, which is 0, what I will do is, okay, this is the total move, and I will add all the total move
inside this. And after that, I will see out that this all are the total moves I have. So let's check if this will work or not. So I have to call this mm, night. Okay, so I have 2 cross 2. I got 12. And now I have 3 cross 2. I got 29, which is wrong. Which is wrong. Which is wrong. So yeah, I have done this. Total ways, which is 0 initially, and now the total squares I have, which is n into m. So note, since the total board size can be large, we use long log for counting the combinations to avoid overflow issue. Ah, that's okay. That's okay. But what wrong? Uh, oh, basically I have to take here equals to 7, no? Because there are total 8. I will take 3 into 2. Maybe I will get 29. I will get. I don't know why. So force y. Oh, I have to take equals to 0, no? Because that 0 position is left. Ah, so 3 and 2. I got what? I got 26. So okay. So I will write it again and check if this will work or not. So remove this. Let's try. So let's observe this. Okay, so I have to calculate int dx. Dx is there, and which is equals to whatever. I will paste this because this will be again and again created. So I will paste it down. Control V. Oh, what the hell? What the hell? Mm, I will copy it here. I got okay. So after that, what I will actually do is that okay, and I have I will not do anything. There is int I is equals to 0 and I is less than n and I plus plus, and for their int j is equals to 0 to j is less than m, j plus plus, and now for that, for each point, I will calculate that how many attacking moves are there. So for that, I will calculate that for int attacking, which is equals to 0, and it's wrong. I will calculate it here. Int attacking, and then I will run this loop in k is equals to 0 to k is less than 8, k plus plus, and for each point I will calculate whatever the pause is, pause s, which is equals to whatever the I plus dx of k, and then I will copy dx of y, dy of k, and this will be pause y, and now after that I will check, okay, how many, okay, will my pause x will be greater than equals to 0, and pause x, position x will be less than n. If this is, it means that this will be in range. I will be in range. Then after that, I will calculate for pause y. That will my pause y will be greater than equals to 0, and
pause y will be in range. If this will be in range, it means that I have to add that okay attacking plus plus. So I will attacking that okay how and this is the amount of attacking moves that I have. So what I will do, I will check that how many total moves I have. So total moves is equals to n into m. This is how many total moves I have. And now I will check that okay. So if this is a total move, what I will do from total moves, I will subtract 1 where my white knight is standing and also subtracting how many attackings I have. And after that, total moves, total plus equals to, I will add it into the answer and return answer. So return answer and here int, int, int total is equals to 0. uh, total. Runtime error, time limit exceed. Okay, so basically the time limit is exceeded because it will take the big O of n into m time complexity. And the space complexity is big of 1 because I created only 8 size array. It's constant, which will take constant space. So there is some mathematical complications. I have to observe that math, that how actually the math will be applied here. So okay, so the brute force method runs in big O of n into m times, which works fine for a smaller board. However, if n and m is very large, suppose to n is to power 5, we need an optimal big O of one math solution. Instead of counting square by square, we can use combinatorics. The mathematical logic. Total way to place two distinct knights, sorry. There are n into m total squares. The first knight can go on any of the n into m squares. The second knight can go on any of the remaining n into n into m minus 1 squares. So if I want to place, okay, let's observe it. Okay, so if I have this checkboard, uh, oh, what the hell? Just copy it, paste it here, and remove it. Something. Wow. I will create new one. So I will create a 3 cross 3. Oh, leave it. Just copy this. So if I see here that, okay, I have 5 cross 5. So how many way I can put my knight? So I have two knights. Two knight. So if I want to put my first knight, how many possibilities I have? So first knight possibility is that I can put it anywhere in n cross m. So basically I have this many ways. Now if I were to put the second knight, it means that I already put this first knight somewhere.
So it means that it has only one less than the possibilities that a knight one has. So n into m minus 1. So this is the observation. Fine. So total configuration, I will get that these are all the total configurations. Okay, fine. This one is so after that, counting the attacking pairs, that how many attacking possibilities are there. Every time two knights attack each other, they form the opposite corner of either a 2 cross 3 or a 3 cross 2 subgrid on a chessboard. 2 cross 3 block contains exactly two pairs of knight, and the 3 cross 2 block also contain exactly two pairs of knight. Counting the blocks, the number of 2 cross 3 block that can fit on n cross m board is n minus 2, m minus 1. Count the number of 2 cross 3 blocks that can fit on n cross m board is n minus 1, m minus 2. Have to observe it. Hmm. Every time two knights attack each other, they form the opposite corners of either a 2 cross 3. Okay. So one thing it is given that if two knights want to attack each other, then they are somehow at their opposite positions. Like one knight is here, then other knight will be here if they want to attack each other, right? If I see this, one knight is here, then other knight must be here if they want to attack each other. Fine. Or if I see this, if one knight is here, other knight must be here to attack each other. Fine. So I know that if there is a 3 cross 2 matrix, if there is 3 cross 2 matrix or 2 cross 3 matrix, then, okay, if I consider this matrix, so what I know is if the two knights, one knight is here and another knight is here, or either one knight here and another knight is here. Okay, so how many possibilities are there in a 3 cross 2 matrix that the knight attack each other? How many attacking possibilities? So for each position, there are two attacking possibilities. Uh, this one and this one. There are two attacking possibilities. This one and this one. So what I will do is, if I check that in an any n cross m matrix, how many 3 cross 2 matrix are there? Okay, 3 cross 2 matrix or 2 cross 3 matrix.
I will calculate that how many total 3 cross 2 or 2 cross 3 matrix are there. And after that, what I will do that what I will do after that, what I will do is I will remove all the attacking positions from this 3 cross 2 matrix. Like okay, when I am on here, I have how many attacking positions? So I can attack here, I can attack here. When I am on this point, I will attack here, I will attack here also. When I am on this position, I will attack here, or also I will attack here. So basically, if I remove this four position attacking points, right? So what is the one observation is if in a chessboard, if I find how many or yeah, if I find how many 3 cross 2 or 2 cross 3 matrix are there and remove all the attacking position which is only 4 in any 3 cross 2 and 2 cross 3 2D array. I got something. So let's understand what is actually given. So total way to place, okay, so I can place it, and after that, every time two knights attack each other, they form the opposite corner of either a 2 cross 3 or 3 cross 2 subgrids of the checkboard. A 2 cross 3 block contain exactly two attacking pairs. Exactly two attacking pairs. So if I see here, or will I remove? I have to remove this. Okay. Oh, what the hell? Image is removed. So I have seen here if I consider any 2D matrix 3 cross 2, what I've seen here is that I can place my knight here, I can attack here, and if I place my knight here, I can attack here. Or if I stand here, I can attack here and here. So basically, that both possibilities are same. So it means that from uh, and when, okay, from this point I can attack it like this, and I can also attack it like this. Okay, so it means that each position will contain two attacking points. So if I see, okay, this is given, no, that every time two knights attack each other, they form the opposite corner of either a 2 cross 3 or a 3 cross 2 subgrid on a chessboard. A 2 cross 3 block contains exactly two attacking pairs. Exactly two attacking pairs. A 3 cross 2 block
also contain exactly two attacking pairs. Mm. Two subgrid, exactly two pair mutually attacking knight. We can map out a small way. Standard knight move is L shape. Two square in one direction and one square perpendicular to it. When two knights attack each other, they form a diagonal corner of bounding box measuring 2 cross 3 equals to consider 2 cross 3. So row 1 knight A and this is knight A, knight B, knight B. What's there? Inside the 2 cross 3, pair A, pair 1. The A on knight at row 1 column and row 1 attack the knight at row 2 column 3. A pair 2, a knight at row 2 column 1 attacks the knight at row 1 column 3 because it moved one row up and two column right. तो यहाँ वाला जो खड़ा है वो ऐसे मार सकता है और यहाँ वाला जो खड़ा है वो ऐसे मार सकता है, ठीक है. Because the problem specified at night are distinct, one is black and one is white. Each pair can happen in two ways: white on top left and black on bottom right, or black on top left and white on bottom right. Therefore, every 2 cross 3 block you can find on board contain exactly two pairs into two color combination, which is four invalid attacking arrangements. The same math applies symmetrically to 3 cross 2 well. हाँ, तो मतलब ये है कि एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में टोटल 4 कॉम्बिनेशंस होंगे अटैक करने के. सो यही यहाँ पे बोला गया है कि ये कि मैं यहाँ पे खड़ा होके यहाँ अटैक कर सकता हूँ, यहाँ और यहाँ खड़े होके यहाँ अटैक कर सकता हूँ, यहाँ खड़े होकर यहाँ अटैक कर सकता हूँ और यहाँ खड़े होके यहाँ अटैक कर सकता हूँ. तो बेसिकली मेरे पास दो जो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है उसमें हर नाइट के पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो यहाँ खड़ा हो या यहाँ खड़ा हो. तो अगर वो यहाँ खड़ा है और दूसरा वाला जो है वो यहाँ खड़ा है तो ये अटैक कर सकता है, या फिर ये दूसरा नाइट यहाँ खड़ा है और ये वाला नाइट यहाँ खड़ा है तो वो अटैक कर सकता है. तो एक नाइट के पास एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक नाइट यहाँ खड़ा है, वेट, जैसे कि ये है. तो अब अगर मैं इसको मानता हूँ कि ये मेरा 3/2 का है, तो अगर मेरा एक नाइट यहाँ खड़ा है और दूसरा यहाँ खड़ा है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, वैसे ही इसके पास भी दो पॉसिबिलिटीज हैं अटैक करने की. सही बात है. तो मतलब हर एक नाइट के पास दो अटैकिंग पॉसिबिलिटीज है. फाइन. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ 2 क्रॉस 3 ब्लॉक दैट कैन फिट काउंटिंग. Okay, so for every time two knights attack each other, they form the opposite corner of either of the 2 cross 3 or 3 cross 2 grids, and 2 cross 3 blocks containing exactly two attacking pair of knight, and 3 cross 2 block also containing exactly two attacking pairs.
means two attacking pairs of a knight. ठीक है. So counting the number of blocks that can fit on n cross m matrix is, ये कैसे आया? So the classic combinatorics technique used to count how many smaller windows subgrid can be slide. So the counting the 2 cross 3 blocks takes up two rows vertically and three columns horizontally. Vertically placement. The block is two rows tall. If your board has n row, how many positions can a top of the block occupy? It can start at row 0, row 2, all the way down until it fits perfectly at the bottom. It cannot start at very last row because it needs two rows of the space. And horizontal placement, the column is three column wide. So if your board has m columns, how many position can left edge of the block occupy? It needs three columns for breathing room. Can start from column 1, 2, but it cannot start in the last two columns. Okay, so basically I have to check in a n cross m grid, n cross m grid, how many 3 cross 2 grids are possible. So what I have to observe is, okay, if I have 3 cross 2 grid, so if I consider that 3 cross 2, so it means that I have 3 row and 2 column, right? So if I want the 3 row, okay, so what does it mean that I can start it from here so that I can take the 3 rows. I can start it from here, then also I will take 3 rows. If I start it from here, then I can also take 3 rows. But I will not start it from here because I will not take 3 rows. So it means that the total way to selecting the rows are n minus 2. That I will not start it from this position, n minus 2. So I will start it till this. Same for column, that I can, as I want to take the column, two column, so I will not start it from this position. So I will leave this. So it means that m minus 1. So these are the all possibilities that I will take to form 3 cross 2 matrix from this n cross m matrix. Fine, fine, fine. So I will calculate that how many 3 cross 2 and 2 cross 3 matrices are there. Now after that, I will check that how many attacking positions that I can form in this just 3 cross 2 matrix. So for a single knight, there are two attacking positions. And okay, or I can, okay. So not two attacking positions. How many attacking positions there? Yeah, for a single knight, there are only two attacking positions, or maybe four. So for a single knight, he can attack. Okay, said. So what I know is that, okay, if I have this is how many 3D 3 cross 2 matrix I have. Now I have to check that how many attacking positions for a single knight. So if he will stand here, it can attack here, here. Okay, if he will stand here, he can attack here, here. Okay, if he has stand here, he will attack here and here. If he will stand here, he will attack here and here. So basically for a single knight, there are four attacking positions. So it means that I have to check how many 3 cross 2 matrix I have formed, or 2 cross 3 matrix I have formed. And now what I will do, I will multiply it with how many attacking positions I have.
So I know that total I have n cross m matrix for a night, and then I have n cross m minus m, n cross m minus 1 for second night. So I have this much total possibilities. Then I will check that how many 3 cross 2 matrix I have, and in a 3 cross 2 matrix how many attacking positions are there. So I will subtract, I think so I will subtract that this is how many n minus 2 multiply by m minus 1. Okay, this all are the attacking possibility for 3 cross 2, and for 2 cross 3 I have n minus 1 okay, so basically I have to plus it, take the addition of this n multiply by m minus 2, and I think so this will be the answer. So let's see if this will be the answer or not. So answer will be n into n minus 1, 4 into n minus 1 m minus 2 plus n minus 2 m minus 1. So counting valid night pairs optimal. So they are total this, and after that total waves are total square into total square minus 1. Now I will check that how many attacking waves are there. So if there is n is greater than 2 and m is greater than 3, I will calculate this. For n is greater than 3, m is greater than 1. Generic check for safety strictly. M is greater than 2 basically, no, not 3. N minus 2. In Y I will check 3 cross 2 and 3 cross 1. Attacking ways are this, and I will subtract it. So hmm. Counting attacking pairs in 2 cross 3 and 3 cross 2. I know it. I know it. Hi brother, can I ask you something? पूछो भाई, पूछो पूछो पूछो. Okay, so I understand this. Okay, in the night, night move, in comma in okay, in total moves long, which is equal to n into n, and total move is equal to total move. I will not multiply, I will add it, no? Yeah, I will add it. Oh, so I have total. Okay,
What the hell? Not add it. I will multiply it with total ways I have. Total moves. This problem we're dealing with. Okay. This one. Non-attacking black and white knights. So I have total moves and minus one. Okay, after calculating this, what I will do that I will check that how how many 3 cross 2 and 2 cross 3 matrix I have where n is greater than equals to 3 and n is greater than equals to 2. Uh, and m1 m1 is equals to something and the m1 is equals to n minus 2 3 cross 2. So I will take n minus 2 multiplied by, oh yeah, uh, but n is 1, you have to take 1, and 3 and 2, I have to take 2, yeah. I've already taken this. So I have to take is equals to, so I have to check, okay, n is greater than 3, I will take n minus 2, n minus 1, fine. So I have already taken it. So n minus 2, m minus 1, so this is m1, and same for m2 also. That okay, if I have 2 and I will take 3 here, so I will take this will be 3. When if this is of 3 size, then only I will take in minus 2 to get 3 because of 0 base indexing. And I will take here the now for a single knight the total attacking moves they have is 4 into 4 into m1 plus m2. So this is all the pairs, and now in the answer is equals to I will subtract total moves minus attacking. I will write yeah, I will add attacking moves, both attacking moves multiplied with 4, and that's it. So this is one of the answer. रोम रोम तो सारा भाई रोम रोम. So what I will do is okay, non-attacking black knight are there. Ah,
int total is equals to n into m, and total, okay, total ways is equals to what I will do. Okay, so I have how many total ways I have? Total ways I have. I will multiply it with total ways minus 1. Okay, this is the total ways I have. Now int attacking, remove it. What I will do, I will check, okay, how many n and m I have. So if n is greater than 3 and m is greater than equals to 2, what I will do, I will create another variable int m1 which will tell me that okay, this much I have to take. Now what I will do, m1 is equals to n minus 2 multiply by m minus 1, and after that I will copy it, control C and control V, I will copy it down. What the hell? M is greater than equals to 2. No, n is greater than equals to 2 and m is greater than equals to 3. One thing I will do is, okay, I will calculate that what is n m2. Int n2, m2 is equals to what? N minus 1 multiply by m minus 2. So this is it. And after that I will calculate that how many attacking positions I have. Attacking is equals to 4 into m into n, m into n, and then what I will do, int answer is equals to the total ways I have, total ways I have, and I will subtract the attacking points I have, and I will return answer. Oh, this is really wrong. I got minus 4. Uh, Total ways will I take long total ways, I will multiply it with the total ways I have previously I have n into n, and I will subtract the total ways. I will check, okay, this is what the n minus 2, n minus 1, and now after that I will add that what all are the attacking points here. Long, but because of long I will get this. लगता है कौन डेवलपर बन गया मानो। अरे बिल्कुल भाई, बन के ही मानूंगा बिल्कुल। बन तो जाऊंगा ही एक दिन, ऐसी क्या बात है। So there's some problem. M is there, N is there, right? So I will take that how many possibilities to put my knights. So for putting my white knight, I have N into M possibilities. And as I want to put my black knight, there is one possibility less than the total possibilities that the white knight have. Okay, so white knight has total ways of possibilities. So I will subtract one from it, and I will multiply it with the total ways. So that is the total ways that I have to put all my black knights and white knight at some different positions.
After that, what I know is, okay, if I have 3 cross 2 matrix, okay, or 2 cross 3 matrix, then for each matrix, if I put a knight at some position, they have total 4 ways to attack the other knight. So if I put the white knight at, like here, I have seen, okay, so if I put my white knight here, I can attack here if the black knight is there. And if I put my white knight here, I have this possibility. If my white knight is there, then I can attack this position. If my white knight is there, I can attack this point. So basically, there are total 4 attacking positions where I will attack from this 4 positions. So basically, there are total 4 positions. I will calculate that how many 3 cross 2 matrix that I can form using my n cross m matrix. Okay, and after calculating it, what I will do is, okay, I will check. Okay, so this is how much I have 3 cross 2 matrix, and this is a 2 cross 3 matrix. So okay, so totally I will calculate that this is the total matrix that I have, and what I will do is I will add all the 2 cross 3 and 3 cross 2 matrix and multiply it with 4 to know that how many attacking positions I have. And now what I will do that this is the total ways, and I will subtract my attacking positions from this point, and I will return the answer. So what's wrong? Uh, what's wrong? So for 2 cross 2, I will get -4, but I want 12 to be an answer. Is there some edge case? No. Hmm. Well, this work on 2 into 2. Yes, you're correct. I got 12. If n is greater than or equal to first condition, total ways is 4. So I know that, okay, how many total ways I have? I have 4 total ways. And how many 3 cross 2 and 2 cross 3 matrix I have? So I have how many 3 cross 2 and 2 cross 3 matrix? No 3 cross 2, 2 cross 3 matrix. So it will return 12, but I got -4. By del by delta 1 में आना है मुझे. घर लेना है क्या तुझे? हेलो. हाँ. रेंट पे घर है. देखना पड़ेगा, बाहर निकल के मैं निकलता ही नहीं हूँ घर से बाहर. नहीं यार, वो मुझे तो पता नहीं है. आइडिया नहीं है. चल ठीक है, मैं पूछ के बता. ठीक है, ठीक है. हे बड़ी, हेलो. हेलो बड़ी. Kitty, Kitty, Kitty. Okay. So I don't know what's the problem. Why my code is not working? What the hell? What the hell? I got -4 as an answer. I don't know how I got -4 as an answer, because I've seen here is okay. I will check that. Okay, well, I will check that. Okay, how many? Wait.
So okay, so I will check that how many total ways I have. So I have 2n and 2m. So I will multiply it with, okay, I have 4 ways to put my white knight. After that, I will check that how many total ways to put my black knight. Okay, so uh, it will be one less than the total ways. So means I have 3 ways. So it means that how many total possibilities I have? There are total 12 possibilities. So I got the total ways is 12. Now I will check that, okay, int m1. I will check, okay, my n is greater than 3. No. Greater than equals to 3. No. So this loop will not run. So fine. After that, I will check, okay, is my m is greater than 3? No, it's not. So I got, okay, m and n is equals to 0. Oh, not m or n, it's m1 and m2. Again, I got the wrong answer. I got the wrong answer. Will I put it equals to 0? Yeah, I have to. Yeah, this will work. ब्रो लगे रहो, एक दिन उम्मीद छोड़ ही दोगे. गुड जोक. भाई उम्मीद उम्मीद तो मैं रखता ही नहीं हूँ, छोड़ने की तो बात अलग है. उम्मीद रखता ही नहीं हूँ, छोड़ूंगा क्या? मजे के लिए कर रहा हूँ, जॉब के लिए थोड़ी कर रहा हूँ. हाँ. जोसेफस. जोसेफस. ठीक है. There are n people standing in a circle, numbered from 1 to n. Yes. Okay. Starting from person one, counting processed in a clockwise direction in each step, exactly k minus 1 people are skipped. Okay. Uh, Counting processed in a clockwise direction, k minus 1 people are skipped, and the kth person is eliminated from the circle. The counting then resumes from the next person and process continues until only one person remains. Okay, n is 5, k is to find. Let's see. So what I have to do is, okay, I have 5%, that one is there, and 2 is there, and then 3 is there, 4 is there, and 5 is there. Now, what happen is that I will start it from this one. So what happen is person are skipped. So this one is skipped, this one is skipped, and I jump to this point, and I will kill him. Okay. Now I will start the counting from this point. So I will skip this fellow, and I will jump up to this point. So I will kill him. Now again I will start the counting from this point. So I will skip this fellow, and will I kill myself? Not, not. So firstly, the person at position 2 is killed. This, okay, I have to skip k minus 1 fellows. Fine. Hmm. Okay.
One, two, three, four, five is here. So what I've seen here is okay, I can start it from this point. I will skip this fellow and I will kill him. After that, I will start it from this point. I will skip this fellow and I will kill him. I will start it from this point. I will skip this fellow and kill them. Again, I will start it from this point. I will skip this fellow and kill myself. And this 4 is left. Actually, the 3 is left. Maybe I will not understand the question properly, what he was asking. Uh, अबे यार कैमरे को क्या हो जा रहा है बार बार पागल ही है बिल्कुल Hmm. क्या हो जाता है बार बार ट्राई अगेन क्या आता है यार तमीज ये बिल्कुल ही एक नंबर की So maybe I understand this question wrong. Let's start it again. I can start it from here. One, two, I have three, and four is there, and five is there. And I will start it from. So first I have to understand that what is n here. Okay, n is supposed to first person equations. So I will start it from here. I will skip this fellow, and I will kill this. Now after that I can start it from this equation. I will kill. Now I will start it from this position, and I will kill him. After killing him, I will jump and start it from this position. Oh, okay. So where I have to start it? If it is from the circle, the counting resumes then from the next person, and the process continues until only the person remains. And then person at position 4 is killed. Okay. Finally, the person at position 5 is killed, so the person at position 3 survives. At 3, 6, 2, 7, 5, and 1 are killed. 100% clockwise. In each step, exactly k minus 1 people is killed, and kth person is eliminated, and the counting then resume from next person. After killing some person, I will start the counting from next person. Na? So if I start it from 1, 2, and this will be 3, and this will be 4, and this will be 5. So suppose if I start it from 1, right? So I will skip this fellow. Okay, because I want to skip two person. And so basically I will skip a k minus one person, and I will kill the kth person. So I will kill 3. Now counting will be start from 2. So I will start the counting from 2, 5.
So I will see that, okay, I will skip this person and I will kill him. And I will start the counting from this position. So I will skip this person and kill two. Now I will start the counting from this point. So I will skip this person and kill myself. Hmm? I will kill myself. And I got output to get 3, that 3 is surviving. I don't know how. Firstly, the person at position 2 is killed. So if I form an array, suppose if I form an array, and inside that there is 1, 2, 3, 4, 5. This is 0, 1, 2, 3, and this is 4. Yo, I guess I now able to solve 900 rated, but for sure 900. Oh, that's fine. You can try that division 4 contest again. If you are able to solve division 4, then you will practice uh 900 and 1000 rating problem more and leave all the 800 rating problems. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so I will start it from this position, 0 position, first position, second position. So at second position, the 3 is there. Okay, so what I've said here is that if you are able to solve that 900 and 1000 rating question, then you must try division 4 contest. If you are able to solve at least 2 to 3 questions, then you will leave all the 800 rating problems and jump up to 900 and 1000 rating questions. So I've seen here is okay 0. I have to kill the second position. So if I consider uh, 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 there are n people standing in a circle, number from 1 to n, starting from person 1. Counting proceed in a clockwise direction. In each steps, exactly k minus 1 people are skipped. And kth person is eliminated from the circle. Firstly, the person at position 2 is killed. So at position 2, 3 is present. So how 3 will survive? I don't know how 3 will survive. So the person at position 2 is killed, then the person at position 4 is killed, then the person at position 1 is killed. I want my ranked graph like oh my. So I will do contest after 21. Okay, buddy, okay. Fine. You can try virtual contest, not the actual contest. On virtual contest, there is no ranking. You just try it. The actual contest, the actual division for contest is not there, I think so. Currently, code forces. Hmm. Wait. Ah,
There is no division 4 contest. I think so. There are division 3 contest which will be on 14th of July, 8 p.m. So you can register there. Oh, I can search it for. Where is the searching option? Uh, my friends, or if I search it for someone, there is no item. Okay. Install it. There is no match. Where I will search it for? Like if I want to search it for friend, where I will search it. Oh yeah, here. 417417 Yeah, find your ID. Uh, uh Find. Yeah. Oh yeah. Now we become friends. We already attempted 35 questions. That's fine. I can also check the submissions. That's good. My graph is something like what we call this. Uh, this is something. This is yeah. If we see the x cube graph, it will be something like that. But yeah. So if will I start it from if I consider this to be a zeroth position, I know that okay, I will kill the person which is the second position and three will be killed. So I have to return the position. So three will be killed. Now I will start it from this point. Search this. I already searched it. I already followed you also. You will see that in my friend list you are there. Hmm. So I've seen here, okay, now to this one is killed, and now I will start it from next position. So will I start it from this next position or this next position? Suppose if I started from this next position, so I will see that okay, I will skip this one. I will kill this fellow. Now I will again start it from this position. I will see that okay, I will stand it here, stand there, and I what I will do, I will skip this fellow and kill this one. And now I will again start it from this position. And if I okay, I will search it for uh, 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 Arnav 6572. Oh, he is from IIT Dhanbad. So that's really great. And he is already specialist. Now his rating is going down. Oh my God. He already attempted 338 problems. That's really good. You don't have Codeforces analytics extension. No. So I will follow him also. You don't have C. What is this extension? CF and metrics extension.
This one, right? I will add it. Without competitive programming, product-based companies crack possible नहीं है क्या? Nope, never. नहीं है भाई, impossible है, impossible. Oh wow, that's really amazing. I don't know about this. Thank you so much. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तैयार करनी पड़ेगी, उसके बिना प्रोडक्ट बेस तो उड़ जाएगा सीधे. Yep, now open the profile with extension. Yeah, I've already seen this. Yeah, problem rating, that which problem he solved the most. So he will solve problem till 1900. That's really amazing. Amazing. Unsolved problems. So let's understand. Okay, so wait. One and this one. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Now if I left with this fellow, okay, what I actually do is I will start it from 1 and I will kill 3. After that I will start it from 4 and I will kill 1. After that I will start it from 2 and I will left with 4 and 5, so that I will kill 5. And after that I will start it from 2 again. I will skip 4 and kill myself. No. So will I wait? Let's see if I will 1, 2, 3, 4. Oh my God, what the hell is this? 5. I will see 5 here. Now I will start it from 1 and I will kill 3. And after killing 3, I will start it from 2. Now I will kill 5. Now I will start it from 4. I will kill 1 and I will skip. I will kill him. Now I will start it from 1. So I will skip him and kill myself. Now this is 0th position, 1st position, 2nd position, 3rd position, 4th position. So I will left with this 3rd position element. Uh, the person at position 3 is surviving. Oh, let's check it for what? 7 and 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I have to skip 3. So I will start from 1, skip 2, 3 and kill 4. Start from 2, skip 3, 5 and kill 6. Start from 3, skip 4, 5 and kill myself. Start from 5, something gone wrong. Started from 1, skip and kill. Started from 2, skip 3, 5 and kill 6. Started from 3, skip 5, 7 and kill 1. Started from 5,
skip 7 and 2 and kill 3. Starting from 7, skip this one and skip this one, kill myself. 0, 1, 2, 3, 4. Position 4 element is left out. So yeah, oh yeah. Hmm. So I have observed that, okay, what I actually do is that I will start from 0th index. And after that, I will take the jump of k, and whatever the element that is present there, I will kill it. So I can mark it as -1. And I will repeat this process till I not get, after killing one, I will start it from next index. So we can store it. Yeah, I know that I can store it, and I know that I have to do that wherever I will stand. What I will do, I will take the jump of k minus 1 and goes to that particular index, and I will put -1 at that position. And as I want to take the round loop, what I will do, what I will do is, hmm, hmm, what I will do is put them equals to -1. Okay. So one thing I observe is, okay, so in a Josephus problem, Josephus. So if there is a vector array in TRR, initially suppose there is n is C in, n is there. And now I will create the size of n plus 1 comma 0. Will I create, okay, for 5 element, I want the 5 size array. Okay, and what I will do is for int I is equals to 1 to I is less than equals to ni plus plus arr dot push back. I will push whatever the I have. Now one thing I know is that for I will start it from I is equals to 0, and I also take that how many jumps I have to take. Int k, c in k, and go still in. Okay, and now what I will do, from that position where I am currently standing, I will take the jump of k. So it means that the index will be starting from 0. So that's why I will take the jump of k minus 1. Okay, so I will take the k minus 1 jump. And after that, what I will do, I know that when I'm reaching on 5th index, I know that after adding k minus 1, it will be array out of bound index.
So for to protect it from out of bound, what I will do that I will put that index inside whatever my size is. So n. So basically, whatever my current size is, I will take it. Okay, and I will take the modulus with it. So it will be inside boundary. And what I will do, I will mark this as -1. So now this will be performed, and after that I will check. Let's check if this will work or not. For int x, and I will iterate over an array, and if I found if x is not equals to -1, so what I will do, I will print out whatever the element. So x -1, this is the position, and then and break it. So this is what it is. So Josephus. एमी, ओए, सुन रही हो? चाची का फोन आ रहा है। चाची का फोन आ रहा है, चाची। हाँ, किसान, ओए किसान, चाची को फोन करके दे देगा थोड़ा, मम्मी को। फोन लगा दे चाची को और दे दे। बोल देना कि कुछ काम कर रहा है तो उस लिए नहीं उठा रहा। Hell, okay, I have to take the input now, but it will be in hold. मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता साल महक जा मर गया, तेरा मिला मिला, खुशी से तेरा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। अबे यार, इसमें क्या दिक्कत हो गई है? मर गया क्या? WSL, oh shit, चाची का। कौन चाची? हाँ, ये क्या बात पूछा है तू? Why this is not working? यार ये क्या बदतमीजी है? पागल ही हो गया क्या बिल्कुल? हाँ,
जैसे लाइव चल रहा है तो नंबर नहीं दे सकता, ये कहाँ लिखा है? ओ है कि है तेरे पास? फिर लिख, नंबर लिख। ए, एक सेकंड। या सो वेयर दिस फाइल इज एक्चुअली, हमको क्यों भेज रहा है? हम्म DSA और फिर recursion do it with CVP minus exe. Print unite to into Josephus. Ah, no return statement. Oh, I have to make this void, na? Void slash temp. So I will take the n to be what? N to be 5 and m to be 2. I got 0. I got 0. How I got 0 here? So what's my logic is okay that I push all the elements. After pushing all the elements, what I will do, I will start from 0 and jump up to k minus 1 modulus n position and mark that elements to be minus 1 till I not left with recursively removing n by 2. Now approach is we can store people in any array from 1 to n. Since out counting it 0 based is code, we use k minus 1 instead of k. Starting at 0, in each step we remove the person at position index k minus 1 modulus current size. So I actually do this.
So I have marked it as -1. So, so rather than removing that fellow, if I mark it as -1, this is also fine, no? Mhm. I want to know that what's wrong in this too. Rather than asking, let's try to debug it. So what I've seen here is okay, my n is 5 and my okay, so my n is 5, my n is 5 and my k is also 2. So I will create an array of 5 sides and I will push all the elements from 1 to 5 inside an array. Okay, so I understand why I got 0 here. I have to write this 5 and 2. I got nothing. I got nothing. That's really crazy. Okay, so I push back all my elements from 1 to 5. And now, what I will do, I will start from it from 0th position. And I will run it till I will not left with one element. So basically, yeah, till I will not left with one element. Why I open this, remove this. So I've seen here, okay. And now what I will do is I will get 5 and 2. I got 0. Why I got 0? I don't know why. There is something. So I push all the elements. And now what I will do, I will start from 0. And I will see that, okay, when I am 0, what I will do, I will kill whatever the value that is present at the second position. And after killing him, what I will do, I will start from next position, right? So I will start, the index person will die. So naive recursive is that till the person dot size is not equals to 1. I'm fine. Okay, what is the index? So I will skip key minus 1% and I will kill the clear the person. So I am standing at some point and I will take the jump of 2 and I will check if there is any person, I will kill him. Not k minus 1, I have to skip that k minus 1. I have to kill some, I will get nothing. Okay, so let's dry run it. What goes wrong? So I will see, okay, I will left with 1, 2, 3, 4, 5. 5 is there, fine. Now I'm seeing here is when I'm on 1, so I will add k into it. So
Basically, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4 index. So when I want 0th index, I will add 2 into it. So I got 2, and I will take modulus with how many elements I have. So I have 5 elements. So after it, I will get 2 and mark it as -1. After marking it as -1, what I will do is I will start with, okay, I will mark this as -1. No, this is wrong. This is wrong because if this is already -1, I will again take a jump of, so basically if I want to erase that element rather than marking it as -1, what I will do, I will erase that element. So means ARR dot begin or ARR dot erase that element. I will start it from ARR dot begin and plus I will add k into it. And how many elements I have to remove? I have to remove only one element. So maybe. Or will I have to give any extra command or not? No, I don't have to give that how many elements I have to delete. So I'll pass remove that element. So after that again I will calculate that what is my ARR dot size is, because every time my ARR size is changing. So before deleting it, as I know that I have to delete the element. Okay, and after adding that index, maybe it will cross some point. So to protect, I think so. I understand. Can you explain me the Josephus problem? Classic theoretical puzzle in a mathematics and computer survival game turned the problem that date back to the first century. Imagine n people standing in a circle, number clockwise from 1 to n. Starting from person 1, a sword is passed around and every kth person is eliminated from the circle. Okay, fine. Once the person is eliminated, the circle closes up and counting continues with the next remaining person. The game goes on until only one person remains. The goal is to choose the initial position of guarantee survival. Let's say we have n is equal to 5 people and we eliminate every case with the second person. So start with 1, count 2 steps, 2 is eliminated. We eliminated 2 steps, no, 2 कैसे हो गया? So taking 2 steps out, 2 is eliminated. Uh, let's look at how counting works. It's common tracking mistakes, count 2 steps or skip 3 people. When we say case specific, it means you count every second person, including the person you start as step 1. Let's break down that very elimination step by step. Start the counting at person 1. Step 1, you count person 1, and step 2, you move to next person, which is person 2. Because person 2 land on step 2, our key value, they are eliminated.
Let's follow the rest of the circle with the exact line. Now that person 2 is gone. The next available person is circle is person 3. We reset our count and start from there. Start at person 2, count one person, move to next person 4, people 4 land on step 2 eliminated. Start at person 5, count person 5, move to next possible person since 2 is died. Next person is person 1. Person 1 lands on person 2 and eliminated. Since person 2 are gone, count person 3, move to the next available person. To solve this problem or programmatically, to solve this programmatically mathematically for any number of people and any step scale, we use DP recursion. When the first person is eliminated, we are left with a smaller circle of n minus 1 people. We know the winning position for n minus 1 people. We can shift the position back into our original circle of n peoples to find the actual winner. Explain me the brute approach. मैं पहले ब्रूट तो समझ जाऊं. कोड फोर्सेस का स्टार्ट होने वाला है कॉन्टेस्ट. कौन से रेटिंग का? तो वो तो स्टार्ट हो जाएगा, मैं एंड हो जाऊंगा. कॉन्टेस्ट 2 घंटे बाद है. डिवीजन 2 का है. चलो दे दूंगा, कर देता हूँ रजिस्टर. कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं. कर दिया. So the one of the basic approaches that what I will do, I will standing in some position, and from that position, what I will do is I will count that how many jump I will take. So I will consider that position to be a one jump, and after that, what I have to do, I have to take k minus one jumps. Means I will take a k minus one jumps, and it there is a possibility that if I take the k minus one jump, I will jump up to some index. भाई कौन सा ईयर है तुम्हारा? आई एम इन फोर्थ ईयर बडी. फोर्थ ईयर. नाइट मेरा जीरो. zeroth year. That's fine. Okay. So uh, still that what I have to do actually is that I have to erase that element. Okay, and again start counting from the point. So basically, which index I will erase. So before erasing it, what I have to do here is that I have to check that what I actually have to erase. So I will take int index, which is what? So whatever my current index is, I will just add k minus 1 into it, and it means that I can jump up to k minus 1th index, and after that I will take the modulus with whatever the size of my array dot size, and that's it. And what I will do is from array dot begin, I will erase that index. Okay, so I will erase that index, and now I will perform this. I'll perform this till I'm not left with only one size. So I think so I have to write a while here.
And while person, not person, what? While ARR dot size is greater than 1. Okay, so if it is greater than 1, I will perform this operation and again and again. And after that, I will print out whatever the ARR 0. And then let's see if this will work or not. G plus plus B plus plus J day2 day2 dot cpp. But yeah, that's fine. I will left with 4, but I want 3. And for 7 and 3, again I got 4. For 5 and 2 also I got 4. For 7 and 3 also I get 4. Uh, I'll write true here because I don't know when I have to stop. And whenever my ARR dot size will become 1, I will break. Choo-choo-choo. 5 and 2. Wow. 7 and 3. I got 3. I got 1 value less. Why I will get 1 value less? Because when what I will do, I am standing on some point. Okay, I don't know what that particular point is. So suppose if I am standing on in each operation, what I actually do is, let's suppose if this is my array, I have 1, I have 2, I have 3, I have 4, I have 5. Now when I own 1, when when I am on 1, what I will do, I will take k minus 1 jump. It means that this is 2, so I will take k minus 1 jump. One it means 1 jump here and second jump here, and I will delete this. Okay, now I will left with 1, 3, 4, and 5. Now I will again start with this point 1, 3. So I will see 3 is there. Okay, so as I want to take the jump of 2, uh, I have to increase the index also, no? I have to increase the index also. That from next time onwards, I will start from another index.
I actually applied this logic on me. So I length of this array. I previously see this. What I actually write here is, okay, when this whatever size of this will be greater than 1, I will take whatever the index is, and I will take whatever the index is. The index is equals to whatever the index plus k minus 1 modulus length of people, right? And now after that I will erase that element. Means array dot begin, I will start it from some particular point plus index. I will pop that element. And after that I will return whatever the element that is left at 0th position. So what's wrong? I don't see anything wrong in this. Why I got different answer for 5 and 2. I got 2. For 5 and 2 I got 2 here. Pencil. So I will, okay, I get the value. What I want is, I want index. But no. Hello, bro, what are you doing? Actually, I am doing this Josephus problem. Hmm, Let me show you. Listen. So I'm understanding that what's wrong with my code actually. Have you tried it before? Uh, what the bug initialized index variable. Look at the line inside your while loop. You are declaring int index inside the loop and trying to use its own value to calculate the next. Initially, I want some value. So I have to go. Okay. So when index is present, initially the index will be some value. Index will be 0. Yeah. I think two. I got 2 here. Again. Again, I got 2 here. Is there any bug? No. So array dot size, I will get the value. Quick reminder on equals vector is take big of n time because it to shift all the remaining elements in the memory. So because of this, I know that the total time complexity is big of n square. Which topic? My Codeforces rating is 900, and this topic, and the topic of this question is recursion. So yeah, hey, बुला recursion topic. So basically, this is recursion and DP combined question. So I was thinking about this. Okay, I got the right answer. I will left with 2 only. Okay, and my code is correct. What I want to return? I want to return the position basically. So if I see their approach that okay, they will do the same thing that using recursion. I can also write it using recursion that in recursion what I will do is
Just I will take some input. Uh, let's see what actually the input is, and before it, what we actually do is that okay, what is my base case? So whatever the array that I will get. So basically, I want an array vector int array. Fine. Okay, so whenever my array size will become equals to 1, what I will do, I will return what? Array of 0, because I want to return that who is the last person that is left. So I will return that last person. Otherwise, what I will do, I will calculate whatever the index is int. So I have to tell this what is my current index is. So basically, I have to pass that this is my current index, comma int index, int index, and I will tell that okay, this is my current index here. And now what I will do, I will take a jump of some particular value. So I will take index here, and then I will do what k minus 1 into it. Okay, so basically I have to pass k also. Int k. Okay, and then after this, I will take array dot size, whatever the size is. So I know that this is the index. After that, I will erase that element. So how will I erase? Array dot begin. I will start it from begin and index. This is it. And after adding index into it, so basically this will delete it. And after deleting that, what I will do is I will again call the Josephus with whatever the array is and move to next index. So I think so I will put the index to be index plus 1, whatever the current plus 1, and then k. So I think so this will be decomposition of my collision. I think so. So I'll pass okay rather than pass the index only. I have deleted this element and now I will start it from so recursive call for n minus 1 person. So I'll pass k an index, this case when one person is left. And what I will do, I will pass index and again and again. Because when I delete some person, so, hmm, let's analyze it. So okay, what I will see that when I standing here, I will take the jump of 2, so this is one jump and this is basically second jump. So I will delete this fellow. Now I will left with uh, 1, 2, 3, 4. So after deleting, this will be 0, this will be 1, this will be 2, and this will be 3. So when my index is on this, I already deleted this. So now I will start it from 3. Means after removing this 2, I will start it from 3. And here now current 3 will be this. So this is what? This is the index position. That's why I will pass the index only. So how to optimize it? Optimize n square and auxiliary, we have to stop the simulate actual removing instead of creating an array and deleting array one by one. We use math to track how a winning index shift every time a person is eliminated. The technique use dp slash recursion. If we know the winning position of a smaller circle of n minus 1 people, or that their position originally was in larger circle of n.
Yes, every time someone is eliminated, the starting position of next count shift forward by k. से कर भाई, ये नहीं आया। हाँ। The user want, okay। सो ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे थे कि एक बंदे को मारते थे, एरे से डिलीट करते थे और बाकी सबको खिसकना पड़ता था। सही बात है, सही बात है। ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम उल्टी सोच लगाते हैं। अगर मुझे पता हो कि n माइनस लोगों में कौन जीतेगा, तो क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि वही बंदा n लोगों में किस पोजीशन पर बैठा था? हम्म, एक सेकेंड। क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। सो सपोज करो मैं उड़ा रहा हूँ, सारे एलिमेंट एक एक करके उड़ा रहा हूँ। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये n माइनस वन में से कौन जीतेगा, अगर मुझे ये पता हो कि n माइनस वन में से कौन जीतेगा, तो अगर, एक सेकंड, तो उल्टी सोच, अगर मुझे पता हो कि n माइनस वन लोगों में कौन जीतेगा, तो क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि वही बंदा n लोगों में किस पोजीशन पर बैठा था? बिल्कुल लगा सकते हैं। जब n लोगों की सर्कल में से पहला बंदा जो कि kth पोजीशन पर है एलिमिनेट होता है, तो सर्कल छोटा हो जाता है, n माइनस वन लोग बचते हैं। इस छोटे सर्कल में काउंटिंग अगले बंदे से शुरू होती है। इसका मतलब हर एलिमिनेशन के बाद पोजीशंस आगे शिफ्ट हो जाती है। अगर हम छोटे सर्कल का विनर पता है, तो बड़े सर्कल में उसकी असली पोजीशन निकालने के लिए हमें बस प्लस के आगे बढ़ना होगा, और सर्कल होने की वजह से मॉड एन करना होगा। हाँ। मैथ को आसान बनाने के लिए हम लोगों की नंबरिंग 1 से n ना करके 0 से n माइनस वन करते हैं। अगर वन बेस इंडेक्सिंग यूज करेंगे और मॉड्यूल लगाएंगे, तो पोजीशन प्लस के मॉडल, अगर रिजल्ट 0 आया तो हमें उसे मैनुअली n लिखना पड़ेगा, क्योंकि वन बेस में 0 नहीं होता। 0 बेस इंडेक्स में मॉडुलस ऑटोमेटिकली 0 को हैंडल कर देता है, कोई एक्स्ट्रा इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूला बनता है जे एन कॉमा के। जोसेफ में एन कॉमा के इतने पोजीशंस के एलिमेंट उड़ा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बस ये, अगर मुझे पता करना है कि इसमें कौन जीतेगा, तो मैं n माइनस वन एलिमेंट्स जो हैं, उस n माइनस वन एलिमेंट में से कौन जीतेगा, वो एलिमेंट के अंदर के जोड़ दूं। और के क्यों जोड़ दूं? चलो देखते हैं लोगों को कैसे चल रहा है। तो जब सिर्फ एक बंदा बचा है, एक बंदा बचा है, तो आई की वैल्यू हो गई 1।
तो अगर सर्कल में सिर्फ एक ही बंदा है तो वही विनर है, जीरो इंडेक्सिंग के हिसाब से उसकी पोजीशन होगी जीरो। तो सर्वाइवर इक्वल्स टू जीरो। जब सर्कल में दो लोग थे तो आई इक्वल्स टू टू। हम पीछे पिछले विनर की पोजीशन जीरो को यूज करेंगे और दो लोगों के सर्कल में उसकी सही पोजीशन निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होगा सर्वाइवर प्लस के मॉडुलस आई। सर्वाइवर कितने हैं? जीरो पिछले वाले में, और अभी कितने के का जंप लिया? दो। एलिमेंट कितने? दो, जीरो। यानी दो लोगों के सर्कल में भी जीरो इंडेक्स वाला ही जीतेगा। तो दो लोगों के सर्कल में उल्टा सोचना पड़ेगा कि एक के सर्कल में कौन सी इंडेक्स वाला जीतेगा। और अब बात है कि दो के रिवर्स थिंकिंग। मैंने ये सोचा कि मुझे पता है कि अगर एक एलिमेंट है तो वो तो जीतेगा ही। ठीक है, एक एलिमेंट जो होगा वो जीतेगा, अकेला हुआ तो। नहीं तो मुझे क्या पता है कि मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूँ और के जंप लेता हूँ, और के जंप लेने का जो एलिमेंट आता है उसको उड़ा देता हूँ। मतलब दो एलिमेंट भी होंगे तो एक तो उड़ेगा उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ और उस पॉइंट पे खड़े होके अब ये पता कर लेता हूँ कि बाकी जितने एलिमेंट बचे हुए हैं क्या कोई उसमें से जीता, और अगर वो जीता तो उसकी पोजीशन क्या थी। ठीक है, क्योंकि इससे चालू किया है वन से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वन जीतेगा। तो मतलब ये बोल रहा है कि उल्टा अगर मैं सोचता हूँ, पहली बात, एक और डाउट मेरा कि मैं एन माइनस वन एलिमेंट को क्यों चेक कर रहा हूँ। ये बहुत ही असली कन्फ्यूजन तब होती है जब हम सोचते हैं कि हम तो एन लोगों का आंसर चाहिए, तो हम कोड में एन माइनस वन एन माइनस टू लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब है, बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसके छोटे रूप का सहारा लेना पड़ता है। इससे बिल्कुल आसान भाषा में 3 पॉइंट में समझते हैं। एक बंदा मरने के बाद सर्कल छोटा हो जाता है। मान लो शुरू में सर्कल 5 था और लोग हैं और के स्क्वायर से 2 है। जैसे ही पहली बार काउंटिंग शुरू होगी पर्सन 2 मर जाएगा। अब मुझे बताओ, जैसे ही पर्सन 2 मरा और सर्कल में कितने लोग बचे? 4 लोग बचे, जो कि एन माइनस वन है। अब गेम खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी चल रहा है, लेकिन अब खेल एन स्क्वायर टू 5 लोगों का नहीं रहा, अब खेल एन माइनस 4 लोगों का, एन स्क्वायर टू 4 लोगों का हो चुका है। जब पर्सन 2 मरा तो अगली काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? पर्सन 3 से। यानी जो छोटा सर्कल एन माइनस वन लोगों का बचा है, उसलिए पर्सन 3 अब नया नंबर 1 बन चुका है। पुराने सर्कल का 3 नया सर्कल का 0 बन गया। पुराने सर्कल का 4 नया सर्कल का 1 बन गया। पुराने सर्कल का 5 नए सर्कल का 2 बन गया। पुराने सर्कल का 1 नए सर्कल का 3 बन गया। उल्टी गिनती क्यों चलती है? मैथ। अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि इस छोटे सर्कल एन इक्वल टू 4 में कौन सा इंडेक्स जीतने वाला है, तो मैं बस उस इंडेक्स में प्लस के, यानी प्लस दो जोड़कर वापस अपनी पुरानी असली सर्कल एन इक्वल टू 5 तक का इंडेक्स निकाल सकता हूँ। हम कोड एन माइनस वन इसलिए चेक करते हैं क्योंकि एन लोगों का विनर निकालने के लिए एन माइनस वन लोगों का विनर पता होना चाहिए। एन माइनस वन लोगों का विनर निकालने के लिए एन माइनस टू लोगों का विनर पता होना चाहिए। और ये गिनती घटते घटते हम एक बंदे तक ले जाते हैं जहां हमें पक्का पता है कि भाई एक ही बंदा बचा है तो वही विनर होगा, यही इंडेक्स 0 है।
ठीक है, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि मेरे को n में से विनर निकालना है, तो n-1 का विनर पता चल जाए, n-1 का विनर निकालना है तो n-2 का पता चल जाए, और ऐसे करते करते जब मैं 1 पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, 1, तो एक ही एलिमेंट बचेगा तो वही विनर है। तो उसमें प्लस के वगैरह कुछ तो कर रहे हैं, वो प्लस के क्यों कर रहे हैं ये सोचना है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे से बोला गया है कि भाई पहले ये देखो कि बेस केस में जब सिर्फ एक बंदा बचा है, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1, एक ही बंदा बचा है, तो अगर सिर्फ सर्कल में सिर्फ एक ही बंदा है तो वही विनर है, जीरो इंडेक्स के हिसाब से उसकी पोजीशन होगी 0, और सर्वाइवर भी है 0। चलो ठीक है, जब सर्कल में दो लोग हैं तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि विनर कौन होगा दो लोगों में से। एन लोगों का दिया था सर्कल में, जब मेरे पास एरे थी कर क्या रहा था कि एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये दो लोगों में से कौन जीतेगा, तो अभी जीरो इंडेक्स पे खड़ा हूँ, जीरो इंडेक्स पे खड़े होने का और उसमें प्लस के-1 ऐड करता था, या के ऐड करता था, ठीक है, के ऐड करता था। तो बेसिकली के ऐड करने के बाद ये देखता था कि एरे की साइज कितनी है, दो की साइज है, तो अगर दो की साइज है तो दो से मॉडुलस कर दूंगा। तो पहले तो ये देखूंगा सर्वाइवर कितने हैं। हम पिछले वाले पोजीशन 0 को यूज करेंगे और दो लोगों के सर्कल में उसकी, ये सर्वाइवर क्या है, ये सर्वाइवर क्या है, और इन दोनों में ये 0 क्यों है। अलग अलग बिल्कुल सिंपल सिंपल। सर्वाइवर वेरिएबल क्या है, सर्वाइवर हमारे कोड में वो इंसान नहीं है बल्कि एक पॉइंटर है। ये वेरिएबल सिर्फ ये याद रखता है कि अभी तक के हिसाब से जीतने वाले बंदे का इंडेक्स क्या चल रहा है। तो जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाता है, i=1 से लेकर i=1 2 3 4 5, ये सर्वाइवल वेरिएबल अपडेट होता रहता है और बताता है कि नए सर्कल में अब विनर किस इंडेक्स पर खिसक गया है। i=1 में सर्वाइवर 0 क्यों है, मान लो कमरे में सिर्फ एक ही बंदा है, अब गेम शुरू हुआ क्योंकि कोई है ही नहीं, तो वही अकेला बंदा गेम जीत जाएगा। तो अब अगर हम 0 इंडेक्स यूज कर रहे हैं, यानी काउंटिंग 0 से शुरू कर रहे हैं, तो पहले बंदे का इंडेक्स क्या होगा, 0। ठीक है, यानी काउंटिंग 0 से शुरू कर रहे हैं, पहला बंदे का इंडेक्स क्या होगा, 0। इसलिए जब सर्कल में सिर्फ एक बंदा है, s=1 होता है, तो विनर के इंडेक्स पक्का 0 ही होगा। इसमें कोई मैथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये यूनिवर्सल सच है, इसलिए सर्वाइवर 0 से शुरुआत होती है। अब दो में आंसर 0 क्यों आया। आपने सोचा होगा कि अगर बंदा मर रहा है तो हर बार आंसर 0 कैसे आ सकता है। चलो इसके हाथ, मान लो हमारे पास दो लोग हैं s=2, और हमें हर सेकंड बंदे को मारना है कि s=2। हमने उन्हें 0 इंडेक्स सीट पर बैठा दिया, सीट 0 पर बैठा है ए, सीट 1 पर बैठा है बी, गेम शुरू करते हैं। हम सीट 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, काउंट किया सीट 0 को, स्टेप 2 मूव किया अगली सीट पर जो कि सीट 1 है बी, क्योंकि स्टेप 2 आ गया तो सीट 1 मर गया, अब सिर्फ सीट 0 बचा। अब सीधे की मैच देखो, सर्वाइवर पिछला सर्वाइवर प्लस के मॉड आई, तो देखा मैथ्स ने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया, जब दो लोग होते हैं और हर दूसरा बंदा मरता है तो सीट 1 वाला मर जाता है और सीट 0 वाला ही जीता है, इसीलिए स्टेप 2 में भी आंसर 0 ही आएगा। विच कॉलेज आर यू फ्रॉम, नो आई एम इन फोर्थ ईयर एंड आई एम फ्रॉम केसीसी इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इन ग्रेटर नोएडा। So now I understand why I got this, that okay, I know that, hmm,
where is that triangle? आफ्टर दैट जब सर्कल 3 में होगा तो 0 ही सर्वाइवर है, एंड आफ्टर दैट आई विल नो दैट हु इज द करंट सर्वाइवर. सो दिस इज द करंट सर्वाइवर, दिस इंडेक्स. सो जब सर्कल 4 में होगा तो सर्वाइवर यहाँ पे चेंज हो चुका है, एंड फाइनल आंसर आई विल गेट द फाइनल आंसर. Oh, what the hell? Ah, ah. Hmm. I will get the survivor and convert zero indexing result to one base for the user. Okay, now I understand that. Okay, I have given that. Okay, I have to check that 1, 2, 3, 4, and 5 is there. Now, one thing I observed is I know that. Okay, this is my array, or this is my circle, whatever we tell it. This is my circle. Now, when I on one, when I standing on one, and if I know that what who is the winner from the remaining elements, so if I know the index of winner of the remaining element, will I know that who will be the winner? Okay, so if I delete this value, okay, so I know that if I am standing on this, and after deleting this, means if after removing this, I am left with four elements. So if I know the winner of that four element, that is the only winner, right? Okay, and what we actually thinking is, okay, so I will delete one element. After that, I will start it from this position. I will delete another element, and after that, I will deleting another element. So it means that what I actually observe is that at some point I will left with only one element. So what does it mean? It means that when I only left with one element, that element is the winner. So I will return that, okay, whatever the if I will left with one element, I will return the whatever the element that is present at index 0. So return whatever the element that is present at index 0. So I will return 0. Okay. So I have to return the index, right? Now after that, what I also uh, think about it is okay. So when I have left with two elements, so what I know is, okay, previously I know that this some element is there, uh, which is present at 0 will be the survivor. Now if I add one more element, now what I will do, I will check that who will survive. So to know that who will survive, what I actually do is that I will take, okay, this will be the previous survivor, and now I will take the jump of k. So here k is 2, and now if this will go out of bound. To protect it from out of bound, what I will do, I will take the modulus with I. So okay, so now I will know that, okay, so 0 plus 2, which is 2, and I will take modulus with 2, I will get 0. So it means that if I have only two elements, 1 and 2, I know that the element that is present at 0 and index will be the survivor. So for this will the survivor will be 0. So now I will check, okay, so if I have three elements, I will check that who is the survivor. So I will see, okay, the element who is the previous survivor. So previous survivor is Z. Okay, and now I have three elements. So what I will take, okay, I have to take the jump of 2. I will take the jump of 2. And now I will check that who is the survivor from three elements. Okay, so what I will do is I will take the modulus with I, that, okay, I will take modulus with y, and I will delete the element that is that is
present at that position. So I will see that okay, 3 is there. So I will see okay, the element that is present at 1th index will be the winner. Fine. So what I have observed here is that okay, when I want to find that who is the winner from n comma k, what I actually do is I'll find the winner from n minus 1 comma k, n minus 1 comma k. Okay, so this will be the answer, right? N minus 1 comma k, and as this is a recursive call, so rather than I will put whatever the okay. So what I know is okay, I will find who is the previous winner. So if I am on this I is equals to 2, what I know is okay, this will be the previous winner. After knowing that this will be the previous winner, what I actually do is so basically this will return me the index now. So this will be returning me the index. Hmm. Okay, this will return me the index. So n minus 1 comma k, that who is the previous winner, and I will add the k into it. And after that, what I will do, I will take the modulus with the element that we have. So I don't know what the use of this, but I understand that what we actually do. So there are two approaches that I was understand basically is that first what I will do is that okay, if I am not thinking of anything, what I will think that I know that inside an array there are elements. I have to remove that elements. So what I will do is I will start the index from 0 and I will remove the element that is present at k minus 1 modulus n its index. So till so the loop will remove the element till I will not left with only single element. So I will remove it, whatever it is. And after that, another approach that I was thinking is okay, if I want to know that who is the winner from nth element, if I know that who is the actual winner from n minus 1th element. So if I know that okay, this will be the winner. So if this will be the winner, what is the index of that previous winner according to that current indexes? So that is only the winner. So how will I know that? Okay. So I will think recursively, okay, when I will left with one element. Okay. So that is the only winner. So I will check that if I have only one element, who is the winner? The element that is present at 0th index. Okay, that is the winner. So, okay, after that, what I will do, okay, so what is the index of it? So, whatever the index, I will write it down. So, when I track back, what I will see is, okay, I know that who is the previous winner, and I know the index of that previous winner. Now, what I want is, I want to do, so when I is standing on some correct position, what I actually do is, I will add the k into it. Okay, I will take the k minus 1th jump modulus n and remove that element. So if I add that k element plus k, okay, into it, I will know that what is the correct position according to that first element position. So that's why I write plus k and take the modulus n. Yeah. So what I actually do is that I will take int n in Joseph first and int n comma int k, and if I see that okay, I will left with only one element, what I will do, I will return 0, so that the index of this will be. And now what I will do, I will return Josephus. Wait.
what I will do, I know that, okay, if I know that who is the previous winner, after knowing the previous winner, I will add k into it and take the modulus with n to know what is the correct position of that element. So will I pass that what? Okay, I have to pass k also. Who is the previous winner and what? Okay, let's understand it. Uh, why I will take. Okay, I don't understand why we add k in. आपके ये सवाल पूरा पढ़ोगे तो बड़ा टर्निंग पॉइंट है आप समझ प्लस इसके बिना किसी में को कहानी सीख इमेजिन करो एक कुर्सी का खेल है मान लो तुम्हारे पास 5 लोग हैं और केस पे से 2 है हमने जमीन पर 5 कुर्सियां डाल दी और उन पे नंबर्स लिख दिए 0 1 2 3 4 कुर्सी 1 2 3 4 गेम शुरू होता है कुर्सी 0 से क्योंकि केस पे 2 है तो हम काउंटिंग शुरू करते हैं स्टेप 1 में कुर्सी 0 स्टेप 2 में कुर्सी 1 वाला बंदा एलिमिनेट हो अब असली खेल शुरू होता है नया सर्कल कुर्सी 1 वाला बंदा मर चुका है अब अगला राउंड कहाँ से शुरू होगा कुर्सी 2 से अब बचे हुए 4 लोगों के लिए कुर्सी 2 उनका नया शुरुआत बन चुका है अगर उन 4 लोगों से पूछा जाए तो उनके लिए अब कुर्सी 2 उनकी पहली कुर्सी है चलो दोनों सर्कल की नंबरिंग को आमने सामने रख कर देखते हैं पुरानी कुर्सी का नंबर कुर्सी 2 पुरानी कुर्सी का नंबर n/5 तो कुर्सी 2 कुर्सी 3 कुर्सी 4 कुर्सी 0 और नई कुर्सी का नंबर n/4 तो नया इंडेक्स 0 क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है तब कुर्सी 2 जो है ये बन गई है नई कैसे बदला 2 - 2 0 3 - 2 1 4 - 2 0 - 2 मॉडुलस 5 3 तो अब आपने ध्यान दिया जब हम बड़े सर्कल से छोटे में गए तो सारे नंबर -2 पीछे खिसक गए हम प्लस की क्यों कर रहे हैं हम कोड में क्या पता होता है हमें छोटे सर्कल इंस्पेक्टर 4 का विनर पता होता है और हमें जाना होता है बड़े सर्कल में यानी हमें नए इंडेक्स से पुराने इंडेक्स पर वापस आना है अगर बड़े से छोटे में जाने के लिए हमने माइनस की किया था तो छोटे से बड़े में वापस आने के लिए प्लस के करनी पड़ेगा ना एग्जाम्पल से दें मान लो कि आपको पता चला कि इंस्पेक्टर 4 लोगों के सर्कल में जो बंदा जीता वो नए इंडेक्स 1 पर बैठा था अब आपको पता लगाना है कि वो असली लोगों के सर्कल में किस कुर्सी पर बैठा था आप नए इंडेक्स में प्लस के करोगे यानी +2 पुरानी कुर्सी नया इंडेक्स प्लस के 1 + 2 3 तो आप ऊपर टेबल में चेक करो नए इंडेक्स 1 असली कुर्सी 3 ही होती है बाप रे भाई आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है क्या तो भाई बता दे यार नहीं मेरे को स्ट्रक्चरिंग द डेटा आता है हाउ टू स्ट्रक्चर द डेटा ये जेमिनी अच्छा नहीं है जीपीटी इज बेस्ट जीपीटी से पढ़ लो मुझे जिससे समझ में आता है मैं तो उससे पढ़ता हूँ जीपीटी ओपन ट्रेंड मॉडल है कचराबाजी ज्यादा है इसके पास ऑथेंटिक डेटा ज्यादा है भाई एक क्वेश्चन पूछूं पूछो पूछो भाई पूछो अब लूंगा ब्रेक और स्ट्रीम बंद नहीं करूंगा बस
मेन्यू ड्रिवन मतलब क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे यार। मुझे नहीं पता। मुझे बता देगा क्या होता है, क्या होता है। एक ऐसा तरीका इंटरफेस है जहां यूजर से खुद कोई कमांड टाइप नहीं करनी पड़ती। इसके बजाय यूजर के सामने ऑप्शंस की एक लिस्ट रख दी जाती है और यूजर्स को बस अपनी पसंद का नंबर, अक्षर या बटन चुनना होता है। इसलिए बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर आपको एक मेन्यू कार्ड देता है। आप पूरा खाना खुद से नहीं बनाते, बस उस मेन्यू से अपनी पसंद का नंबर या डिश चुनकर ऑर्डर दे देते हो। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में भी यही बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो जब आप कोडिंग सीख रहे होते हो तो अक्सर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने को कहा जाता है। इसका मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो चलते ही यूजर को स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस दिखाता है और पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो। यह आमतौर तक वाइल या डू वाइल लूप या स्विच केसेस का इस्तेमाल करने करके बनाया जाता है। ये ले भाई। ठीक है। हाँ, आ गया समझ में। नहीं आया क्या? आ ही गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। मेन्यू ड्रिवन मतलब कि भाई खुद से कुछ नहीं करना है, ये दिया इसी में से कर लो। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, कहाँ यूज होता है एटीएम मशीन में। जब आप एटीएम में कार्ड डालते हो तो आपके सामने स्क्रीन पर टाइप करने के लिए कुछ नहीं होता, ये तीन चार ऑप्शन दे देता है। तो एक कस्टमर केयर में ये नंबर दबाओ, वो नंबर दबाओ, या पुराने मोबाइल गेम्स, इसमें सेटिंग क्या है, गेम में सेटिंग होती थी, इसमें ऊपर नीचे स्क्रॉल वगैरह वगैरह। भाई आपका प्यारा नेम क्या है भाई? नाम? नाम अनुराग है, और क्या? हेलो बडी, हेलो। हेलो एंड्रयू। हाउ वाज योर डे बडी? हम्म। सो इट्स अ ब्रेक टाइम भाई, बहुत देर से कर रहा हूँ। थक गया, करते करते थक गया काम, थक गया। और क्या ही पढ़ना है, यही करते क्वेश्चन लिखा। हम्म। जो लोग कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बार बार मेन्यू मेनू देखना और नंबर चुन चुनना धीमा और बोरिंग लगता है। अनुराग भाई उन इतने पानी मत पिला भाई। अरे यार, क्या करूँ, प्यास से मर जाऊं, क्या करूँ? एक घंटा। बस ये तो हो गया यार, आगे बढ़ते हैं। क्या वाटर जग? गिवन a m liter jug and n liter jug.
Both initially empty without any marking to measure intermediate quantities. You need to measure d liter of water where d is less than n. The operation you have to perform. अरे गेम नहीं खेलता भाई मैं। मतलब मोबाइल वाले गेम नहीं खेलता। और पीसी गेम्स भी अभी नहीं खेलता हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं खेलता हूँ। ब्रेक का मतलब जाऊंगा बाहर टहल के आ जाऊंगा। हो गया ब्रेक का तो। और नहीं तो ब्रेक का मतलब कि इस चीज से ब्रेक ले कुछ और कर लूंगा। तो अभी मन ब्रेक ले लिया है लेकिन मन नहीं कर रहा ब्रेक का, हटाओ। नो ब्रेक। एम्प्टी अ जग इन द जग। अबे ये क्या क्वेश्चन है ये सब। Without any marking to measure intermediate continue to measure the liter of water फैक्ट क्वेश्चन हो गया। और अब चालू करता हूँ मैं एवे। रिकर्जन तो मैं जान ही गया थोड़ा बहुत। अरे ये सब नहीं पीता हूँ भाई मैं। पानी काफी है, पानी पीता हूँ बस पानी। दैट्स इट। और नींद तो आ ही नहीं रही है तो उड़े ही कहाँ से। एवे। शायर से नफ्स झुकी से बी प्लस प्लस डिवाइडेड सी माइनस प्लस ओ डिवाइडेड डॉट एक्सी। हाँ, आता हूँ गाइस थोड़ी देर में आता हूँ टहल के। Till then, take care. एंड भाई ब्रेक है। कोई पढ़ रहा हो साथ में तो ब्रेक ले सकते हैं। I have to stop. I have to pause it. लगता है जैसे कि होता है तो तुम्हारे नींद की जो ले जाएगा इससे क्या एआई। एआई क्या कर जाएगा। एआई तुम्हारा इंजीनियर्स की जॉब ले जाएगा। इस बात पे भाई कुछ बोलना चाहोगे बताओ भाई यार। कुछ बहुत लोगों ने मुझे बोला है उससे। अबे इंजी एआई जॉब उनकी ले जाएगा जो खाली कोड लिखते हैं। उनकी नहीं ले जाएगा जो सोचते हैं। और एआई के पास कौन सा डेटा प्रेजेंट है जो अभी है। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो डेटा कहाँ से लाएगा। मान लो कि एक सपोज करो इंस्टाग्राम बनाना है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को इंस्टाग्राम बनाना है तो मैं चले जाता हूँ एआई के पास और बोलता हूँ इंस्टाग्राम बना दे। तो भाई एआई को जो दोगे उस बेसिस पे वो ट्रेन हो जाता है। तो भाई इंस्टाग्राम यूनिक कैसे रहेगा फिर अगर वो एआई से ही बनवा दिया तो।
फिर तो कोई दूसरा आदमी भी इंस्टाग्राम बना लेगा। ठीक है, तो ये हवाबाजी है, उड़ने वाली हवाबाजी। एक फ्रंट एंड डिजाइन जिसकी हम बात करते हैं, एआई को फ्रंट एंड बनाने के लिए बोलो तो वो एक फ्रंट एंड बना देता है। बट एक्चुअली में क्या कोई कंपनी में ऐसे फ्रंट एंड बनता है? वहां पे कलर कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि ये कलर कॉम्बिनेशन लगेगा, और उसके बाद ये बटन का साइज ये होगा, ये बटन का साइज ये होगा, ये इसके माइनर इफेक्ट्स होंगे। ये सब एआई नहीं करता, ये सब के लिए इंजीनियर बैठे। वरना फ्रंट एंड इंजीनियर के भी जॉब चली जाती। जॉब सब हवाबाजी है। एआई इसकी जॉब खा गया, बेसिकली उसने वो लोगों को गायब कर दिया जो खाली कोड लिख रहे थे, जो फर्जी में घुसे थे इस इंडस्ट्री में कि पैसा मिल रहा है, बस इतना कर लेता हूँ, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो इस वजह से चलो मैं घूम घाम के आता हूँ। होप यू गेट योर
आज कल नहीं आया था। वही वही था। अरे भगवान। अरे आराम ही है। घर आ गया। लाइव अबे एक बंदा मैसेज कर वो कर रहा है मैसेज किए हैं। स्ट्रीम चल रही है कहाँ चलेगा भाई 2 बजे से स्ट्रीम कर रहा था तो अभी ब्रेक लिया था तो अब मैं आ गया हूँ वापस रुको कैमरा लगाने दो। हाँ भगवान। हम्म। है। हाँ पूरा डीएसए ही चल रहा है। वापस कर रहा हूँ पूरा। जल्दी जल्दी करके फिर जाऊंगा प्रैक्टिस पे। लेक्चर वेक्चर ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है बाय। Try again. Which year? I am in fourth year. Fourth year, buddy. I am back. भाई ब्रेक हो गया खत्म। काम धंधा चालू। हम्म, रुको भाई पानी लेके आ रहे हो पानी वेट वेट वेट। Oh, that's nice. So what you are doing currently? Like, are you learning something or are you in job or internship? Mhm. Let's try this medium. Okay, predict the output of the like. Oh, why I always have to predict the output? No, I don't want to predict the output. I have to do some questions that will improve my problem solving skills. Still learning, bro. Oh, that's good. That's good. What the hell is this? Predict output of following. So I will see uh, there is four. So A is four and B is. So I started DSA just not. Yeah, I will start it 1 or 2 months before, and at that time I was only focusing on lectures, on completing the lectures. But after completing it for 2 months, why what I was understanding is that lecture will not help me anymore because I don't think at how actually this problem will solve. I only know that okay, this is how this problem will solve, and if there is new problem will come, I will just stuck on this that question. So that's why I leave all the lectures and I will start the DSA again. Before that, I was working on development or creating some SaaS products, and that's it. And I know that the development job is also not secure that much. And as I am from Tier 3 college, it is little bit difficult to make connections. So that's why I was thinking that. And when I come into a college, my dream is to become a HFT engineer. So that's why what I was thinking, okay, leave whatever happen and
I will just start DSA again and focusing on where you surprised it was salty and कहाँ से हुआ और मैं घर से हूँ घर से where you surprised it was salty and warm showing that dumpster or just waste everyone time. Okay. Okay. What is you are from IIT Roorkee. Okay, so what I will do? Ah, take it. That's good. That's really nice of you. That's good for you that you are in second year or you are from IIT Roorkee. Oh, my college is KCC Institute. It's a tier 3 college in Greater Noida. Mm. Some of my friend is also there in IIT Roorkee. They are actually graduated and work in some MNCs. Mhm. Mm, oh, I already completed this. This is I already know this. Bro, Greater Noida. Ah, so no placement for you. So sad. You will end up working 10x harder than us to land 6. But why I find that job? I don't need it. Why every Indian youth will only think about the job only? That we are preparing for placement and we just grow up another country. I know that you will prepare for job and you get some package and after that you will evolve some other country rather than this country. And I also know that you are not capable of to create something that is good for this country. I am not working for job. If I want, I can get a job next day. I know it. So because my development is good, but I don't want to do this. So that's why. Stop copying, bro. You are cooked in tier 3. There is nothing left for you. ठीक है भाई. Yeah, yeah. Brother, today C++ is C with object-oriented programming. तुम भाई आईआईटी रुड़की से हो तो यहाँ क्या कर पढ़ाई करो घर वालों का नाम रोशन करो वरना पता चले जॉब वॉब नहीं लगी तो फिर वही रिश्तेदार गाली देंगे सुनते रहोगे मेहनत लगी है वहां पहुंचने में काम धंधा करो जाके कमेंट बाजी मत करो कुछ नहीं होता इससे डीएसए ही करते रह जाएगा प्लेसमेंट कोई और ले लेगा टायर अरे डीएसए करता क्या रह जाएगा मुझे चाहिए ही नहीं जॉब क्या बोल रहा है भाई हाँ ये दिखा दिया
छोड़ो भाई, छोड़ो, इतना रिप्लाई देने को फायदा ही नहीं। Definition of item of some variable type that is stored in a continuous memory location. It is one of the most popular and simple data structure used in array. हाँ, भाई तू यही करता रहेगा तो तुझे तो नहीं मिलेगी, इतनी तो गारंटी है। खैर क्या फर्क पड़ता है। Hmm. It is one of the most popular and, पर भाई तू ये सोच कि मुझे भले ना मिले लेकिन तू मेरी वीडियो देखने आया है। भाई ये तू कहाँ से सीख रहा है एरे? जीएफजी डॉक्यूमेंटेशन। सोचने वाली बात है कि तुझे ये बढ़िया नहीं लग रहा कि मैं टायर 3 का हूँ और ये पढ़ रहा हूँ, लेकिन तब भी तू मेरे स्ट्रीम पे बैठा हुआ है। तो इसी से तुझे समझ जाना चाहिए कि तेरा लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है। लेकिन यही देखता रह जाएगा। यही देखता रह जाएगा। Uh, this is a collection of items. The array is a collection of items of same variable type that are stored at the contiguous memory location, and it is one of the most popular and simple data structure used in a program. I know it, I know it. And then also notice this traversal, beginning, insertion, the given position from deletion from beginning. अरे अरे यार। अबे यार ये क्या हो गया? नेट इश्यूज इसके। सो वर्क तो कर रहा हूँ हाँ। हम्म। So I know that also at beginning at given position and at the end, the position first occurrence or occurrence. I know how to insert it from beginning. I also know that how to insert it from end. So if I want to insert it from beginning, I have to shift all the elements one position and then uh,
And if I want to insert it from beginning, I have to shift all the elements to one position right, and then I will insert whatever the element. So is there any int answer? Or suppose if I create an array. Hmm. Let's insert 1, 2, 3, 4, 5. We want to insert. Hmm. So if I want to insert, I have to shift all the element one. So, what I have to do is arr dot resize. I will resize it and make the size of arr dot size plus one, whatever the current size is. And after that, what I will do is just suppose if I want to insert any element, int n is equals to c in. No, but don't listen to this demotive. So this you will हाँ थैंक यू बड़ी अरे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये देख मंगे आते हैं जाते हैं इसे वाले इनको मैं सीरियस लेने लगा तो भाई दिक्कत ही है मेरे लिए n minus 1 okay so what I have to do I have to shift all the elements fine so I can start it okay so what I want mm-hmm. So if there are suppose one elements two, 1, 2, 3, and 4. And now what I want is the element that is present at n minus 1 because sorry n minus 2, n minus 2, n minus 3, n minus 4. So what I want is as I resize this array and as I want to insert it in front, so I have to shift that n minus 2 at n minus 1. Okay, so I will start it from n minus 2. Okay, whatever element that is present at n minus 2. Or I have to take elements or uh, guys, can you tell CPP when dying we speak truth, right? अबे सुन भिगमंगे ये देख ये मेरा गिटअप है ठीक है ये भिगमंगे इधर जाइयो और ये देख ले देख रहा है मेरे को मन नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूँ मर जाएगा करते करते ठीक है अब मत भूलिए हम्म, हाँ ये आ गया नो वर्ड इधर जाओ ना भाई डीएसए नहीं हो रहा थर्ड ईयर में अरे कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अभी भी चालू करोगे हो जाएगा चिल हम्म,
वही ठीक है। हाँ यार, तुम कहीं से भी चालू कर सकते हो। जीएफजी से पढ़ लो या जीपीटी जेमिनी, जहाँ से पढ़ना हो। अगर वहां से कुछ भी नहीं होता तो ब्रो, व्हाई ब्रो जावा केयर या सीपीपी क्या फर्क है? ऑल्सो जावा इज मोस्ट स्केलेबल। अरे गंवा रहे, से कुछ नहीं पता। थर्ड ईयर मतलब प्लेसमेंट टाइम खत्म, ये आ गया। ये आ गया। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर का मतलब भी प्लेसमेंट टाइम खत्म। हाँ, प्लीज टेल एनीवन। क्या क्या करना है? जावा सीपीपी पूछ रहे हो? अरे कुछ भी कर लो यार, देखो। सिंपल चीज है कि जावा या सीपीपी दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट ये है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि सीपीपी के ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस प्रेजेंट हैं। और बिकॉज ऑफ उसकी कम्युनिटी अच्छी है तो तुम्हें जल्दी कोई भी डाउट क्लियर हो सकता है, तो इसीलिए लोग सीपीपी प्रेफर करते हैं रादर देन जावा। वरना दोनों का अगर तुम कोई प्लेटफॉर्म उठा के देखोगे तो वहाँ पे रन टाइम देखा जाता है, रन टाइम दोनों का सेम ही है। कंपाइलेशन टाइम अलग अलग है। भाई तेरी को जल रही है, तेरे से नहीं पूछ रहे इसलिए। डोंट आस्क एडवाइस टू टायर थ्री थ्री बच्चा। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। सीईओ है ना? तो कौन से कॉलेज का है? मैंने देख के आ बेटे। ठीक है, और वो सुंदर पिचई गूगल का सीईओ है। जरा ब्रांच देख उसकी फिर। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करी है उसने, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। ठीक है, कहाँ से? आईआईटी खड़गपुर से। मेटलर्जी करके बाहर गया। बाहर उसने पढ़ाई करी तब जाके वो बन आईआईटी वाईआईटी से। ठीक है, और ये जो 4 करोड़ के पैकेज है ना, जरा एक बार उसका उठा के देखियो कि किन के लगते हैं। दो फील्ड है, डेटा साइंस और एचएफटी। तेरी औकात है उतनी? जो बन जाए देख मंगे। दूसरों के उसमें आके कमेंट कर रहा है। साथ बना भाई, क्या कर रहा है? आदमी भाई पैसे से गरीब नहीं होता, दिमाग से होता है, और वो तू दिखा रहा है कि तू वही है। हम्म, हम्म। मेरे को कॉलेज से कुछ लेना देना ही नहीं है। कॉलेज से क्या लेना देना है ये तो बता। कॉलेज से क्या लेना देना है? अगर तेरे कॉलेज में तेरी इतनी औकात है कि अगर तू आईआईटी में नहीं होता तो प्लेसमेंट क्रैक कर दे। वो तो आईआईटी का सपोर्ट है ना तेरे पास, कि तू प्लेसमेंट क्रैक कर पा रहा, वरना तो तेरी औकात ही नहीं है। और नहीं नहीं, रुक। ठीक है। ओ भगवान। मैं तेरे को असली आईआईटी जब मानूंगा जब तू ऑफ कैंपस क्रैक करके दिखा दे कोई कंपनी। कर लेगा? तू क्रैक आईआईटी नहीं कर पाया। भाई तू करता रहे, जो तू कर रहा है सही कर रहा। हाँ। अरे ये बेवकूफ कहीं का। भाई बड़ा हो जा भाई। सेकेंड ईयर में आ गया कॉलेज के, बड़ा नहीं हो पा रहा है लेकिन। कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ। तू सही करता है ना, तू यहाँ क्या कर रहा है फिर? मेरे कम उसमें क्या कर रहा? चैट में। बस मैं यही बोलूंगा कि जिस दिन ऐसा बना ले आ जाइए बात करनी। ठीक है। मर जाएगा बनाते बनाते। और सेल्स प्रोडक्ट वगैरह तो खैर छोड़, पता ही नहीं होगा। राइवलरी चल रही है भाई ऐसे। आते जाते रहते हैं तो इनको बताना पड़ता है कि इनकी औकात क्या है। हाँ? अरे ठीक है यार। नहीं, एक नंबर का छोड़ दूं तो सबसे लड़ रहे हैं किस सभी नहीं। राइवलरी कोई नहीं है, ये एक नंबर का उर्दू है।
अरे तो दिया भी कहा जाता ना। अरे किचन में जा, कौन सी से जाने का? घर में सब्जी नहीं खाने। तो फोन करेगा किशन पे। All other ways gaming up किशन पे फोन against करेगा I जल्दी। want to poop is crazy. Huh? किशन पे फोन करेगा जल्दी से, गया है लेके, पापा का फोन लेके है ना। हाँ, इन पे करेगा जल्दी से। चलो वो अब एंटरटेनर आया, मजे आ रहे हैं, क्या बक रहा है। हम्म फ्रूट कोड फोर्सेस 2100 प्लस। तो भाई आईसीपीसी में जाता नहीं है, क्या कर रहा है। आईसीपीसी में जाता, इसकी तैयारी कर, इतनी बढ़िया रेटिंग है तो इधर क्या कर रहा। क्या वो मुझे पता है तू घंटे का आईआईटी का नहीं है, बकवास कर रहा है कर। कोई आईआईटी वाईआईटी का नहीं है तू। तू एक स्पैमर है जो एक नंबर का गंवार और बेवकूफ है, सुन ले। जो दूसरों के जाए जाके लाइव में बकवास करता है खाली। ओ बोरिंग, हाँ बात। अब बोरिंग, बोरिंग है तो भाई क्रैक ही कर ले। भाई लिंक्डइन दिखाओ। अरे वो कुछ नहीं दिखाएगा, स्पैमर है, गंवार है वो। बेवकूफ बना रहा सबको। आईआईटी में मेरे भी दोस्त पढ़ते हैं, ये बेवकूफबाजी नहीं करते वो सब। हम्म, हम्म, हाँ, ये एनीमे वाला छपरी है अभी। छोड़ो भाई, काम करने दो। वो ही बहुत मौज मस्ती, छोड़ो। सो मेरे को क्या करना है, सो आई हैव गिवन एन एरे एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू शिफ्ट। Basically what I want to do is I want to insert the element as the 0th index, and for that what I have to do is that, okay, I will resize the array, because when I insert some element, okay, so if this is a fixed size array, so if it is given that, okay, I have 1 2 3 4 and I want to insert the fifth element at the starting position, so what happen is that I can directly insert it. So if I directly insert it, suppose if I want to insert the 5, what happen is, okay, I want to insert at first position, so I will insert 5 here, and now 5 1 will get removed. So I don't want to remove that 1. What I have to do is I have to insert that 5 in front of 1. So for that, what I will do, okay, I have fixed size array. Okay, so as if this is a fixed size array, so one thing I will do is, okay, first I will convert this fixed size array into a vector array, and then I will resize it, or I will create a, or what I will do is I will create n plus 1 size array, and inside that I will store all the elements. And after storing that element, like suppose I have given 1 2 3 4, so I will create one more size. So I will put that 1 2 1 2, and wait, 3 is there and 4 is there. And now what I will do, I will shift this. After shifting one position to right, and now I will left with 1 2 3 and 4. And after that I will insert this 5, whatever the 5 is, I will insert it here. So this is one of the approach. So what I actually do is I already created a vector array.
and I want to insert 6 inside it, or I can insert whatever element I want to insert. So what I will do, I will resize it. So resize it by 1. Okay, so I will write that, okay, array dot resize and whatever the current array size plus 1. And after that, I will insert whatever the element is. And to insert, what I actually have to do is, what I want that I will now, if I create new array and it carry all the elements. Okay, so for that I have to, what I have to do is I have to shift the elements. So in a new array, the element that is present at this index, now I will left with one position, which is n minus 1. Okay, so I am left with one position. So what I will do, whatever the element that is present at n minus 2, what I will do, I will put at n minus 1. So I will start from n minus 2, and what I will do, whatever the element that is present at that that index, I will store that element at I plus 1, an array of I. And I will start it from array dot size, array dot size, and greater than equals to 0. So I have to jump till greater than equals to 0. And after that, so this is one of the way. After that, what I do, that at array 0, I will insert whatever the element is. That's it. अरे मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ? मैंने कब बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ? टायर 3 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कलीग्स नहीं मिलते पढ़ने के लिए। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी। तो इस वजह से मैंने खोला है कि जो नहीं पढ़ पाता है, खुद तो वो यहाँ पे आके बैठ के पढ़ सकता है, उसको कोई डाउट वगैरह होगा तो डिस्कस कर सकता है, इसलिए खोला है। मैंने कब कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ? और मेरे को आदत है कि अगर मैं कोई भी चीज़ सीखता हूँ तो मेरे को जब तक ये बिलीव नहीं होता, जब तक मैं किसी को समझा ना दूँ। सो डेली मेरे फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन ये है कि आज छुट्टी है तो आज वो नहीं आए। तो ये है कि मैं उनको भी समझाता हूँ, और यहाँ यूट्यूब इसलिए भी खोल लिया कि और किसी की भी हेल्प हो सके, बस इसलिए बोला। मैंने तो कभी भी ये कहा ही नहीं कि मैं भाई पढ़ाने बैठा हूँ यहाँ पे किसी को। पढ़ाने बैठा होता तो रिकॉर्ड करके डालता ना वीडियो। यहाँ आता क्यों? पढ़ने वाले ना टायर 3 में क्यों ही मिलेंगे? वो ना कूल अमेरिकन जेनजी पास है वो। ठीक। अरे छोड़ भाई, इसको जाने दे। क्या लड़ना, कोई फायदा नहीं है लड़ वड़ के। लड़ोगे तो अपना दिमाग खराब होता है। ये तो पागल है। इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए अपना दिमाग कूल रखो। ऐसे लोग आते रहते हैं, आपको बहुत मिलेंगे लाइफ में। इनसे ऐसे टैकल करा जाता है। लिमिट। सो मेरे को क्या करना है, प्लस माइनस। वन डॉट cp। oh wait, what I have to do is that, okay, temp, and then dot slash, wait, dot slash temp. So I have to take some element, like I want to insert 6. Okay, I have to print it also now. For hmm, into cout x.
So I will insert 6. So this is how it's actually inserted in front. So yeah, okay. What are other operations? So at beginning, at given position. They uh, uh, दे रहा हूँ जब भाई तेरा मन भरे चलेगी वरना बोलते रहे कोई दिक्कत नहीं I want to insert. Okay, now what I want to do is I want to insert a certain position. Hmm. तू जानता मानता तो है नहीं मुझे भाई पता चले निकलवा लिया तेरा आईपी एड्रेस तो उसके बाद यहीं कहीं साला कचड़े में से मिलेगा तू इधर ही कहीं रहता हुआ इसको ब्लॉक कर आयन ना हेलो ब्लॉक कर इसको अरे यार लेट मी सी हाँ ये रहा भाई हो गया तेरा भाई लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है निकाल दूँ यहाँ से हो गया खेल खत्म क्या बहुत देर से भाई तुम लोगों का भी हट गया ये बक रहा था जो कि अभी आ रहा है बता देना गाइस हम्म अरे ये कुछ नहीं है ये आप जब चैनल खोलते हो स्पैमर आते हैं कोई आईआईटी वाईआईटी का भी नहीं है हम्म हम्म, आईआईटी वाला यहाँ आके बकवास क्यों करेगा पहली बात तो ब्लॉक डन थ्रू टायर दी हाँ जाने दो भाई जाने दो सो मेरे को क्या करना है कि किसी पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो ठीक है किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा तो अब ये अलग दूसरे अकाउंट से आएगा शायद फिर से ब्लॉक कर देंगे ठीक है भाई ठीक है आप लोगों को डिस्टर्ब होगा तो कर दूंगा अब इसमें सॉस डालना क्या है ये सॉस जमा हुआ है आह, और देख तेरे को एक बात बोलना चाहूंगा मैं। हम्म आप इतने कमजोर थोड़ी मत होइए कि अपना स्विच दूसरे के हाथ में दे दे कि जब वो चाहे तब मैं गुस्सा हूँ जब वो चाहे तब मैं रो तब मैं ठीक हूँ और बस ये कहना चाहूंगा समझ गई अरे नहीं तो ये थोड़ा सा हो गया था कि को लग रहा था मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ और नहीं नहीं हेलो बड़ी वेलकम टू द स्ट्रीम तो हाँ ज्वाइन करूंगा मैं ज्वाइन करूंगा थैंक यू बड़ी या दे आर हम्म 30 मिनट बाद तेल का ऑमलेट वही देख रहा 15 मिनट बचे ब्रो विच ईयर ऑफ कॉलेज यू आर इन सो आई एम इन फोर्थ ईयर बड़ी आई एम इन फोर्थ ईयर
So basically, from first year to third year, I was working on development, and I developed my skills on that side. But because of the problem, I was shifting towards that DSA. One problem is that I am more towards writing the code, not know how actually this all the things will be implemented. Mhm. So yeah, yeah. So to know that how actually internally the all softwares will work, like, or already I created two SaaS product because of that money problem, I was not able to just host that two products. I also created my own platform like Codeforces or LeetCode. Let me show you. Wait. Mm, so yeah, mostly I work on backend, and front end will be designed by whatever the agent, because I am not good at front end. Basically, I will only work on writing the backends. Let me show you. Hmm. Where is that project? Mm, hmm. Um, what I'm going to, oh, well, I deleted that product. No, I have that product now. What's my tracker? I think so. This will be that product. Oh, it will be linked there. Yeah. हाँ, ऐप वेब डेव ज्यादा करते थे क्या? हाँ हाँ हाँ, वही ज्यादा करता था। प्रॉब्लम हो गई उसी में। मतलब ये हुआ कि आई थिंक सर्वर डाउन है, नहीं चालू तो हो जाएगा। तो ऐसा मैंने कुछ बनाया था। तो इसमें ये था कि अभी मैं प्रॉब्लम सेट डाल रहा था, जो ऐसे प्रॉब्लम सेट डाल रहा था जो क्वेश्चंस उसमें प्रेजेंट ना हो। यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने रखा था कि ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, कि पहले यहाँ पे तो वो लोग ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी लीड कोड प्रोफाइल या कोड फोर्सेस की प्रोफाइल, जो भी उनकी प्रोफाइल है उसमें उनकी क्या रैंक है, नेक्स्ट रैंक पे जाने के लिए कितने पॉइंट्स वगैरह चाहिए, सब कुछ वो एकदम डिटेल एनालिसिस। दूसरी बात, इसमें ग्लोबल लीडर बोर्ड था, जिससे आप ये ट्रैक कर सकते हो कि आपकी रेटिंग क्या है, दूसरे की रेटिंग क्या है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ compete भी कर सकते हो। तीसरा, ये फास्ट कोडर रैंकिंग था। इसमें ये था कि कितनी तेज आप कोड लिखते हो, उसके बेसिस पे भी एक रैंकिंग बनती, कि ये क्या कहते हैं, इस जो भी प्लेटफॉर्म है इसका फास्टेस्ट कोडर है, या ये इतनी तेज टाइपिंग करता है, या जो भी चीज़ें हैं उसके बेसिस पे। उसके बाद इसमें ये था कि डेली एक्टिविटी के आप डेली कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और यहाँ पे ये जो हीट मैप होता है वो, और ये डिफिकल्टी लेवल, और साथ में ये भी दिखाता है कि कौन से टॉपिक के प्रॉब्लम आपने ज़्यादा सॉल्व किए, कौन से कम। एक क्विक इंटरव्यू था। और इसमें ये था कि ये रिसेंट एक्टिविटी की लास्ट क्वेश्चन आपने कब अटेम्प्ट किया था, किस टाइम पे अटेम्प्ट किया था, वगैरह वगैरह, और कौन से प्रॉब्लम्स पे आप ज़्यादा फोकस्ड हो। और ये कोड कोर्सेज प्रैक्टिस सेशन है, ऐसा कुछ करके था। फिर एक ये बना रहा था मैं कि एक प्रॉब्लम वाला सेक्शन था। प्रॉब्लम वाले सेक्शन में ये था कि यहाँ पे लीड कोड के सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको मान लो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो यहाँ पे सिंक लीड कोड था, यहाँ से सेलेक्ट करके आप प्रॉब्लम्स वगैरह भी ले सकते थे। ठीक है, तो एक ये चीज़ थी। और उसके बाद ये लीड कोड का था, ऐसी ही सिमिलर मैंने कोड फोर्सेस का भी किया था, कि एग्जैक्ट कोड फोर्सेस का भी है जो कि आगे है। फिर आप कॉन्टेस्ट वगैरह दे सकते हो। तो ये कॉन्टेस्ट अरीना थी, कि अगर आपको किसी के साथ बैटल करना है, तो आप कॉन्टेस्ट क्रिएट करके यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो, और नाम डालने के बाद बैटल स्टार्ट कर दो। तो बैटल स्टार्ट करने के बाद ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप उसके साथ कॉन्टेस्ट कर सकते हो, जो भी इस लॉबी को ज्वाइन करेगा। ऐसे करके एक एक सेक्शन मैंने बनाया था इसमें। एंड कॉन्टेस्ट रुको। हाँ, एक ये चीज़ थी। उसके बाद ये तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने बेटर हो, तुम्हारी रैंक क्या है, तुम्हारे परफॉर्मेंस एनालिसिस वगैरह। और वो जो मैंने एआई लगाया था, बिकॉज ऑफ आई थिंक सो उसका वो ख़त्म हो गया टोकन चार्ज वगैरह, तो इस वजह से वो चलता नहीं है। फिर ये कॉन्टेस्ट का था, और यहाँ पे बैटल था। बैटल मतलब 1v1 अरीना है ये। इसमें आप अपने फ्रेंड के साथ
रियल टाइम में compete कर सकते थे, और रियल टाइम में compete करके आपको पता चलता कि आप अपने फ्रेंड से कितने बेटर हो, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़े और आपको पता चले आप कितने बेटर हो और इम्प्रूव कर सकते हो। और तो एक ये चीज के अंदर, वेट अ मोमेंट, और एक एक ये था, एक कंपाइलर मैंने खुद का बनाया था, एंड लेकिन बिकॉज ऑफ इसमें मैंने जज जीरो यूज किया था, इसमें सारे क्वेश्चन नए थे, ये मेरे खुद के बनाए हुए, मतलब ये था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद बनाए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि एआई से जनरेट करवाया था जो किसी प्लेटफॉर्म पे ना मिले। तो ऐसा करके मैंने कुछ बनाया था। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ऐसा ऐसा करके मैंने बनाया था, लेकिन इसको मैं ज़्यादा होस्ट नहीं कर पाया और ज़्यादा इस पर ट्रैफिक भी नहीं मिला सकता, क्योंकि इसमें मैंने जो यूज़ किया है वो एक फ्री, एक जापानीज कोई कंपाइलर है, उसका यूज़ किया है मैंने पीछे। जस्ट जीरो पैसे मांग रहा था, तो भाई पैसे कहाँ से लूँ बाद में जब आएंगे तब लगा दूंगा। और ऐसा करके मैंने एक प्रोडक्ट ये बनाया था, इसको फ्यूचर में मे बी मैं लॉन्च करूंगा। हम्म? और चाहिए? हाँ, एक एक दो और। लो पकौड़ी का थोड़ा और चाहिए? एक एक ये था, लो और खा लो। और इसके अलावा और भी बनाए थे कि एक ये मैंने, जैसे रेज्यूमे वाले में क्या प्रॉब्लम होती है, नहीं ये तो रेस्क्यू लिंक है, ये बनाया था मैंने उन लोगों के लिए जिनको उस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो वो लोगों को खाने वगैरह की नीड रहती है काफ़ी कुछ की, तो उन लोगों के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था कि उसमें ये कर सके कि किसी को हेल्प वगैरह की ज़रूरत है तो बस वो वहाँ पे डाल दे कि मुझे हेल्प की नीड है, तो वो मैप में शो होता रहेगा, और जो भी वहाँ पे वॉलेंटियर वगैरह होगा, ठीक है, वो वॉलेंटियर उस लोकेशन लेके और उनका नंबर लेके उस पोजीशन पे जा सकता है उनकी हेल्प करने के लिए। एक रेज्यूमे के ऊपर बनाया था कि रेज्यूमे मतलब समझ में नहीं आता कि भाई मेरे रेज्यूमे में क्या खराबी है या क्या प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर पूरा एनालिसिस रिपोर्ट एक जनरेट करके के एआई दे देता था। और वो जनरेट करने के बाद उसमें ये होता था कि वो ये भी बता देता था कि ये जो इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हो या इस जॉब प्रोफाइल के लिए कर रहे हो, इसमें क्या क्या बिहेवियर क्वेश्चन, क्या क्या टेक्निकल क्वेश्चन ये सब पूछे जा सकते हैं, वो सब बताता है वो। ठीक है, और साथ में उस जॉब के ओरिएंटेड क्या रेज्यूमे होना चाहिए वो भी जनरेट करके देता है। तो एक वो बनाया था, एक मैंने ऐसा ही एक्साइले ड्रॉ जैसा ही एक सॉफ्टवेयर बनाया था, ड्रॉ ड्रॉ प्रोजेक्ट करके, वो होगा इधर ही कहीं पड़ा होगा। तो ये सब मैंने पहले बना रखे हैं लेकिन मैंने छोड़ दिया। कोड बॉक्स देखना न्यू है, हितेश सर ने ओपीसी लॉन्च किया है कंपाइलर। हम्म। ठीक है, मैं देखूंगा देखूंगा। तो इस वजह से इतनी सारी चीजें मैंने बनाई और फिर मैंने इधर आ गया। हाँ बस हो गया। हो गई हम्म। बस हम्म। इतने बार पकौड़ी ले वो ना ना, हो गया। अब नाश्ता नहीं चाहिए। वन ऑफ द रीजन ये भी था मेरा डेवलपमेंट से हट जाने का कि मैंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सीखी थी, तो मैं क्या करता था कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन चालू किया था। आई जस्ट स्टार्टेड डीएसए, एम आई इन सेकंड ईयर नाउ, आई थिंक आई एम लर्निंग डीएसए इन सी प्लस प्लस बट माय कॉलेज की डीएसए इन जावा। हरकीरत के कोर्स में नहीं। तो बेसिकली देखो भाई उत्कर्ष, अ, ये डीएसए में ये तुम कंपनी में पहुंच जाओगे ना तब भी ये कंपटीशन चलते रहता है, सी प्लस प्लस जावा। ठीक है, अब तुमको मैं एक सिंपल चीज ये बता देता हूँ कि तुम कोई भी ऑनलाइन जज पे चले जाओ, कोड फोर्सेस या लीड कोड, ठीक है, वो दोनों काम करते हैं रन टाइम पे। ठीक है, अब बेसिकली जावा एक हैवी लैंग्वेज है तो उसका कंपाइलेशन टाइम ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये जो तुम देखते हो कि 2 मिली सेकेंड्स में जो सॉल्व हो गया या दिखाता है टाइमर, ये बेसिकली रन टाइम होता है। तो रन टाइम के मामले में दोनों इक्वली एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, लेकिन लोग सी प्लस प्लस इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट ज़्यादा बढ़िया है। अब जैसे मान लो कि जावा है, जावा तुम डीएसए कर सकते हो, लेकिन जब तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाओगे, बिकॉज ऑफ उसमें फास्ट चीज़ें करनी रहती हैं और बिकॉज ऑफ बहुत सारी लाइब्रेरी सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है, तो वो लोग सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं उसमें।
ठीक है, तो इसीलिए अब तुम ये समझ जाओ कि बिहार में कहाँ से हो भाई? बिहार में कहाँ से हो? कहाँ से हूँ मैं बिहार में? हाँ, छपरा से। बट मैं बहुत टाइम से गया नहीं हूँ। मोस्टली मतलब मैं यहीं पे रह गया हूँ। ये है तो भाई, जावा सी प्लस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी लैंग्वेज कर लो, ठीक है। बस ये है कि तुम्हें अगर ऐसा है कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग साइड जा रहे हो और तुम्हें डाउट्स आएंगे, तो डाउट आने में ये है कि जो मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स जो है, वो तुम्हें सी प्लस प्लस के ही मिलेंगे कि उसमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो वाली चीज़ है। बाकी तुम अगर खुद पढ़ने वाले हो तो तुम फिर किसी में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम्म, मतलब दूर से भाग के हटा दे भाग के। छपरा में कहाँ था भाई? मैं ही वही। अबे छपरा के आगे गांव पड़ता है मांझी। मतलब छपरा तो डिस्ट्रिक्ट है ना, इससे आगे एक मांझी करके वो पड़ता है जगह, उधर से हूँ मैं। हम्म। और डेवलपमेंट छोड़ने का मेरा मेन रीजन ये नहीं था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मेन रीजन ये था, मैं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है। तो हुआ ये कि एक कंपनी कैल डॉट कॉम, उसमें मैं कंट्रीब्यूशन करने गया, और मैंने गलती से क्या किया, उसका डॉकर चला दिया, डॉकर रन कर दिया कि वहाँ प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाए, और उसके वजह से क्या हुआ, मेरी मेमोरी लीक हो गई। मेमोरी लीक होने की वजह से सारे ऐप क्रैश हो गए, विंडो क्रैश हो गया, और मैं डर गया उसके बाद, तो उसी वजह से मैंने छोड़ दिया करना। और मैं इधर आया कि भाई ये सब रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पता चले गेम बच जाए। मैं अभी लीड कोड बनाया था स्क्रैच से, और कोड बॉक्स लॉन्च किया था इसे सर ने। मैंने तुरंत क्लोन करके इंटीग्रेट किया, मस्त चल रहा था। और दैट्स गुड बडी। डॉक ने धमाका कर दिया मेरे लैपटॉप में। अब ये सब चीजें मुझे, वो जो आया था बंदा, उसको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए बस लीड को वो दिखा दिया कि भाई ये देख गिटअप। चलो भाई, वही उसी का इंतजार कर रहा था, चालू हो जाए काम धंधा। एक सेकंड, रजिस्ट्रेशन तो मैंने कंप्लीट कर दी है। हम्म, देखते हैं एक क्वेश्चन भी हिलता है क्या। क्या कर रहे हो भाई? भाई ये कॉन्टेस्ट का वेट कर रहा था, 2 मिनट में चालू होने वाला है, देखना है कि एक क्वेश्चन भी हिल पाता है कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी अगर हिल पा रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या कर सकता हूँ, तो भाई अच्छी बात है। पूछ विचार। गिव सम एडवाइस फ्रॉम मी, आई एम इन थर्ड ईयर। किस चीज से रिलेटेड एडवाइस? पढ़ाई से? पढ़ाई से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो भाई यही है कि क्या यार, क्या एडवाइस दूँ? एडवाइस तो मतलब यही है कि भाई मेहनत करते रहो, और क्या। एडवाइस मतलब ये है कि एक दो चीजों में, जैसे डीएसए में क्या एडवाइस है कि जैसे बहुत लोग सी प्लस प्लस जावा के पीछे भगते रहते हैं कि जावा करें सी प्लस प्लस, तो तुम कुछ भी चुन लो, एक चीज करो। और हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि डीएसए इम्पोर्टेंट है। मुझे भी थोड़ा गाइड कर दो, लेट फर्स्ट ईयर। हाँ, ये है कि भाई एक एक चीज जो मुझे गलती लगी, जो मुझे मैंने कर दी, वो कि मैंने डीएसए छोड़ दिया था डेवलपमेंट के चक्कर में, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि डिफरेंशिएट करो एआईएमएल वर्सेस फाइनेंस। एआईएमएल वर्सेस फाइनेंस, फाइनेंस में भी तो यूज हो रहा है, वेब 3 के साइड भी तो एआईएमएल यूज होता ही है। मतलब ऐसे कर नहीं सकते।
ये है कि फाइनेंस साइड तो वो हो गया ना, जो वेब 3 वगैरह की बात कर रहे हैं, सोलाना इथीरियम वगैरह। अगर उस साइड का पूछ रहे हो तो भाई उसका भी सही है, और उसका कंपटीशन अभी कम है, तो उसमें स्कोप है ज़्यादा। और ये डीएसए कर रहा हूँ 5 महीने से। 303 कुछ प्रॉब्लम हो गए लीड कोड में। क्वेश्चन, हाँ, एक और गलती, दो गलतियां थी। पहली गलती, क्वेश्चन करते रह गए। दूसरी गलती, डीएसए छोड़ दी थी, ठीक है, बीच बीच में। तो इसको ये कर सकते हो कि भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप इम्प्रूव हो रहे हो कि नहीं, जिंदगी में कभी पता नहीं चलता। आपको अगर सही में इम्प्रूवमेंट पता करनी है कि आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, ये देखो भाई, कुछ पहला क्वेश्चन तो कुछ आ गया ठीक ठाक सा। फॉर अ परमुटेशन बी ऑफ यूनियन यू हैव टू डू फॉलोइंग प्रोसेस: इनिशियलाइज अ काउंटर सी और ईच आई फ्रॉम 1 to n, आइदर ऐड आई पी आई। हाँ, अरे भाई, कुछ 3-5 करना है इसके साथ, ठीक है, देखते हैं क्या करना है। ये यहाँ पे, ओके ठीक है। क्वांट की बात कर रहे हैं भाई, फाइनेंशियल में वो। अच्छा, क्वांट की बात कर, अरे क्वांट तो भाई, क्वांट के इनिशियल पैकेजेस भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि उनकी जो कंपनीज हैं वो जल्दी उठाती नहीं है टायर 3 से। एक तरीका है, अगर आप किसी भी कॉलेज में हो, मान लो कॉलेज में नहीं भी हो, तो एक तरीका है आपको हायर होने का, कि आप कोड फोर्सेस पे मास्टर, ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाओ, तो आपकी हायरिंग हो जाएगी। ये वन ऑफ द वे है। दूसरा तरीका ये है कि आप आईआईटी चले जाओ, गेट का एग्जाम दो, आईआईटी पहुंच जाओ। और वो आती हैं कंपनीज वहाँ पे, एचएफटी वाली। एचएफटी में प्रॉब्लम ये होती है, देखो, अगर आप पैसों के मामले में बात करोगे तो एआईएमएल एक है जो पैसा देता है अच्छा खासा, एक डेटा साइंस, और एक एचएफटी है बहुत तगड़ा पैसा देता है। इनिशियल पैकेज 1 CR के ऊपर देता है। आपकी महीने की सैलरी होगी ना 15-20 लाख रुपए, ये समझ लो। तो ये है फाइनेंस साइड। लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको एल्गोरिदम डिजाइन करनी पड़ती है, आपको लो लेटेंसी कोड पे काम करना पड़ता है, बेसिकली C++ में जो कोड होते हैं, ठीक है, एकदम जो ग्राउंड लेवल पे जाके फिर वो उठा लेंगे। पर लोग जॉब छोड़ देते हैं जब 12-15 घंटे। हाँ, वो आप जब जूनियर रोल पे रहते हो तो आपसे ज़्यादा काम करवाया जाता है एचएफटी में, क्योंकि बेसिकली आपको एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी है खुद। मतलब ये जो डीएसए में तुमने एल्गोरिदम पढ़ी, इसके अलावा डिज़ाइन करो जिसके वजह से आपका कंप्यूटर फास्ट हो। और फास्ट होने पे ये होता है कि उस कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो आपको शेयर्स मिलते हैं, उस कंपनी के कुछ परसेंट प्रॉफिट मिलता है। तो वो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप 5-6 साल काम करोगे, आपको ज़िंदगी में कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना पैसा मिलता है, ये वाली चीज़ें। खैर, वो सब बात की बात है। कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं तो सुबह बन जाएंगे वरना। हम्म, सो क्या दिया हुआ है कि ठीक है, मेरे को एक 1 करोड़ तो जेन स्ट्रीट का एवरेज पैकेज है। हाँ हाँ, जेन स्ट्रीट, सीटाडेल, ह्यूडसन रिवर, और क्या है, 2 सिग्मा है, एक क्वाडाई करके कंपनी, एक टावर रिसर्च है। ये सब इतना ही देते हैं। फॉर अ परमुटेशन पी ऑफ इवन लेंथ यू कैन डू द फॉलोइंग प्रोसेस: इनिशियलाइज अ काउंटर। ठीक है, मेरे को एक काउंटर इनिशियलाइज करना है, C=0। अब मेरे को क्या करना है, हर आई के लिए क्या करना है, हर आई के लिए 1 से लेकर n तक जाना है, ठीक है, n तक जाना है। और आइदर मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐड कर दूं आई को हर एलिमेंट में, ठीक है। आइदर ऐड आई इंटू पी आई टू सी, और आई इंटू पी आई फ्रॉम सी। तो मेरे को क्या करना है कि मैं एक आई इंडेक्स पे जाता हूँ, एक काउंटर लेता हूँ, और ठीक है,
तो जैसा जैसा मेरे से बोला गया है कि क्या बोला गया है कि एक इंट काउंटर बनाओ, ठीक है, जो कि 0 है, ठीक है। उसके बाद मेरे से बोला गया है कि एक फॉर लूप चलाना जिसमें हर आई के लिए एक बेसिक अप्रोच में क्या सोच सकता हूँ कि ठीक है, मेरे को ये करना है कि ए डॉट साइज, ब्रो 600 प्लस ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी इज ओनली 6 8 गेट। या आई नो, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, आईआईटी की, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन कंपनीज का एवरेज पैकेज कितना है, कि वो कितना देती है। आपको क्रैक करना है तो ये है कि आपको 30 मिनट में 90 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं उनके पहले राउंड में। वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो 30 मिनट में 90 क्वेश्चन का मतलब पर मिनट 3 क्वेश्चन, और वो भी मैथमेटिकल। तो एक्सेप्ट यू हैव बेस्ट आई टू, हाँ, तो दैट्स वाई बहुत कम लोगों की एचएफटी में लग पाती है। तो मेरे को ये समझ में आया कि ठीक है, मैं हर एक पॉइंट पे जाता हूँ और बेसिकली मैं 1 से चालू करता हूँ, और फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n, मेरे को 1 से चालू करना है, ठीक है। मैं हर आई पे जाता हूँ और फिर क्या करता हूँ कि मेरे को ऐसा दिया हुआ है कि मैं 1 से चालू करूँ और n तक जाऊँ, यानी हर एलिमेंट पे जाऊँ, ठीक है, यानी जो भी n तक जाऊँ फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n। ओके, सो बेसिकली मेरा जो आई है वही 1 से स्टार्ट है, और मुझे क्या करना है कि 1 से n तक जाना है, ठीक है। फ्रॉम 1 to n आइदर एड आई इंटू पी आई टू सी। मैं हर एक इंडेक्स को पकड़ूं 1 से n तक, और उस इंडेक्स को पकड़ने के बाद उसका जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करूं, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सी में या फिर तो मैं जोड़ दूं, और या फिर तो घटा दूं, या कुछ ना करूं। भाई फाइनेंस कंपनी सारे आईआईटी में नहीं जाती, जाते हैं बॉम्बे और दिल्ली, रेलवे इन खड़गपुर। तो वॉल्यूम इज वेरी लो। भाई वॉल्यूम तो यार यही है, इट्स अ 1200 आई वाज थिंकिंग दैट व्हाट आई हैव टू डू। मेरे को ये पता चल गया कि ठीक है, मेरे को एक काउंटर बनाना है, और काउंटर बनाने के बाद मेरे को ये करना है कि फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक जाऊंगा, और हर एलिमेंट के लिए मतलब हर एक पोजीशन पे मैं खड़ा रहूंगा, और मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये आई, जीरो को रिमूव कर दूंगा, जीरो से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 1 से n तक जाना है, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा कि उस वाले इंडेक्स को लूंगा और उस वाले एलिमेंट को लूंगा, तो या फिर तो मैं ये करूंगा कि ये जो इंडेक्स और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। ये 3 काम मैं कर सकता हूँ। लेट द फाइनल वैल्यू ऑफ काउंटर बी सी फाइनल फॉर्मली फॉर ईच आई बिलोंगिंग्स टू 1 to n। सो मतलब कि आई जो है वो 1 से n तक बिलोंग कर रहा है, और एस आई मतलब कि सेट ऑफ आई है जिसमें 3 ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकता हूँ, माइनस आई इंटू पी आई, और 0, और आई इंटू पी आई, एंड चूज सम। ठीक है, तो मेरे को एक एक्स कोई भी एलिमेंट जिसको मुझे चूज करना है, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है सेट आई से, ठीक है। एंड वो सेट आई ऐसा होना चाहिए सच दैट जब मैं इसका फाइनल निकाल रहा हूँ तो वो एक एक ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैं इस तीनों में से, क्या मैं तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, और यू हैव गिवन सिंगल इवन इंटीजर n, फाइंड एनी परमुटेशन ऑफ लेंथ एंड सो दैट रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेशन चूज द फाइनल सी वैल्यू विल नॉट बी 1। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं जो सी फाइनल वैल्यू निकाल रहा हूँ वो 1 से चालू है और n तक जा रही है, ये बात तो ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक्स आई ले रहा हूँ, वो एक्स आई क्या है, वो एस आई से बिलोंग करता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लेना है सच दैट कि सी फाइनल 1 ना बन जाए, 1 ना बन जाए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद। तो बेसिकली मेरे को रिटर्न क्या करना है, यू आर गिवन अ सिंगल इवन इंटीजर
And what I have to return? For each test case, output integer n pi to pn, a permutation satisfying the condition. Ah, मेरे को permutation in the first test case the permutation given in the output is 2 1. सो तीन टेस्ट केसेस लिए हैं जिसमें मैंने सबसे पहले 2 लिया है। 2 लिया है मतलब कि दो साइज की एरे मेरे को लेनी है। चलो ठीक है। तो एक सेकेंड, द काउंटर में बी इंक्रीमेंटेड इन फॉलोइंग 9 वेज। दो एलिमेंट लेने हैं और दोनों एलिमेंट को इनिशियली मैंने 0 रखा। ठीक है, तो दो साइज की एरे बनाऊंगा क्योंकि मेरे से क्या बोला गया है कि इनपुट में मैं बस एक सिंगल नंबर ले रहा हूँ। और सिंगल नंबर लेने का मतलब क्या है? सिंगल नंबर ले रहा हूँ और उससे मैं एरे बना रहा हूँ। सेकंड फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पकड़ा है यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या क्या पकड़ा है। वेट, पड़ेगा कि और वो परमुटेशन पी ऑफ इवन लेंथ, एक इवन लेंथ की परमुटेशन, इवन लेंथ बेसिकली। और दूसरे वाले तो और आड़े तिरछे ही होंगे, ये तो और बड़ा है। अगर मैं इसको सोच पाता हूँ, आज मेरा हिट आ रहा है इसी पे सोचूं पहले। सो ठीक है, फॉर अ परमुटेशन p of even length you can do the following process। एक काउंटर इनिशियलाइज करना है, ठीक है। सो इनिशियलाइज काउंटर जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, फॉर ईच आई, आई क्या है, आई के बारे में कुछ नहीं बताया, आई कुछ तो है, ठीक है। जो ये मेरे को पता है कि वो 1 से n तक बिलोंग करता है, तो एक आई है जो कि इस रेंज में आता है 1 to n, ठीक है। एक और एक ये दिया है। उसके बाद मेरे को बोला गया है कि मेरे को क्या करना है कि मैं तीन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। या तो मैं आई इंटू पी आई करूँगा, या फिर तो मैं ज़ीरो करूँगा यानी कुछ परफॉर्म नहीं करूँगा, और या फिर तो मैं आई इंटू पी आई करने के बाद इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगा काउंटर में से, ठीक है। सो लेट अब फाइनल वैल्यू जो भी आएगी, वो जो फाइनल वैल्यू होगी उसको मैं सी फाइनल बोल रहा हूँ, सी फाइनल। ठीक है, अब ये जो सी फाइनल है ये है क्या बेसिकली कि एक आई लिया, और आई जो है वो 1 से n तक कुछ भी हो सकता है, फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n। हर आई जो 1 से n तक, मतलब एक एक एलिमेंट लूंगा। जैसे मान लो कि पहली बारी में मैंने आई लिया 1, अगर मैंने आई इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो अब मैं क्या करूंगा कि कंसिडर अ सेट, एक सेट दिया हुआ है, सेट के अंदर इसी का नाम रख देता हूँ एस आई, ठीक है। एक आई लिया मैंने, अब वो आई लेने के बाद एक सेट है मेरे पास एस आई जिसके अंदर ये तीन ऑपरेशंस प्रेजेंट है। अब इसमें से मैंने एक कोई भी ऑपरेशन को चूज किया जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू 1 के लिए एक्स आई, सम एक्स आई पे। एक सेकेंड, जब मेरे को बोला गया कि मेरे को ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एक्स आई, तो जब मेरी एक्स एक्स की वैल्यू, जब मेरी आई की वैल्यू 1 होगी, तब मेरे एक्स आई की वैल्यू भी तो x1 होगी। तो जब मेरे तो x1 मतलब कि यहाँ पे ये, अब ये 0 बेस इंडेक्सिंग है कि 1 बेस इंडेक्सिंग है, इनिशियली क्या लिया गया है।
सो 2 into i लिया गया है, 2 प्लस वाला लिया गया है, ठीक है। तो यानी कि पहला ऑपरेशन चूज किया मैंने, ठीक है। ये मैंने पहला ऑपरेशन चूज कर दिया एंड ओके। और ऐसे ही करके मेरे को सबका सबमिशन करना है। माई ब्रेन कुकिंग। We have to break this question, and then we have to understand that what actually this question is all about. So it is given that we have a counter. So and the counter initial value is 0. And after that, there is one thing is also given that I will take some I, and that I will be from 1 to n. Okay. And I have to perform some operation. That what operation I have to perform? I have to take that I, multiply it pi, and after that multiplying, I have to do any of this. Like either I will add it into the counter, subtract it, or do nothing. Okay. So after that, it is given that we have to calculate what is the C final. With C final, we have to take the summation. Okay. So if I want to calculate the C final, so what does the C finals means? So it means that x1 plus x2 plus x3 plus x4 up to xn. So we have to do this. Okay. So for that, first we have to know that what is permutation star p. Hmm. A permutation length consisting of recess case multiple first line conversion number of test waves. Again. Okay, so basically it is given that what we have to do after performing some this operation, some permutation is generated and we have to return that permutation. That's what you are asking for, I think so. That if I take this two, bro, you are using Linux or what? And also what you are Codeforces rated. So my Codeforces rating is uh 899 currently, and I'm not using Linux. I am using that what we call this pseudo Linux, which we call WSL. Think about even an odd thing. Even an odd thing. What even an odd thing? Notation of length and is array consisting of listing one to an arbitrary, for example, in a permutation, but decreasing not a permutation. In the permutation, what is 4 in an array? I have to return some permutation. Hmm. And basically, we have to return an array format. We have to return it in array format. Like we have given one element, which is n, and according to that element, we have to generate some permutation of length t in which we perform some operation. Like uh, even order subtract equals even in one is even add or subtract equals even and one is odd. What does it mean? While layer ओपन यूट्यूबर से मिल के आया भाई वो ये सेम सोल्व कर रहा अरे ट्राई कर रहे हैं भाई क्या होगा। सो मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आया कि ठीक है मैं जीरो लेता हूँ और सबसे पहले मैं जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को दो साइड के एरे बने उसमें जीरो ले लिया। अ, ठीक है, ऐसा कुछ किया। फर्स्ट इन द परमुटेशन गिवन आउटपुट एंड काउंटर यू में इंक्रीमेंट इन द फॉलोइंग। अच्छा मेरे को अबे यार ये जो काउंटर देना है तो
काउंटर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या रिजल्ट दे रहा है वो प्रिंट करूँ पहले तो। अब जैसे कि मेरा काउंटर की इनिशियल वैल्यू है n, यानी कि 2। ठीक है, सो मैंने, लेकिन ये 0 क्यों दिया है? ये 9 तरीके से पढ़ सकते हैं। दिस इज नॉट अलाउड। व्हाट नॉट अलाउड? Oh, giving contest in live stream. This is not allowed. I have to aim. Thank you, buddy. Thank you. हाँ, so मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि मेरा इनिशियल काउंटर क्या है। इनिशियल काउंटर 0 है, मैंने 0 से चालू किया। 0 से चालू करने के बाद अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, या तो मैं उसके अंदर i1 को लूँ और उसके साथ pi मल्टीप्लाई कर दूँ, परमुटेशन आई। लेकिन ये pi क्या है? ये pi को मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन pi तो दिए, pi क्या है यहाँ पर? सो फर्स्ट टेस्ट के तो परमुटेशन गिवन। भाई साहब, ये मतलब pi क्या है भाई? मैंने 0 से काउंटर चालू किया और मैंने क्या किया कि फिर मैंने आई इंटू पी आई ले लिया। तो अभी मेरा i1 था और पी आई मैंने क्या किया, पी आई ले लिया। पी आई का मतलब p1 ले लिया। अगर मैं p1 लेता हूँ तो किस चीज़ का p1 और कौन सा p1? पहला परमुटेशन p1। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परमुटेशन ऑफ लेंथ n। p1 का मतलब एक लेंथ की परमुटेशन, आई थिंक सो। एक लेंथ की परमुटेशन क्या होगी? लेट मी थिंक। एक लेंथ की परमुटेशन क्या होगी? एक उसके अंदर आई इंटू पी आई से मल्टीप्लाई हो गया। तीन में से एक ऑपरेशन करना था, पी आई से मल्टीप्लाई कर दिया और आई की वैल्यू भी 1 है इनिशियली। तो अगर ये 1 है तो ये पी आई 2 आ गया। पी आई 2 आ गया। क्या करता है? पी आई इज द वैल्यू एट इंडेक्स ऑफ द परमुटेशन यू चूज। वैल्यू एट, या आई इंडेक्स ऑन परमुटेशन यू चूज। सो बेसिकली आई वांट टू क्रिएट अ परमुटेशन, आई थिंक सो, है ना? मतलब मेरे को परमुटेशन, हाउ द परमुटेशन उनके रिपोर्ट वुड नॉट सेटिस्फाई। सो हाँ, तो दही हो गया यार अभी। बट मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को एक परमुटेशन बनानी है और उसमें परमुटेशन जो भी मेरी बनेगी, हाँ भाई, एक बार सर्च करके तो देख, क्या पता कुछ आइडिया आ जाए। अबे भाई, नो 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 नो। अगर मैं वो काम करता हूँ तो मेरी इम्प्रूवमेंट कैसी होगी? मेरे को खुद दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ये है कि टाइम लगता है सोचने में, लेकिन अगर मैं अभी सॉल्यूशन देखने चला हूँ तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। या समझने भी चला जाऊँ, मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या क्या मल्टीपल वेज हो सकते हैं जो नहीं सोचने चाहिए। या सो बेसिकली अगर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो परमुटेशन पे तो 1 नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा मेरे को करना पड़ेगा कि बार बार मुझे परमुटेशन जनरेट करनी पड़ेगी, या फिर तो मैं इस ये जो एन दिया हुआ है, एक सेकंड मैं ये भी करके देखता हूँ। तो क्या सोचूं मैं? जैसे मेरे को एन दिया हुआ है 2, तो मैं 2 साइज की एक परमुटेशन बनाता हूँ, तो उसमें क्या क्या बनता है? तो एक तो ये 1 2 बनेगा, और या फिर तो 2 1 बनेगा। ये बनेगा, ये दो परमुटेशन बनेगा। बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि
A permutation of length n is an array consisting of n distinct integer. For an example, 2, 3, 1, 5, 4 is a permutation, but 1 to 2 is not a permutation to appear twice in an array, and 1, 3, 4 is also not a permutation. N is equals to 3, but there is 4 in the array. So, अगर wait, मतलब जितने साइज की परमुटेशन है, जैसे कि अगर 3 साइज की परमुटेशन है तो मैक्स टू मैक्स उसके 3 आना चाहिए, एलिमेंट 4 नहीं आ सकता। तो 2 साइज की परमुटेशन है तो 2 ही एलिमेंट आने चाहिए। तो या फिर तो यार परमुटेशन तो 1 टू, फर्स्ट परमुटेशन क्या होगा? फर्स्ट परमुटेशन तो यही होगा यार, 1 टू। और सेकंड परमुटेशन अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, ऐसा सोचता हूँ अगर, तो फिर मेरे को क्या बोला इसने कि मैं इसमें क्या करूँ कि एक एलिमेंट लूँ, और जैसे कि 1 वाला लिया और उस वाले इंडेक्स पे चला गया, तो एक सेकंड ये हटा देता हूँ। मेरे को प्रिंट कराना है अगला परमुटेशन क्या बनेगा, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके। मे भी तो पहला मेरा जो परमुटेशन वाली एरे बनाई मैंने, ये बनाई कि 1 2। उसके बाद मेरे को क्या बोला गया कि एक सी फाइनल जो भी है, खैर जो भी हुई है, अब मुझे क्या करना है कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मान लो कि मैंने इसमें सबसे पहले प्लस वाला ऑपरेशन ले लिया। ठीक है, तो इनिशियली आई की वैल्यू जब 1 थी तो मैंने प्लस वाला ऑपरेशन लिया। तो प्लस वाला ऑपरेशन लेने के बाद क्या करूंगा, आई इंटू पी आई कर दूंगा, आई इंटू पी आई। तो क्या हुआ, आई तो वैल्यू मेरी 1 है, और पी आई की वैल्यू क्या हो गई, पी आई की वैल्यू मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे चले जाओ परमुटेशन में। तो ये 0th इंडेक्स और ये फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पे गया तो मेरे को 2 मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तक की वैल्यू 2 आ गई। ये 2 को मैंने प्रिंट कराया। ठीक है, उसके बाद मैंने आई इक्वल्स टू 1 लिया, सॉरी सॉरी आई इक्वल्स टू 2 ले लिया। हाँ, और आई इक्वल्स टू 2 लेने के बाद अब ये 1 का मतलब क्या है, अब ये समझो। यू आर गिवन एन सिंगल इवन इंटीजर एंड एनी परमुटेशन ऑफ लेंथ should regardless of the operation chosen the final value c final will not be 1. Hello bro, I am in Java program, recently started doing LeetCode. Should I do practice question code forces or just use it for contest game? You can do practice also, buddy. You can do practice, you can give contest also. So यार मेरे को 1 तक नहीं पहुंचना है। और मेरे को क्या पता है कि अगर मैं आई इक्वल्स टू 2 लेता हूँ, तो आई इक्वल्स टू 2 लेने पे होगा क्या, आई इक्वल्स टू 2 लेने पे यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आई इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। 2 आने पे इसको मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ पी आई से, आइदर आई विल सब्ट्रैक्ट इट और आइदर आई विल एड इट। ठीक है, तो पी आई अब 2 इंडेक्स पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एट ईच इंडेक्स I into pi should be even. So if we add or subtract or do not either means take 0. I into pi should be even. So even होना चाहिए. So if we add or subtract, what in code forces we have to do? नहीं, एक्सेप्शन एंडिंग नहीं करनी होती, ये कौन बोल रहा है? एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करनी होती। should be even. So if we add or subtract or do not either means take 0, तो हमेशा even आ रहा है तो 1 नहीं आएगा। तो आई के हिसाब से अगर आई ऑड है तो पी आई ऑड ले, ताकि आई पी आई इवन आए। हम्म अगर आई इंटू पी आई इवन हो, हाँ, आई इंटू पी आई अगर इवन आ रहा है तो कभी भी 1 नहीं पहुंचूंगा। लेकिन जावा में करना पड़ पड़ा, नहीं तो कोड रन नहीं हो रहा है। अरे नहीं भाई, मैंने भी किया है, ऐसा नहीं होता।
एक सेकंड में वन वन तक ना पहुंचूं कभी भी वन नहीं आना चाहिए। वन कब आएगा? वन जब आएगा क्योंकि यहाँ तो मैं प्लस माइनस माइनस वगैरह कुछ कुछ कर रहा हूँ। कौन से ईयर में हूँ? फोर्थ ईयर। सो प्लस, एक सेकेंड, वन कब आएगा? वन कब आएगा जब मैं कोई ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है। आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा बट, सो मैं एक सेकंड, वन कब आएगा जब मैं किसी ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, पहले मेरे तो यही सोचूं कि यार यहाँ पे कंपनी के लिए अप्लाई किया, रिवर्ट आ रहे हैं। नहीं यार, कंपनी के लिए तो अभी तक अप्लाई नहीं किया। वो नेक्स्ट वन से जस्ट स्वैप फॉर ईच इंडेक्स टू। तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया बड़ी। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ यार, मेरे को अभी तो मेरे को क्वेश्चन में ही क्लियरिटी नहीं है इतनी पूरी कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, मुझे करना क्या है ढंग से। इसी में फंसा पड़ा हूँ पहले तो मैं। इसी क्वेश्चन में पहले तो मैं क्लियरिटी लेके आऊँ क्वेश्चन में क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन में मेरे को जहां तक ये समझ में आया है कि भाई एक परमुटेशन है इवन लेंथ की। एक परमुटेशन में पहली बनाऊं इवन लेंथ की, और उसके बाद फॉर अ परमुटेशन पी ऑफ इवन लेंथ ये मेरे को बनानी है। ठीक है, इवन लेंथ की एक परमुटेशन जिसके अंदर क्या होंगे कि जितने एलिमेंट्स हैं परमुटेशन। एक सेकेंड, परमुटेशन में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। सो ये है कि जितने साइज की एरे है उससे बड़ा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, और दो एलिमेंट्स डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। तो पहली चीज तो मेरे को ये समझ में आई कि आई हैव टू क्रिएट सम परमुटेशन। एक परमुटेशन मेरे को क्रिएट करना है। ठीक है, और जिसमें ये है कि भाई एलिमेंट्स डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए और लेंथ से ज्यादा बड़ा वाला एलिमेंट ना आ जाए। तो अगर लेंथ इसकी दो है तो वन और टू के अलावा थ्री नहीं आ सकता। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक काउंटर बनाना है, इंट काउंटर। ठीक है। एक काउंटर मैंने बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो रखी, और अब मैं आई इक्वल टू वन से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, और एन तक जा रहा हूँ। तो बेसिकली आई जो है वो मेरा वन से चालू हुआ और यहाँ पे टू तक जा सकता है बस। ठीक है, तो अब वन से टू तक जा रहा हूँ, और अब मैं मेरे पास तीन ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए। कि मैं क्या करूँ कि एक वन को लूँ और वन इंडेक्स पे जाऊँ। ठीक है, और वहां पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, एक बारी में मैं यही काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने आई इक्वल टू वन लिया, तो मैं वन इंडेक्स पे गया, और वन इंडेक्स पे जाने के बाद तीन चीजें जनरेट करूंगा। या फिर तो मेरा आई इंटू पी आई होगा। ठीक है, और या फिर तो जीरो होगा। तो ये जीरो तो कोई जनरेट करना नहीं है, जीरो मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। और आई इंटू पी आई का मतलब कि आई इक्वल टू वन है, तो वन लूंगा और वन को मल्टीप्लाई करूंगा पी आई से। तो पी आई मतलब कि इस वाले पोजीशन पे क्या एलिमेंट पड़ा है, तो ये टू वन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं टू वन ले लेता हूँ, सॉरी टू ले लेता हूँ। टू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा ये टू आ गया। तो मेरी आई इंटू पी आई की वैल्यू टू हो गई, और माइनस आई इंटू पी आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई, वो भी माइनस टू हो गई। ठीक है, तो मेरे पास अभी आई इक्वल टू वन के लिए तीन ऑपरेशंस हैं। या तो मैं टू को ऐड करूं, या माइनस टू को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर मैं कुछ भी ना करूं। ठीक है, तो मैं ये तीन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि मैंने क्या किया, अ, कि ये जो मेरे पास तीन वैल्यूज हैं, माइनस टू, जीरो और टू, इन तीनों में से एक पॉइंट के लिए आई इक्वल टू वन के लिए कोई भी एक वैल्यू को सेलेक्ट करूं। तो आइदर मैं टू सेलेक्ट करूं, या जीरो सेलेक्ट करूं, या माइनस टू सेलेक्ट करूं। हो गया क्वेश्चन? यार मेरे को अभी तो डाउट ही आ रहा है कि मैं करूंगा क्या इसमें। मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा ढंग से। खैर। सो
मेरे को ये चीज समझ में आई कि ठीक है, मैं यहाँ पे तीन ऑपरेशंस हैं, या फिर तो मैं टू करूँ या -2 करूँ या जीरो करूँ, इन तीनों में से कुछ तो परफॉर्म करूंगा। ठीक है, और ये तीनों ऑपरेशंस में किसके अंदर परफॉर्म करूंगा? काउंटर के अंदर। ठीक है, तो या फिर तो मैं वैल्यू को दो को जोड़ दूंगा या घटा दूंगा या कुछ नहीं करूंगा। अब मेरे को एक चीज और यहाँ पे क्या दी हुई है कि कुछ भी करना, लेकिन यू आर गिवन आप कॉलेज में हो, क्या बढ़िया, आई एम इन कॉलेज। So you are given a single even integer n, find any permutation of length n, so regardless of the operation choose, the final value c final will not be 1। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूं, लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद 1 नहीं पहुंच जाऊं। 1 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि, अरे यार ये जीरो बेस इंडेक्सिंग है, लेकिन यहाँ पे 1 से चालू किया है। तो आई थिंक सो कि ये जो ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ये जो ऑपरेशन में यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ, 2 1 बन गया। 2 1 कैसे बना? तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जीरो से काउंटर चालू किया, और मेरे पास -2 2 और 2 था, -2 2 और जीरो, ये तीन वैल्यूज थी। तो मैंने क्या किया कि मेरे को जीरो नहीं जाना, तो मैं तो पहले से ही जीरो पे खड़ा हूँ, 1 भी नहीं जाना। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, मैंने 2 को ऐड कर दिया, 2 पे पहुंच गया। अब मैं माइनस करूंगा तो वापस जीरो पे आ जाऊंगा। तो बेसिकली मेरे को कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने थे? तो मैंने मेरे को दो ऑपरेशन तो परफॉर्म करने ही करने हैं, क्योंकि n इक्वल्स टू 1। भाई एक, भाई इवन इंडेक्स पे उल्टा प्रिंट कर दे और ऑड पे सीधा। लेकिन यहाँ पे तो इनपुट ही एक वैल्यू है, इनपुट तो एक ही वैल्यू है, 2। क्या प्रिंट कर क्या प्रिंट कर दूं? और ऑड पे उल्टा मतलब 1 2 करूँ, इवन पे सीधा प्रिंट कर दूं, तो ये जीरो इवन है और 2 ऑड है, उल्टा तो ये तो 1 2 ही रह गए। हाँ ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि फॉर लॉन्ग I इक्वल्स टू n, इफ I मॉडुलस 2 इज 0, सी आउट n-1, n माइनस आई, एन एल सी आउट आई। पास हो गया तुम्हारा ये? हाँ भाई, कॉलेज में ही है, कॉलेज में ही है। The first will be the coordination, the counter में भी incremental में हो रही है। तीन ऑपरेशंस मेरे को हैं, या फिर तो मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, कुछ करना कुछ और है, मैं सोच कुछ और रहा हूँ। इवन इंडेक्स, हेलो सर, अरे सर्वर में नहीं, सर्वर नहीं हूँ भाई। कौन से ईयर में हो? आई एम इन फोर्थ ईयर, बड़ी। हाँ, अरे यार ये तो खेल खत्म हो गया, ये तो प्रिंट, बस ये प्रिंट करने से काम हो जाएगा मतलब। ये तो क्या चीज है भाई, एन तक मैं जाऊं, एंड आई इक्वल्स टू जीरो से। तो पहले मैं क्या करूं कि एक एरे जनरेट कर लूं 1 से n तक, मतलब कि जो भी मेरे पास एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 या 1 2 3 4, और फिर लेट लेट्स सी, सो ऐसा कुछ, या इट्स अ ब्रांच एक्चुअली, नॉट कोर CSE। I am doing specialization in artificial intelligence and machine learning. Huh. Uh, I like your consistency. Nice, keep it up. Thank you so much. Thank you. Ah.
सो 1 2 अगर मेरे को क्या करना है यहाँ पे कि 1 2 दिया है। अब मैं पहले अगर परमुटेशन जनरेट कर लेते हैं, जैसे इसका देखता हूँ कि 5 6, 5 6 की बजाय 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, and after knowing that, okay, what I have to print is क्या करना है यार, पांचवा पहले पे आया है और 6, और इनके इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3 4 5, so this is the index, fine. And now what I have to do, I want one here, two here. No, 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 no. And what I want is an answer. I want the answer to be 5 4 6 2 1 and 3. This is the answer. Is there a pattern or something? A zero and let's see. Okay. I will see that. Okay. What I want to print. I think I have seen you anywhere. Are you from Noida? Yeah, I am from Greater Noida. Uh, increase your mic volume. अरे यार यही है ये ईयरफोन ही है यार। और एक और है, रुको लेट मी ट्राई, बताना इससे आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। कोड तो मैं सेव दूं लेकिन इस कोड से फायदा, मेरे को एनालाइज तो करने दे कि भाई वो कैसे आया है, मतलब क्या है उसका, कुछ सेंस है कि बस ऐसी डायरेक्ट बस आंसर है, क्या चीज है वो, मेरे को वो भी तो चेक करना पड़ेगा। भाई इसकी आवाज बताना, इसकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज? सो मेरे को करना क्या है यार, मतलब ये तो मैं प्रिंट कर दूं, क्या चीज है ये कि भाई एन ऑड आता है, मतलब कोई भी एक नंबर है या कोई भी एक एलिमेंट है। अब यार ये तो नंबर ही लिख दिया है कि अगर ये वाला नंबर आई इक्वल टू जीरो से चालू करो और एन तक जाओ, एन तक में चला गया, तो पहले आई इक्वल टू जीरो आया, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि क्या ये इवन है। हाँ अभी ठीक है, पहले तो बहुत कम थी। हेलो यार, हेलो। हम्म। हेलो हेलो। सो आई इक्वल टू जीरो, अगर आया मेरा ये आई इक्वल टू जीरो तो इवन है, तो एन माइनस आई प्रिंट कर दो, एन माइनस आई प्रिंट कर दो, तो एन की वैल्यू अभी मेरी क्या है, 5, ठीक है, तो 5 - 0 5 प्रिंट कर दो, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करो कि 1 पे चले जाओ, 1 पे जाने के बाद अब मेरे को क्या प्रिंट करना है, अब मेरे ये देखूंगा कि 1 तो ऑड हो गया, तो अगर 1 ऑड आता है, ठीक, 1 तो ऑड ही है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, क्या बोला, आई ही प्रिंट कर दो, तो भाई आई जो है अभी ऑड आ गया, अगर ऑड आ गया तो 1 प्रिंट कर दो। अबे लेकिन 1 क्यों प्रिंट करूंगा, ये तो 1 थोड़ी प्रिंट करना है, यहाँ पे तो 4 आ रहा है तो गलत हो गया, कि चल कैसे गया। मेरा बीसीए सेमेस्टर 1 शुरू हुआ, कॉलेज का एक्साइटेड। ओ दैट्स गुड भाई, एंजॉय करो कॉलेज लाइफ। हाँ, कॉलेज लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, वो ढंग से बीतना चाहिए बस। ये तो भाई गलत हो गया, क्या बता रहा है जब मैंने देख भाई तेरा ही कोड यहाँ पे ड्राई रन किया है, तूने बोला कि आई इक्वल टू जीरो इवन है, ठीक है, तो आई इक्वल टू जीरो तो इवन आ गया, तो इवन आने पे एन माइनस आई प्रिंट कर दो, तो मेरा मेरा इनिशियल एन क्या था, 5 था, तो मैंने 5 - 0 5 प्रिंट कर दिया। फिर बोला कि आई ऑड है, तो आई ऑड है, एनी टिप्स,
टिप्स, हाँ टिप्स भाई यही रहेंगे, बिकॉज अब मैं ज्यादा मौज मस्ती वाला आदमी हूँ नहीं। तो मैं बस ये सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज में बहुत तरीके के लोग मिलते हैं आपको। एक वो होते हैं जो आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे, उनकी खुद की बर्बाद है, आपकी भी कर देंगे। और दूसरे वो होते हैं जो थोड़े से अपने फोकस्ड होते हैं करियर पे या अपने घर वालों को लेके। तो भाई ये जो दूसरी वाली कैटेगरी है इससे बच के रहना, क्योंकि इनका कुछ नहीं होता, और ये फिर थर्ड ईयर के बाद ऐसी, या फिर तो किसी के कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, और नहीं तो टाइम पास करते मिलेंगे। ठीक है, और उस चक्कर में वो दूसरों का भी बर्बाद कर देते हैं। तो उस वाली कैटेगरी को थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है कि उस वाली क्योंकि ऐसे बहुत सारे होते हैं। प्रॉब्लम डिड डिस्क्वायर वेरे गेम एंड इंक्रीमेंट, अरे हाँ ठीक है यार। हम्म, सब कर लिया। क्या? अबे यार, आड़ा तिरछा तो क्वेश्चन है, मैं वो तो यही सोच रहा हूँ। वो बोला कुछ एक कोड बता दिया उसने, और वो कोड मैंने ड्राई रन कर दिया, यही फेल हो गया। वो कोड कह रहा है ये पास हो गया, पता नहीं कैसे। भाई बता दे कैसे पास हुआ तेरा कोड, मेरे को तो नहीं आ रहा समझ में ये। वो लॉजिक चलेगा ही नहीं, प्रिंट करना डायरेक्ट कहीं से प्रिंट हो रहा है। हम्म। हम्म। थैंक यू बडी फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच। हम्म। हाँ। हाँ। यार मैं मतलब, अबे यार कहाँ चल रहा था, कहाँ पहुंच गया, छोड़ो। मेरा दूसरा वाला नहीं हो रहा। अरे ये पहला वाला कैसे हुआ? पहला वाला कैसे हुआ ये बता दो। मतलब मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे को परमुटेशन जनरेट करने पड़ेगी। एनीथिंग यू रिगार्डेड, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड या, यार रिग्रेट तो कुछ भी नहीं है। रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने कॉलेज में कुछ नहीं किया है भाई। और लिटरली मुझे कॉलेज बिल्कुल ही पसंद नहीं है अब। इसलिए मैंने कॉलेज के पहले जितनी चीजें करनी थी सब कर डाली। मतलब बेसिकली मैं क्या था कि स्पोर्ट्स वगैरह या पढ़ाई लिखाई या क्रिएटिविटी में ज्यादा रहता हूँ। लेकिन बिकॉज ऑफ मेरा कॉलेज से मन हट गया तो मैंने कॉलेज में कुछ भी नहीं किया। मोस्टली मैं यही ट्राई करता था घर कब भाग जाऊं और अपना काम धंधे पे कैसे ध्यान दूं बस। तो ना मेरे दोस्त हैं ज्यादा कॉलेज के, दोस्त भी बहुत कम है, मतलब हाथ में गिन लोगे इतने से। मतलब जानते बहुत सारे लोग हैं मेरे को कॉलेज में, लेकिन एक फ्रेंड जो होते हैं वो फ्रेंड बस दो ही तीन है। भाई फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाया। नहीं यार, अ, अगर n इवन है तो हर इवन इंडेक्स पर ऑड नंबर रखना, और हर ऑड इंडेक्स पर इवन नंबर। और अगर एक सेकेंड, अगर n इवन है तो हर इवन इंडेक्सेस पर ऑड नंबर रखना है। n अगर इवन है तो हर इवन इंडेक्स पे ऑड, n अगर जैसे इसका इवन है तो हर इवन इंडेक्सेस पे ऑड नंबर रखूं, और हर ऑड इंडेक्स पे इवन, ठीक है। और अगर एंड हर ऑड इंडेक्स पर इवन नंबर, और अगर एन ऑड है तो इवन ऑड नंबर स्विच कर दो। इवन ऑड नंबर स्विच कर देना, जैसे कि ये इवन है, ये सारे ही इवन है। 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं वो, नहीं वो इवन वाले पे तो मेरे को समझ में आ गया, और ऑड वाले पे, ऑड वाले टेस्ट के किस हिसाब से तो मेरे को वो चीज समझ में आ गई कि मुझे इवन पे ऑड रखने हैं, ऑड पे इवन रखने हैं। अब तक कितने डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो? यार मैं सही बताऊं, एक रियलिटी ये है कि मैंने क्वेश्चन, देखो, एक एक प्रॉब्लम ये हुई है मेरे साथ कि मैंने गलती करी है। वो गलती ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो डीएसए के क्वेश्चंस या फिर लेक्चर से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और लेक्चर से पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं और उसी को कर देते हैं किसी लीड कोड बीट कोड पे, और उन्हें लगता है कि वो चीज आ गई है। ठीक है, बट मेरे साथ ये हुआ कि मैंने वो चीज तो कर दी, तो उसके हिसाब से मेरे अभी 200 250 क्वेश्चन है, पर मुझे उतने डीप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं एक्चुअल में। वो प्रॉब्लम है। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई ये वाली गलती मत करना, लेक्चर वेक्चर वाली। रोटेट 1 2 n/1। अरे रोटेट, बस
अबे यार, तुम लोगों को यार याद पड़ गया है भाई। मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत नहीं मतलब कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि अब जाके तो मैंने लेक्चर छोड़े हैं। अभी 2-3 महीने पहले ही तो चालू किया था डीएसए ढंग से करना, और फिर मैंने लेक्चर छोड़ा क्योंकि मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, लेक्चर तो बेकार तरीका है, खेल खत्म हो जाएगा। बस बस एक, अबे यार ये क्या करना है कि अरे जैसे यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 5 6 लिया, और यहाँ पे क्या दिखा मेरे को, अगर मैं रोटेट बाई 1, अगर मैं एक पोजीशन रोटेट कर देता हूँ, तो ये बीच में से 3 कैसे निकल गया? एक पोजीशन रोटेट करते ही, और ऑड इंडेक्स, मेरे को ऑड वाले वाले में प्रॉब्लम हो रही है। मैं ऑड वाले में, जैसे यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि ऑड में मैं क्या करूँ कि एंड हर ऑड इंडेक्सेस पर इवन नंबर, और अगर एन ऑड है तो, चलो मैं देखता हूँ। तो मेरे को क्या समझ में आया कि पहले मेरे को एक वेक्टर बनाना चाहिए जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े होंगे। तो एक काम करता हूँ कि फॉर ले लेता हूँ, और बेसिकली मेरे को एरे तो लेना ही नहीं है, एरे मेरे को खुद ही बनाना पड़ेगा। वेक्टर टेस्ट केस कैन हैव मल्टीपल आंसर्स, भाई इवन इंडेक्सेस पर उल्टा प्रिंट कर दे और ऑड पे सीधा। भाई इवन अरे हाँ, कितनी बार लिखेगा भाई, कर रहा हूँ, तो रुक जा। आंसर, और बेसिकली आंसर जो भी बनाया, पहले तो मैं एक एरे ही बना लूं। अच्छा, या फिर मुझे एरे बनाने की भी जरूरत नहीं है? नहीं बनाने की जरूरत। लेट्स सी, सोचने दो गाइस। हमारा हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दो, मुझे सॉल्यूशन मत बताओ, क्योंकि जब तक मुझे समझ में नहीं आता मैं लिखता ही नहीं हूँ कुछ भी। तुम बता तो दोगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे समझ में नहीं आया मैं नहीं लिखूंगा। मेरे को ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे अभी तक जो मुझे चीजें समझ में आई है कि जैसे यहाँ पे मेरे को अगर 4 दिया गया है, और मेरी ओरिजिनल एरे क्या होती है 1 2 3 4। अब मुझे ये समझ में आया कि ठीक है, सबसे पहले ये जो भी ओरिजिनल एरे है, यहाँ पे मेरे को इवन साइज की एरे है, तो मुझे क्या देखा कि ये 2 3 4 1 ऐसा कुछ आया है। अगर ये ऐसा कुछ आ गया, तो भाई मेरे को क्या देखा कि ठीक है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, और इधर 1 आ गया। ओके फाइन। हाँ, हाँ, 1 2 3 4 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, तो ठीक है। मेरा जैसे इवन इंडेक्सेस है, तो जो भी ऑड इंडेक्सेस पे एलिमेंट है वो डाल दिए इवन वाले पे। और एक सेकेंड, सो जितने भी ऑड इंडेक्सेस वाले एलिमेंट हैं, जैसे कि ये हो गया 0 1 2 3, ठीक है, ये सारे एलिमेंट हो गए, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी ऑड वाले इंडेक्सेस पे उनको इवन पर डाल दिया, ठीक है। ये डल गया, तो यहाँ जैसे कि 1 ऑड था और 3 ऑड था, ये यहाँ चला गया, और उसके बाद जो पहले वाले पे पड़ा हुआ है उसको लास्ट में डाल देंगे। ऐसा अगर मैं इसके साथ करके देखता हूँ कि 4, एक सेकेंड, ऐसा करके देखता हूँ, अगर मैं कि 5, सॉरी, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे मेरे पे 6 एलिमेंट्स हैं, और मेरे को क्या करना है कि 5 4 6 2 1 3, 5 4 6 2 1 3, ठीक है। तो मेरे को क्या देखा कि ये भी इवन साइज की है। अब इवन वाले, अब मेरे को यहाँ पे 5 मिल गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 आ गया, और हाय हाय, आवाज आता है भाई यहाँ, लाइट में क्या बोल रही है? ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड अल्ट्रा लेवल पे पागल बनती हो गई है मेरे साथ बिल्कुल। 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 1 एंड 1 2 3 4 5 6 5 4 6 2 1 3। ओके, वो वाला तो चलो मेरे को समझ में आएगा कि अगर इवन साइज की एरे है तो ऑड वाले इवन पर डाल दिए,
मतलब सारे ऑड वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़े थे वो सब इवन इवन पे डल गए, लेकिन इसमें वो चीज फेल हो गई फिर। और क्या बोला, अगर एन इवन है तो हर इवन इंडेक्सेस पर ऑड नंबर रखना, और हर ऑड इंडेक्सेस पर इवन। चलो ठीक है, तो हर इवन इंडेक्सेस पर मेरे को क्या करना है, ऑड नंबर रखना है। अगर ऐसा कुछ करना है मेरे को, तो एक काम करता हूँ कि जैसे मेरा एन आ गया, वो आ गया 6। तो एन अगर इवन है तो पहले मैं हर इवन इंडेक्सेस पे ऑड एलिमेंट रखूंगा, और हर ऑड पे इवन। ठीक है, तो पहले एक काम करता हूँ कि इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3 4 4 5 एंड 6। 6 1 4 3 2 5 भी सही है। 6 1 4, मतलब अगर मैं ऐसा कर, ये भी सही है। टू, और एक सेकेंड, मैंने क्या किया कि हर इवन को ऑड पे डाल दिया, हर इवन इंडेक्स वाले एलिमेंट को ऑड पे डाल दिया। 3 4, हर इवन इंडेक्स वाले एलिमेंट को ऑड इंडेक्स पे डाल, इवन। सेकेंड यार, वो भाई, अगर एन इवन है तो हर इवन इंडेक्सेस पर ऑड नंबर रखना है, हर इवन इंडेक्सेस पर ऑड नंबर रखना है। हाँ, हर इवन इंडेक्सेस पर ऑड नंबर रखना है, तो यहाँ 1, ये इवन पे ये ऑड आ गया। हर इवन इंडेक्सेस पर ऑड नंबर रखना है, ये भी सही है। ये 1 2 3 4 5 6 भी सही है। सिर में दर्द हो गया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, सोच में आ गया यार, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे परमुटेशन बनाना ही नहीं था, मैं फर्जी वाला परमुटेशन कर रहा था। मेरे को बस ये सोचना है कि प्रिंट कैसे करनी है, ये पैटर्न प्रिंटिंग, कि प्रिंट कर दूं। मेरे को क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, कि जित इवन इंडेक्सेस दिए हुए हैं, हर इवन इंडेक्सेस को अगर मैं उठाता हूँ 0 1, और इवन इंडेक्सेस को उठाता हूँ, वहां पे ऑड आ रहा है, ऑड नंबर आएगा हर इवन वाले इंडेक्स पे। नहीं, अबे यार, ये तो 0 इंडेक्स पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 2 आ रहा है, यहाँ 0 इंडेक्स पे 5 आ रहा है। सो सबके अलग अलग लॉजिक है। n/5 में 4 5 और 2 3 1, अब बस 2 पेयर चुनना, स्विच कर देना। 2 पेयर चुन के स्विच कर दूं, वो तो ठीक है। अब कोई एक इवन ऑड पेयर स्विच कर देना। अच्छा, कोई भी ऑड इवन पेयर में स्विच तो कर दूं, लेकिन और क्या क्या था वहां पर। अ, भाई, अब तक कितने क्वेश्चन हो गए आपने? व्हाट आर थॉट ऑन डूइंग डीएसए इन पाइथन? भाई, मेरे क्वेश्चंस तो यार 250 तक हो गए हैं, लेकिन यार भैया, वो लेक्चर से कॉपीड क्वेश्चन है, वो किसी काम के नहीं है। अब खुद से मैंने कितने क्वेश्चन करे हैं, तो भाई 10 15 करे होंगे। मोस्टली वो लेक्चर से देख के, लेक्चर्स पढ़ते हैं आप, उस क्वेश्चन को लिखते हैं, और वहां से करे हुए तो वो तो 250 है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आर यू डूइंग डीएसए इन पाइथन? पाइथन में कर सकते हैं, अगर आप एआईएमएल साइड जा रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो C++ और जावा प्रेफरेबल है। आ, आ, अगर एन इवन है तो हर इवन इंडेक्सेस पर ऑड नंबर रखूं, इवन इंडेक्सेस पर ऑड नंबर रखूं, तो ये तो तीनों ही टेस्ट केस फेल हो गए, क्योंकि यहाँ इवन इंडेक्स पे इवन नंबर आ गया, इधर ऑड आ गया, इधर इवन आ गया। और रखना, और हर ऑड इंडेक्सेस पर इवन नंबर, अगर मैं हर ऑड इंडेक्सेस पर इवन नंबर रखता हूँ, तो ये और ये दोनों फेल हो गए।
इफ आई मॉडुलस टू 0 फिर से वही लेकिन अबे फिर से वही लिखने लगा भाई। चल भाई मैं तेरी बात मान लेता हूँ जो तू बोल रहा है। अगर पास हो गया तो मेरे को इसका कॉन्सेप्ट समझाइए कि कैसे है। ठीक है, अगर तू इसका कॉन्सेप्ट समझाएगा तो वेल एंड गुड। वेल एंड गुड। सो वेक्टर इंट आई मैं ये सब छोड़ देता हूँ और मेरे को एक इनपुट लेना है टेस्ट केसेस के लिए एक एन लेना है तो यहाँ पे ठीक है। अबे भाई मल्टीपल टेस्ट केसेस अलाउ हैं। मल्टीपल टेस्ट केसेस अलाउ हैं तो ठीक है। मैं पहले वन से चालू करता हूँ और लेस देन एन तक जाऊँ। अच्छा, लेस देन एन तक जाओ। वेट वेट अ मोमेंट गाइस। मैं आई स्क्वेयर टू वन से जाता हूँ एन तक और फिर मैं बिकॉज ऑफ मैं वन से ही कर रहा हूँ सब कुछ काम। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अ, कर रहा हूँ एक सेकंड। कॉलेज से कुछ आया है भाई। अरे यार ठीक है, अरे यार ये ऑपरेटर बस है ना। जीरो। थैंक्स फॉर द सजेशन।
अरे यार, चलो भाई, तो मैं इसको शुरू से चालू कर लेता हूँ। और फिर क्या बोला गया है कि ठीक है, जो भी आए लेना और उसका मॉडुलस 2 कर देना, इक्वल्स टू। अगर ये 0 आ जाता है तो सी आउट। और इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? लॉजिक नहीं घुस रहा दिमाग में। मतलब आंसर तो चलो ठीक है कि इसका आंसर ये आ रहा है, लेकिन ये आंसर का लॉजिक या कोई सेंस है इसका? मतलब क्यों है ये आंसर, या कहाँ से ये सोचा गया है कि हाँ भाई यही आंसर होगा, ऐसा कुछ। एन माइनस आई इवन है तो माई लॉजिक वर्क बिकॉज हर पोजीशन पर अपोजिट पेरिटी और इवन असाइन हो रहे हैं। सिंपल। इवन माइनस इवन, इवन इवन प्लस इवन, इवन इवन माइनस ऑड कैन बी वन। ये है लॉजिक। फ्री टेस्ट पास। भाई फ्री टेस्ट क्या है? अरे ठीक है, पास तो ठीक है भाई। अरे क्वेश्चन कम कैसे हुआ है? Is a you are given a single construct an array of n distinct positive integer a1 to an and such that for all I a1 a2 a3 up to an is divisible by ai। अब भाई मैं खुद सोचूंगा। पैटर्न पकड़ना था वहां पे बस। So you are given a single integer and construct an array of n distinct positive integers a1 to an। एक एरे बनाना है। अ, एक एरे ऑफ एन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नंबर ले सकता हूँ 1 से लेकर एन तक। एक इंटीजर दिया हुआ है। अबे 9 कैसे आ गया इसमें? एक सेकंड। यू आर गिवन सिंगल इंटीजर एन, ठीक है, एन की वैल्यू ये दी है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो एन दिया है इतने साइज की एक एरे बनानी है जिसके अंदर एन, इस जिसके अंदर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर होंगे a1 a2 अप टू an, सच दैट फॉर ऑल आई 1 से n है, a1 से लेकर an तक जो भी नंबर हैं वो डिविजिबल होंगे ai से। इज डिविजिबल बाय ऑल ai। अरे बाप रे! अरे बाप रे! मेरे को एक एरे कंस्ट्रक्ट करना है खुद, और उसके अंदर एलिमेंट भी अपने मर्जी से डालने हैं, और ऐसे एलिमेंट्स डालने हैं जो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स मेरे को डालने हैं सच दैट कि उनका सम करूं, सम करने के बाद जो वैल्यू आए वो सबसे डिविजिबल हो। तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि सबसे पहले एक एन की वैल्यू तो उसने बकी नहीं है, कहाँ तक लेनी है कुछ भी ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो। और ये भी बताना है अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये बताओ कि एग्जिस्ट भी नहीं करे। 1926। हाँ।
Line contains the number of test cases. एक साइज की एरे लूं और एक साइज की एरे लेने के बाद उसका सम निकालूं और देखूं कि वो जो सम आया क्या वो इससे डिविजिबल है, वो तो होगा ही। अब मैं जब दो साइज की एरे बनाने जाऊं तो दो साइज की एरे में ऐसा एलिमेंट लूं या सम करूं तो ये दोनों से डिविजिबल हो। हाँ मतलब इसमें एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस में कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन तो दे देगा लेकिन हो सकता है कुछ लगे ही ना। जैसे कि अभी मेरा दिमाग उड़ गया बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन में कि मैं ये सोचने लगा ये परमुटेशन ये बनाओ वो बनाओ और तुम लोगों ने पता नहीं क्या बोला कि ये कर दो इवन ऑड। तो ये प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज सोच पाना जो अभी तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ मतलब लगेगा यार, टाइम लगेगा। अभी तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जिसका कुछ खबर ही नहीं है। नंबर थ्योरी के बारे में भी इतना डिटेल कुछ पता नहीं है, ना गेम थ्योरी के बारे में कुछ आता पता है क्या चीज होती है वो सब। उसके बाद कई क्वेश्चंस और आड़े तिरछे से हैं। देखते हैं कैसे होगा क्या होगा। अगली बार नेक्स्ट संडे से मैं ये करूंगा, कल से आता हूँ आपकी क्लास में। अरे अबे भाई क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, समझो भाई क्लास व्लास नहीं लेता हूँ मैं। आपको पढ़ना है आप आ सकते हैं, यहाँ पे और लोग भी आते हैं, ठीक है। आप एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, आपको जो प्रॉब्लम हो ये चीजें हैं। तो बेसिकली मैंने इसीलिए ये बनाया है कि जिसको ऐसा होता है कि कॉलेज में कलीग्स नहीं मिलते, बातचीत करने के लिए लोग नहीं मिलते, पढ़ने के लिए लोग नहीं मिलते, वो यहाँ पे आ सकते हैं पढ़ने। बिकॉज सबका इम्प्रूवमेंट होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू अपने अपने में सब लगे रहे। हाँ। अरे यार डिविजिबल भाई ये आई। अब अगली बार से मैं यही करूंगा, अगले संडे से मैं से कोड फोर्सेस के क्वेश्चन मतलब करूंगा। अभी तो मैं फंस गया यार, ये मेरा टाइम अभी देखा जाए तो मेरा टाइम वेस्ट ही करेगा क्योंकि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं मैक्स टू मैक्स इसमें क्या सोच पाऊंगा कि अब यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू 9 ले लिए जो कि पता नहीं कहाँ से आ गई। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेरे को एक एरे कंस्ट्रक्ट करनी है एन साइज की और उस एरे के अंदर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे। ठीक है, A1 A2 A3 अप टू AN कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, और क्या बोला गया है सच दैट फॉर ऑल आई। अब ये आई जो है वो कुछ एक नंबर है जो कि 1 से n तक हो सकता है। मैं क्या करूंगा A1 A2 A3 A2 अप टू AN। एक सेकेंड, मेरे को क्या करना है, मेरे को एक डिस्टिंक्ट एरे जनरेट करनी है, मतलब एक एरे जनरेट करनी है जिसके अंदर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। और डिस्टिंक्ट होने के बाद मेरे को क्या करना है कि एक एलिमेंट ले EI, वहां पे जो आई है वो 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। वो सच दैट ऐसा EI है या ऐसा एक नंबर है जो कि क्या है कि सबका सम लूं जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है और इस नंबर से डिवाइड कर दूं, या फिर ये जो एलिमेंट जो भी आएगा ये इन सब का 9 1 10 और 18। मुझे एक एरे बनानी है, उस एरे के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबका सम करके एक नंबर जनरेट होगा और वो जो नंबर है वो सारे एन के अंदर जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है सबसे डिविजिबल है।
The first case, the condition is clearly satisfied since 1 is divisible by itself. In the second test case, the output A 1986, which has sum is equals to 18, which is divisible by all AI. तो साला मेरे को पहले बात तो एक एरे लूं, उस एरे को मैं बनाऊं और उसके अंदर एलिमेंट्स खुद डालूं अपनी मर्जी से, और ऐसे एलिमेंट्स डालूं कि जब उन एलिमेंट्स का सम करूं तो सम करने के बाद जो नंबर आए वो उन एरे के जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है सबसे डिविजिबल हो। ऐसा एरे जनरेट करके देना है मुझे। क्या सोचूंगा मैं इसमें। और ये है कि अच्छा, एरे जनरेट करके देना है तो चलो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो 1986 दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये 12 मतलब 1269 भी ले सकता हूँ मैं, और या फिर तो मैं कुछ और भी ले सकता हूँ कि कोई और भी नंबर ले लूं। 123612 ये पैटर्न ले। हाँ हाँ, मतलब वही वहां पे जो मैं देख रहा हूँ कि 1926 जो दिया है वो ऐसी है, मतलब मैं इसको सीधा भी ले सकता हूँ। प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट कि एक एलिमेंट लूं और एक एलिमेंट में फिर दूसरा जोड़ू तीसरा जोड़ू। 123612 वन लिया और वन में वन जोड़ा तो टू आ गया। नहीं अरे फिर पीछे के दो जोड़ा तीन आ गया। एक और दो इन तीन इन छह इन बात। आह, यार उनका मैं सम निकाल दूंगा। सम निकालने के बाद जो नंबर आएगा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि एक दो में हमेशा ले लूं फेवर, एक दो में हमेशा ले लूं और उनका सम करूं, फिर उनका सम करूं सम करूं सम करूं सम करूं सम करूं। एक लिया तो एक के लिए तो भाई एक नंबर, चार का मुझे बनाना है तो वन से चालू, मतलब कि मैं मतलब अगर मेरे को चार का बनाना है मैं वन से चालू करता हूँ और टू भी ले लेता हूँ साथ में। तो अगला नंबर जो आएगा वो प्रीफिक्स सम, मतलब पीछे वाले दो कंटिन्यूअस सम आता है, ये तो वन आ गया ये टू आ गया, और टू आने के बाद मैं पीछे के दो का सम करूंगा, यहाँ पे तीन आएगा, पीछे के दो का करूंगा पांच आएगा, ऐसा ऐसा करूं प्रीफिक्स। और या फिर नहीं नहीं यार ये तो ये प्रीफिक्स सम गाऊंगा कि वन टू थ्री फोर, ऐसे करके इसका सीरीज जनरेट करता हूँ तो ये तो वन आ गया, और वन और टू थ्री आ गया, और थ्री सिक्स आ गया, और सिक्स और फोर टेन आ गया, ये आ गया प्रीफिक्स सम तो। हाँ। अरे पांच, पांच क्यों, पांच कहाँ लिया है। भाई इवन नोट कर दो। अबे यार फिर इवन नोट कर दो। 6 4 10 ही तो होता है, 12 कैसे आ गया। बोले भाई अबे पांच क्यों, एक दो हमेशा ले, मैंने नहीं एक दो तो हमेशा लिया ठीक है, ये एक दो ले लिया, लेकिन ये पांच क्या लिखा है अबे, पांच क्यों, मतलब पांच कहाँ लिया है मैंने, वो पूछ रहा हूँ। हाँ यार यही तो प्रॉब्लम है यार, मतलब मैं नहीं सोच पा रहा हूँ उस चीज को लेके कि
मैं हूँ ही इतना इम्प्रूव नहीं हूँ अभी इसमें। 10 कैसे? अरे मतलब प्रीफिक्स में तो यही हुआ ना कि एक नंबर लिखा और फिर ये दोनों को जोड़ा कि एक ये लिया और एक ये लिया, तो ये 3 आ गया, फिर ये 3 और ये 3 6, i-1 करते हैं ना, तो करंट एलिमेंट प्लस पिछला वाला प्रीफिक्स, तो 6 आया। तो करंट एलिमेंट प्लस पिछला वाला प्रीफिक्स जोड़ा तो 10 ही तो आएगा, 12 कैसे आ गया? छह का मल्टीपल। वेट भाई, वेट वेट वेट। प्रीफिक्स में तो यही करते हैं ना, करंट एलिमेंट प्लस पिछला वाला प्रीफिक्स, यही तो करते हैं। 4 3 7 2 9 1 10। रुको भाई, सोचने तो दो। अबे, अबे कौन सा अबे ये तो मैं एरे, मुझे लगा एरे वाला प्रीफिक्स सम बोल रहे हो, एरे वाले प्रीफिक्स सम में तो यही होता है। और ये कौन सा, ये अबे ये तो कुछ और प्रीफिक्स सम है। अब 6 आ गया। छोड़ो भाई, मतलब मेरे को अभी ये बदली वो वाली चीज समझ में ही नहीं आ रही, क्या 6 और क्या कैसे क्या क्या। लीव इट। फालतू का, फालतू का दिमाग क्या खराब करना है यार। और नहीं हो रहा मतलब ये है कि कितने ज्यादा मतलब पूछ पूछ के मैं क्या कर लूंगा यार, पूछ के थोड़ी करना है मुझे। तुम लोग बता भी दोगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। लीव दैट। तो टाइम लगेगा उस चीज में इम्प्रूव होने में, कर जाऊंगा तब देखूँ। बेसिकली मेरी डेवलपमेंट और एआईएमएल साइड थी, लेकिन अभी मैं डीएसए के साइड आया हूँ। देख रहा हूँ भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। और उतना डीएसए भी मेरा स्ट्रांग है नहीं। 1 2 3 1 into 6 2 into 6 3 into 6 है। देखो मैंने जहां तक जो भी प्रीफिक्स सम पढ़ा है, ठीक है, तो अगर मैं 1 2 3 4, अगर ऐसा कोई मान लो 4 एरे के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो प्रीफिक्स सम का ओवरऑल लॉजिक लॉजिक और कोड क्या होता था, हम लोग ये चीज जनरेट करते थे। एक सेकंड रुकना। कंट्रोल फिट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये देखो, हाँ वही मेरे को जानना है कि 6 क्यों लेना है। 6 क्यों लेना है मेरे को वो जानना है। अरे हाँ यार, वो टर्मिनल मैंने इस वीएस कोर्स के अंडर ही खोला था, लेकिन ये पागलपंती करने लग गया, तो इस वजह से ये टर्मिनल खोलना पड़ेगा दूसरा वाला। मेरे को वो जानना है कि हम 6 क्यों ले रहे हैं। पर 6 आया कहाँ से? मतलब जैसे कि अगर मैं इस सीरीज को लेके जनरेट करता हूँ, मेरे पास अगर एक एरे दिया हुआ है यार आर, तो अगर मैं ये 1 1 2 3 4, ठीक है, ये दिया, और अगर मैं प्रीफिक्स सम इसका जनरेट भी करता हूँ, तो प्रीफिक्स सम क्या बनेगा? इंट, और यहाँ पे पी सम, और जो कि हम n 0 लेते हैं ऐसे, और
p sum I is equals to 0 which is equals to array of 0 and for यहाँ पे जो भी हम एक सेकेंड एंड i is equals to 1 से चालू करते हैं और 1 से चालू करके हम n तक जाते हैं और इसमें और p sum का फिर क्या बनता है p sum of I is equals to p sum of I minus 1 plus array of I ये बनता है और फिर हम for int x p sum अरे यार int cout x और यहाँ पे ये जो n आया है वो इसकी वजह से आया है int n is equals to era dot size ये देखो 13610 ये मैंने सीरीज सोची थी तो 1 + 2 प्रीफिक्स सम की तो मेनली सीरीज यही होती है ना मतलब ऐसे ही तो जनरेट करते हैं प्रीफिक्स सम लेकिन तुम कुछ और बता रहे हो कि ये कुछ अलग है कि इसमें 1 2 3 प्रीफिक्स या फिर तो या फिर तो मैंने गलत पढ़ा है आह, शायद बिकॉज प्रीफिक्स का लॉजिक में रिपीट हो रहा है शॉर्टकट है रियल सॉल्यूशन कम्स फ्रॉम एडिंग ऑल बिफोर नंबर 1 2 इज परमानेंट उसके बाद जेनरेट करो अच्छा 1 2 को अगर मैं फिक्स ओके ठीक है सो बेसिकली मैं एक प्रीफिक्स सम में मतलब ये दोनों फिक्स कर दूं कि यहाँ पे ये 1 है तो ये भी 1 ही रहेगा एंड देन उसके बाद मैं इसको 2 से जनरेट करूं ऐसा कुछ अगर मैं 2 से जनरेट अबे यार ये तो और दूसरी सीरीज आ गई एक सेकंड रुकना बस ये देखिए यार वो एक्चुअल इसको हटाओ सेकंड रुकना देखो ये तुमने जैसे बोला कि मैं एरे के एलिमेंट ना लूं बस प्रीफिक्स सम से ही सीरीज जनरेट कर दूं ये ऐसा कुछ और बस उसमें दो परमानेंट कर दो हाँ मैं प्लस इक्वल्स टू लिख देता हूँ तो मैंने एरे जीरो में मतलब पीसम जीरो में चलो ये एरे जीरो तो हटाओ यहाँ से फिर यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ और फिर मैं सेकंड इंडेक्स से चालू करता हूँ और जो करंट वैल्यू है उस करंट वाली वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू जोड़ दो यार करंट वैल्यू तो जनरेट ही नहीं हुई कभी अब ये आ गया अब हाँ, ये तो ये तो कुछ और आ गया ये तो 1 2 2 2 आ गया पीसम 2 को 3 रखो अच्छा अब उसको भी रखो ठीक है और लूप को 4 से चलाओ ठीक है अच्छा 4 से चला देता आई मीन 3 हाँ ठीक है 1300
ओ पी सम ऑफ, ओके, ठीक है, सॉरी, सॉरी सर। 1233 आ गया। क्या करूँ? अरे भाई न, एन नंबर का सम के आता है तो n+1 नंबर के लिए ही डाल दो, क्योंकि एन नंबर तक तो सही है, तो के डाल दो इंटू, आपने p1 लिया है। p2 आपने p1 लिया है, बट कहाँ? चलो मैं ये चीज हटा देता हूँ, ये हटेगा नहीं यार, ये तो रखनी पड़ेगी साइज के लिए। चलो, मैंने क्या किया, प्रीफिक्स सम एरे बनाया, यहाँ पे मैंने उसकी साइज जितनी एरे की साइज थी वो दी, और फिर मैंने जीरो डाला कि अभी कुछ नहीं है। फिर मैंने पी सम जीरो की वैल्यू 1 दिया, और 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, और अब मैंने थर्ड इंडेक्स से वैल्यूज जनरेट करना चालू करा। तो प्रीफिक्स सम का, जैसा तुमने बोला कि मेरे को ये लगाना चाहिए, पी सम इक्वल्स टू पी सम i-1, मेरे को बस ये जानना है कि प्लस इक्वल्स टू जैसे ही लगा दूंगा तो पी सम वो करंट वाली वैल्यू जो कि अभी है ही नहीं, जहां पे जीरो पड़ा हुआ है वही ले लेगा, और उसमें प्रीवियस वाली वैल्यू डाल देगा। तो ये सही कैसे है? अगर मैं, चलो तुम्हारी ये जो तुम कह रहे हो कि ठीक है मैं ये कर देता हूँ, जैसे पी सम ऑफ आई कर दिया मैंने यहाँ पे, अब मैं जब मान लो कि 3 पे आया तो सबसे पहले मैंने देखा कि 3 पे पड़ा गया है, 3 पे पड़ा है जीरो, और फिर 2 पे क्या पड़ा था, तो 2 पे देखा तो 3 पड़ा हुआ है, तो 0+3 जोड़ के 3 डाल दिया। पीसम 2 आपने पीसम 1 लिया है, तो ये काम कैसे कर रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैंने वो करके भी देख लिया, मैंने प्रीफिक्स सम ओरिजिनली जो मैंने सीखा था कि प्रीफिक्स सम में हम क्या करते हैं कि पीछे में अभी तक जितना कंटीन्यूअस सम आया हुआ है उसको रखते हैं और आगे वाले सम को कैलकुलेट करते हैं, जो कि मेरा ओरिजिनल अप्रोच जो मैंने सीखी थी। तो वो तो चली नहीं, क्योंकि वो तो 10 दे रहा है, पर आप लोग कह रहे हो कि 12 आएगा, आई डोंट नो हाउ। ठीक है, एक तो वहां फंस गया मैं, उसके बाद ये वाला लॉजिक भी मैंने लगा लिया, ये भी काम नहीं कर रहा। हेलो बडी, हेलो। सो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, लाइक, यस वही वही करना है। हाँ मतलब कि देखो, मैंने किया तो वही था, लेकिन आई डोंट नो वो रॉन्ग हो गया, और उसके बाद तो मेरे को समझ में भी नहीं आया कि फिर वो क्या चीज करनी है कि 12 आएगी। हेलो बडी, कह तो दिया, क्या हो गया भाई? 1 2 लिया, 1 2 के बाद 1 2 को प्लस किया, 3 हो गया। फिर मैंने 1 2, मतलब मैं करंट पोजीशन पे खड़े होके पूरे प्रीवियस से कर, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई, मेरे को देखने दो कि वो वाली सीरीज कैसे जनरेट होगी, क्योंकि मेरे को उसका आइडिया नहीं। भाई क्या हो गया, बीसी क्यों लिखने लग गया, क्या हो गया? क्या बात हो गई भाई? 1 2 3, सो ओके, मैं एक वेक्टर एरे इंट इंट पीसम की एक सीरीज बनाता हूँ, ठीक है। पीसम में मैं एन डाल देता हूँ, कॉमा 0। अब मैं इंट एन इक्वल्स टू, अरे ये भी छोड़ो, मैंने एन की वैल्यू मान लो 4 डाली कि हाँ 4 साइज की मेरे को सीरीज जनरेट करनी है, इनिशियली सबकी वैल्यू 0 है। अब मैंने पीसम 0 की वैल्यू डाल दी है 1, ठीक है। एंड अब पीसम 1 की वैल्यू डाल दी है मैंने, जैसा कि तुम बोल रहे हो कि 2 डाल दो, मैंने डाल दिया। अब फिर मैं एक सीरीज जनरेट करता हूँ, जिसमें मैं आई इक्वल टू 3 से चालू करता हूँ, ठीक है। और 3 से चालू करने के बाद मैं एन तक जाता हूँ, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स तक, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ तक जो सीरीज आई है
उसमें मुझे बेसिकली करना क्या है कि पी सम आई के अंदर जो मैं डालूंगा वो पी सम ऑफ, अगर मैं पिछले वाले दो लेता हूं तो वो हो रहा है पी सम ऑफ आई और पी सम ऑफ आई माइनस टू। ओ हाँ, टू, वेट, टू, हाँ हाँ, टू टू, ओके ओके, वेट। क्योंकि अगर मैं अब टू से चालू करता हूँ तो यहाँ पे अब मैं सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू डालने जाऊंगा तो वो बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ थ्री आनी चाहिए, तो जीरो और वन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अब जो मेरी सीरीज जनरेट होगी इंट एक्स नम्स और पी सम, तो सी आउट एक्स, खाना होगा तो बताइएगा ना। एक दो तीन और पांच आ गए। हम्म। और या फिर तो मेरे को ये करना पड़ेगा अब यहाँ पे कि पिछला वाला, बट ये पी सम नहीं है। हाँ, ये पांच देगा, पांच दिया इसने, अब इस पांच का क्या करूं? और ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये प्रीफिक्स सम थोड़ी है, ये तो फिबोनाची सीरीज है, मतलब फिबोनाची की तरह ही है, ऐसा कह सकते हैं कि उसमें भी हम लास्ट टू टर्म्स का सम करते हैं बस। तो और कोई तरीका? डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट आई विल डू, हे डूड विच वेक्टर्स यू हैव? आई हैव वेक्टर 16। वो वाला मॉडल है 3050 4 GB RTX वाला। I-1. So I don't understand that how it actually works. That how or uh, okay. AI is equals to sum and sum plus is equals to I. ऐसे ऐसे करूँ? ओके, सो ये अभी जो मेरा एआई आया है मैं टू से चालू कर रहा हूँ और अभी तक बेसिकली, तो मैं क्या करूँ कि एक इंट सम नाम का वेरिएबल बनाऊं जो कि जीरो है, ठीक है, और दो जीरो नहीं है, थ्री है, बेसिकली उसने वहां तक का सम रखा हुआ है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी सम निकाल रहा हूँ उस सम के अंदर, लेट मी थिंक, तो यहाँ पे मैं पी सम आई में डाल देता हूँ सम, और फिर जो भी सम आ रहा है उसमें बेसिकली ये पी सम आई को जोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ। एक दो तीन छह। बे यार, मैंने यहाँ पे चार लिया, मैंने जीरो की वैल्यू वन रखी, और सोचने दो एक सेकेंड रुको। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वन आया, यहाँ तक का सम वन है, यहाँ पे टू आया तो यहाँ तक का सम भी टू है, बट जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे अब वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर तक के लिए ट्राई फॉर इक्वल्स टू फाइव। ओके, अब मैं n इक्वल्स टू फाइव के लिए ट्राई करता हूँ। हाँ, ये 12 आ गया।
तो ये वो प्रीफिक्स सम नहीं है जो मैंने पढ़ा है। मैंने जो प्रीफिक्स सम पढ़ा था, उस प्रीफिक्स सम में ये था कि हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम लिखते थे प्रीवियस वाले तक का सम और प्लस करंट सम। और उसमें मतलब ये करते थे कि 0 से स्टार्ट करते थे, बट इसमें 1 से स्टार्ट करना है। सो मे बी लेट मी ट्राई। शायद ऐसा कर रहे होंगे कि मतलब मेरा लॉजिक भी मे बी सही हो, बट मैं ये जो पीसम जीरो कर रहा हूँ। वेट, रुको, तुम्हारा जो कोड है उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैं अपना कोड एक बार ट्राई करता हूँ लिखने का कि इंट एन इज इक्वल्स टू, हाँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है। और जो भी मेरा वेक्टर, और एक स्पेशल केस है जब n इक्वल्स टू 2, तब कोई आंसर नहीं है। तो मतलब बेसिकली ये आंसर मेरे को देना है, ये आंसर मेरे को रिटर्न करना है। सो इफ आई गॉट आंसर इज, विल हैव टू रिटर्न दिस। int t, c in t, and while t minus minus। अरे भाई, सब लोग मेरा इंटरव्यू लेने के बाहर। मैं 4th ईयर में हूँ बडी। आई एम इन 4th ईयर एंड माई कॉलेज इज केसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी इन C in, and if I get n equals to 2, so I will return that C out, and C out minus 1 in nil. No answer. ये जो क्वेश्चन है और ये जो आंसर है, इन दोनों का कोई सिर पैर नहीं समझ में आ रहा। हाँ। अरे भगवान। रोटेटली सॉर्टेड है रे। लोग,
और मैं तो पहले वर्ड वही समझूंगा कि क्या चीज है ये। What an array in which TC or in just brute force. Yeah. नहीं, फॉर एम लूप का आई लॉन्ग नहीं हो सकता, एरे का इंडेक्स ऑलवेज इंट में रखना चाहिए। अरे इंडेक्सेस, बट उसके वजह से तो फेल नहीं होने चाहिए यार लॉन्ग, और इसके वजह से जावा नहीं है, ये सी प्लस प्लस ही तो है। सो मैंने इंडेक्सेस तो इंट ही लिया, और ये जो एलिमेंट इसके अंदर में भी आ रहे होंगे वो, देखो मैंने किया तो यही है, लेकिन ये 2 बार फेल हो गए। वाई? एंड व्हाट इज द लॉजिक, लाइक यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है मेरे को, इसका लॉजिक और ये जो सॉल्यूशन है, ये दोनों तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, ये तो ये मेरे को तो मतलब इसका लॉजिक क्या है यहाँ पर। ये बोल रहा है कि एक सीरीज जनरेट कर दो जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इन एलिमेंट्स का जो सम आएगा उससे डिविजिबल होंगे। आपने 1 प्रिंट करने के बाद कंटिन्यू नहीं किया। रिटर्न करना था यार। यहाँ पे इस वाले टेस्ट केस पे तो रिटर्न टू, एन की वैल्यू 2 कभी भी आ जाए। अरे यार नीचे वाले इसीलिए फेल हो रहे होंगे मे बी। इतना जल्दी क्या है? अब कंपाइलेशन एरर आ, lol, you know you can't stream during contest. Wait, I will show you. अरे यार ये कौन सा कॉन्टेस्ट आ गया। यहाँ पे कई लोग हैं जो करते रहते हैं यार, उन्हीं लोगों का देख के किया था मैंने तो। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है तो ये देखो भाई, ये दिख रहा है, ये भी तो वही कर रहा, बट ये खैर ये तो लेजेंडरी फेलो है। I think about the sum, not the elements instead of choosing number first. Imagine the final sum is some number s, then every chosen element must be divisor of s. Easy. If n is equals to 2, return minus 1. If n is equals to 1, see out 1, and else see out 1, 2, 3 into multiply, int multiply is equals to 6 for I is equals to 4. Return inside the loop. If n is equals to 2, see out minus 1. Oh, will I do continue here and not return?
Okay, so when I return, oh shit, sorry. So if I return it, this function is got terminated. Oh, sorry guys. यार इतने सारे सॉल्यूशंस लेने के मेरे दिमाग दिमाग सही चीज ढंग से काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल कि मुझे करना क्या है इसमें। करना था कंटिन्यू, मतलब मेरे को उस चीज की आदत है, मैं ये करता हूँ ना, मैंने वो कुछ और ही कर दिया उधर। अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। अरे पास हो गया। यार, अरे बाप रे। Why college first time learning street? So I'm in fourth year and I'm starting that DSA just 1 month before. So I am currently learning DSA that. पहली बात तो ये दोनों कॉन्टेस्ट खत्म हुआ कि नहीं हुआ। खत्म होगा तो पहले तो मैं इनके सॉल्यूशन समझूंगा, क्योंकि ये दोनों ही सॉल्यूशन सही बताऊं तो मेरे अ, उतने ज्यादा समझ में नहीं आए कि उन क्वेश्चंस को देख के ये अप्रोच कैसे सोची गई है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है, अगर किसी को समझ में आ रहा है जिन्होंने सॉल्यूशन बताया, तो मेरे को ये बस समझाओ कि जैसे यहाँ पे इसमें दिया था कि एक एरे कंस्ट्रक्ट करनी है मुझे, और एरे कंस्ट्रक्ट करने के बाद मेरे को बोला गया कि उस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे एलिमेंट होंगे कि उनका सम कर दूं तो जो नंबर आए वो नंबर इन सारे एलिमेंट से डिविजिबल हो। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट से। तो मैं वहां से ये प्रीफिक्स सम पे कहाँ पहुंच गया, ये वाली चीज। मतलब ये वाली या फिर तो कोई ये इंट्यूशन है कि ऐसा कुछ सोचा गया है कि ये अनइंट्यूटिव वे, मतलब ऐसे ही बस देखा और वहां से लगा कि ऐसा कुछ कर देंगे, या फिर ट्राई मारा और हो गया। हाउ मेनी क्वेश्चन टिल नाउ एंड टॉपिक्स यू डिड इन 1 मंथ? सो बेसिकली, सो देखो यार, मैं पहले ये कर रहा था कि मैं लेक्चर देख रहा था और लेक्चर से मैंने कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन किए थे। लेकिन लेक्चर देख के मेरे को ये समझ में आया कि जब मैं क्वेश्चन करने गया वो क्वेश्चन हो नहीं रहे। तो मैंने 1 डेढ़ महीने तक वही चीज फॉलो करी है। ठीक है, और उस वजह से मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं अपना खुद का अप्रोच नहीं बना पा रहा। वो बेसिकली लेक्चर की वजह से वो क्या बोलते हैं, वो एक्टिव लर्निंग नहीं हो पाई और खेल खत्म हो गया। तो मैंने जब वो छोड़ा और मैं जब खुद से पढ़ना चालू किया हूँ, तो अब मेरे से ये है कि थोड़ी चीजें मेरे को समझ में आना चालू हुई है। तो इट टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एक्चुअली दिस विल हैपन। सो ये प्रॉब्लम है। तो मैंने क्वेश्चन तो अभी कर रखे हैं, मैंने 250 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, बिकॉज ऑफ मैंने लेक्चर देखा है, उस क्वेश्चन को समझा है, वो कर दिया है। तो उस वो जो 250 क्वेश्चंस मैंने करे हैं उसमें से आप कोई पूछोगे मैं सारे बता दूंगा, और उनको बहुत डीप में ही बता सकता हूँ कि कैसे कैसे क्यों क्यों है। लेकिन उसके अलावा जो नया क्वेश्चन आ रहा है वो करने में मेरे को डिफिकल्टी आ रही है। तो मैं उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने लेक्चर वगैरह छोड़ दिए हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद से ही पढ़ूँ, खुद से ही समझूं। और मतलब ये गलती मैं कर चुका हूँ, तो मैं दूसरों को ये सजेस्ट करूंगा कि भाई मत ही देखो लेक्चर से, साला कुछ होता होता है नहीं। मतलब होता होगा, बट ये है कि मैंने आज तक कभी लेक्चर वगैरह उतना कुछ फॉलो किया नहीं है, और मैंने पहली टाइम फॉलो किया था तो उसमें ही मेरा खेल खत्म हो गया। हाँ। ओके, सो मैथमेटिकल सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि 1 2 3 6 12 24 48, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 इस 6, इसके बाद 6 और 12, 12 और 24 और 48, तो इसका फॉर्मूला है 6 2 के -1, या 2 × 3 2 के -1 + 6 है। तो टोटल सम फॉर n इज ग्रेटर देन 3, मैं को डिवीजन करेगा। ओके ओके। सो कि 1 2 3 6, एक दो लिया और 3 6 में प्रफिक्स जनरेट कर रहा हूँ। और जनरेट करने के बाद ये जो भी नंबर जनरेट हो रहे हैं, तो 6 आया था, तो एक नंबर 6 आ गया। और 6 जो है वो 3 2 और 1 सबसे डिविजिबल है अभी तक। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ
कि अब आगे वाले भी चाहता हूँ कि वो सब भी डिवाइड हो। तो अगर वो सब भी डिवाइड होंगे तो वो बेसिकली 6 के मल्टीपल। अबे यार, अबे यार लग रहा है वापस जेई की मैथ पढ़नी पड़ेगी। स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। अरे उसमें तो बाइनरी सर्च लगता है, आई थिंक सो। उसमें बाइनरी सर्च लगता है। स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम स्टफ टू लीड। हाँ, तो स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम गिवन एन इंटीजर एरे nums and an integer k. Split nums into k non-empty subarray such that the largest sum of any subarray is minimized. ओके, तो मेरे को क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 7 2 5 10 एंड 8 दिया है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि इस एरे को डिवाइड करना है सब एरेज में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को ये दिया गया है कि मेरे को ये जो सब एरे बनाने हैं वो दो ही होने चाहिए, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि ऐसा कुछ कर लेता हूँ कि एक सब एरे ले लेता हूँ 7 और दूसरा सब एरे, समझते हैं भाई कैसे कैसे, ठीक है। तो मेरे को पहले एक सेकंड एक और चीज देखनी पड़ेगी कि इसका सम कितना आ रहा है, 18, ठीक है 18 आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि एक सवेरे लिया 7 के साथ, तो उसका सम 7 आ रहा है। और दूसरा सवेरे लिया 18 और 7 25। तो दूसरा सवेरे लिया उसका सम 25 आ रहा है। अब मैंने इसका क्या किया कि ये देखा कि क्या ये दोनों सब एरे का सम इक्वल आ रहा है। ये इक्वल तो आ नहीं रहा है क्योंकि 25 और 7 है, ठीक है। तो ठीक है, इक्वल नहीं आ रहा है और क्लोज भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओके, ये तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। चलो मैं दूसरा लेता हूँ। तो मैं एक दूसरा सवेरे लेता हूँ जिसके अंदर 7 और 2 है, तो इसका सम जो आ रहा है वो 9 आया। दूसरे वाले का सम, अब मेरे को पता करना है कि इनके बीच में अगर मैं इक्वल चाह रहा हूं, तो अगर ये इक्वल नहीं आते, अगर इक्वल नहीं आते तो इनके बीच में क्या होगा कि जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ये 7 2 लिए 9 आ गया, और दूसरा वाला जो सम लूंगा उसका लूंगा तो जैसे इसका डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालता हूं, तो ये क्या आएगा, 25 - 7 विच इज 18, ठीक है। तो 25 - 7 विच इज 18, ठीक है। अगर मैं दूसरा वाला कोई लेता हूं, तो ये 7 और 2 9 आ गए। और दूसरा वाला जो लूंगा, ठीक है, 7 और 2 9 आ गए। और ये 10 और 8। तो ओके, अब मेरे को इसमें क्या करना है कि एज सच मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, चलो स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ऐसा कुछ है, मैं क्या सोच पा रहा हूँ कि ठीक है, सबसे पहली बात है कि मेरे को दो पार्ट में स्प्लिट करना है इसको। और ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों के अंदर जो सम आए सब एरेस का वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सब एरे का सम बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब कि चलो मैं पहले सब एरेज में डिवाइड करता हूँ। तो पहले एक सब एरे लेता हूँ जिसके अंदर 7 आया, तो 7 का सम 7 ही होगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वेट, तो जो दिया है उसी के बारे में सोचूंगा, फिर उसके आगे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को ये जो दूसरा सम दिया हुआ है 2 5 10 8, ठीक है। तो 2 5 10 8 दिया हुआ है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, इसका सम निकालूंगा 18 और 25, तो ये 25 आ गया। तो इनका, इनमें से जो मेरे को क्या चाहिए कि मिनिमाइज करना है। तो अभी तक का मेरे को देखा कि ठीक है, एक का सम 7 आ रहा है, एक का 25 आ रहा है। तो ये शायद बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर तो है नहीं है, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो इनका डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, और मैं शायद इसमें से मिनिमम लूंगा, अ, या मैक्सिमम लूंगा। वेट, लेट हिम डू विथ केस टू, बाद में देखो हाउ ही अप्रोच, आई विल ऑल्सो डू इट इन स्टार्टिंग स्टक। ओके, सो एक काम करता हूँ कि और भी क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, लेट मी सी। और क्या दिया है, सच दैट द लार्जेस्ट सम निकालना है। ओके, तो अभी तक का लार्जेस्ट सम 25 है। तो मैं अभी तक का ठीक है मान लेता हूँ कि अभी तक का लार्जेस्ट सम 25 आ रहा है, इसको रख लेता हूँ। फिर स्प्लिट करता हूँ तो 60 × 2,
और ठीक है, तो ये दूसरा सब एरे बना और विच इज 9 आ गया। और अब मैं एक दूसरे पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा। तो दूसरा पार्ट क्या आया मेरा, 10 और 5 15 और 8 विच इज 23। तो दूसरे वाले का 23 आ गया, तो 23 अभी तक का। लॉल आई एम ऑल्सो नॉट गुड एट, मैं तो डायरेक्ट हिंट। नहीं नहीं, हाँ तो थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं कि ठीक है। 10 और 8 18 और 5, 18 और 5 भाई 23 हो गए, तो ठीक है अभी तक का लार्जेस्ट सम 23 आ रहा है। ठीक है, तो ये उससे मिनिमम है, तो अभी मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एज सच मेरे को दो ही पार्ट में स्प्लिट करना है, एक तीसरा सब एरे लेता हूँ। मैक्सिमम लूंगा। हाँ मैंने मैक्सिमम ही लिया है, मतलब ये 7 और 25 में से मैक्सिमम 25 था, तो अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा। ठीक है, फिर इधर 9 आया और दूसरे वाले का 23 आया, तो इसमें मैक्सिमम अभी तक का 23 आ रहा है, तो मैंने 23 ले लिया। उन दोनों में जब मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं मैक्सिमम वाला ले रहा हूँ कि एक एक वाले का कितना मैक्सिमम आ रहा है, ऐसा कुछ। फिर मैंने क्या किया कि 7 और 5, 7 और 5 और 2 विच इज कितना आया कि 7 और 2 9 हो गए, 9 5 14 हो गए, तो एक में 14 आ रहा है और एक में 18 आ रहा है, तो अभी तक के इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 18। और पिछले वालों के कंपैरिजन में देखूं तो ये सबसे छोटा है, तो अभी तक का जो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 18 आ रहा है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि दो सवेरेज ले रहा हूं, उनका जो सम निकाल रहा हूं और उनके बीच का जो डिफरेंस है सबसे कम है, ऐसा कुछ सोचा मैंने। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक नंबर लेता हूँ। ठीक है, और लेट मी थिंक। तो मेरे को ठीक है, एक एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी कि मिनिमम से मिनिमम जो सम होगा वो कितना हो सकता है। तो मिनिमम से मिनिमम सम, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम सम कितना हो सकता है जो कि मैक्सिमम एलिमेंट होगा एक एरे का। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इतना तो सम होगा ही होगा अगर मैं स्प्लिट करता हूँ किसी सब एरे को, तो ठीक है, तो मैं मैक्सिमम एलिमेंट ले लेता हूँ, nums डॉट बिगिन कॉमा nums nums डॉट एंड। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ये मान लेता हूँ, और एंडिंग पॉइंट मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है कि एक ही सब एरे मेरे से बोले और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाए। तो इंट एंड एक ये हो सकता है मेरा कि nums डॉट बिगिन, nums डॉट बिगिन से लेकर कॉमा nums डॉट एंड, ठीक है, कॉमा 0 सम। तो ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो सकता है। उसके बाद एक इंट आंसर मान लेता हूँ जो कि मेरा अभी 0 है, या स्टार्ट मान लेता हूँ कि ठीक है मिनिमम आंसर इतना तो होगा ही होगा। और फिर मैं क्या करूंगा कि मेरे को क्या चीज दिखी कि मेरे को करना क्या है, मेरे को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे विल बी मिनिमम, मिनिमम। तो मैं उसको कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि अ, जैसे क्या हुआ, हाँ, अगर मैं मिनिमम, मिनिमम क्यों लूंगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पहले फिक्स करना है। तो मान लिया कि मेरे को जैसे ये दिया हुआ है कि हाँ मिनिमम मेरे को लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर मान लो कि मेरे पास पांच पांच सब एरे में स्प्लिट करने के लिए बोल दिया, तो कम से कम कितनी वैल्यू ले सकता हूँ, तो एक एलिमेंट लूंगा जो कि सबसे मिनिमम होगा एक एरे के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब, ठीक है। और फिर मैं एक while लूप चलाता हूँ, और एक स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। एंड यहाँ पे मैं मिड निकालता हूँ विच इज स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, वेट, बाई 2। ठीक है, और फिर मिड निकालने के बाद मैं ये चेक करता हूँ कि क्या अगर ये सम में कंसिडर करूँ, तो क्या मैं स्टार्ट इज टू लार्जेस्ट एलिमेंट एंड एंड इज टू सम ऑफ ऑल। मतलब मैं यही सोचूंगा ना, मैंने वहां से सोचा कि मैंने एक बार वो वाला क्वेश्चन किया था, क्या बोलते हैं, बुक एलोकेशन वाला। तो बुक एलोकेशन में हम क्या करते थे कि हमें दो बच्चों को बुक देनी है।
ठीक है, और मतलब बुक नहीं देनी, उनको पेजेस देने हैं, तो कम से कम कितने पेज दूं? ठीक है, एक बच्चे को तो कम से कम जो उसका लार्जेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि एज सच मेरे को सारी बुक्स देनी है, तो मैं वहां से यही चीज सोच पा रहा हूँ कि सारी देनी है तो कम से कम ये सबसे ज्यादा वाला है, ये तो देना ही पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने माना कि इतना तो होना ही चाहिए, कि इतना सम तो चाहिए कि लार्जेस्ट वाला तो सम होगा ही होगा। ठीक है, अगर मेरे को स्प्लिट करना भी है तो इसको देखते हैं कि अगर गलत होगा तो फिर उसके बाद हिसाब से देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब मेरे को यहाँ से ये समझ में आया कि ठीक है, मैं मेरे को क्या करना है कि एक मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि ठीक है, ये 7 लिया, एक जगह 25 लिया, दूसरी जगह 9 लिया, फिर 23 लिया, फिर एक बार मैंने 18 लिया था कि ये 10 और 8 मिलकर 18 बना रहे हैं और ये कुछ वैल्यू बना रहे हैं। तो मेरे को बेसिकली करना क्या है कि मेरे को नहीं पता कि ये जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ये मिड मेरे को क्या बता रहा है कि कम से कम इतनी वैल्यू ले लो और मैक्स टू मैक्स इतनी वैल्यू ले लो। अब यहाँ पे मैं बाइनरी सर्च सोच रहा हूँ कि ठीक है, मैं एक कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर वैल्यू मैं लेता हूँ और वहां पे देख लेता हूँ कि ये जो सम आ रहा है, ये सम को लेके क्या मैं इस एरे को सिर्फ दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं कर पा रहा हूँ तो एज सच मेरे को सम मिनिमाइज करना है, तो ये एक मेरा पॉसिबल आंसर है, इसको रख लूंगा और पीछे चले जाऊंगा मिनिमाइज करने के लिए, मतलब लेफ्ट साइड में। और अदरवाइज मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि भाई यहाँ पे तो आ नहीं पा रहा, तो एक काम करता हूँ, आगे चले जाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि ठीक है, इंट मिड निकालने के बाद एक इस पॉसिबल नाम का बना लेता हूं मैं फंक्शन। ये क्या करता है, मेरा मिड लेता है, एक एआरआर लेता है या फिर इसको नम्स बोल देते हैं, और एक मेरा ये लेता है कि कितने पार्ट में मुझे स्प्लिट करना है। ये तीन चीजें लेने के बाद मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, अगर ये स्प्लिट हो गए, अगर ये स्प्लिट हो जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि ठीक है, ये वाली वैल्यू रख लो और उसके बाद क्या करो कि पीछे चले जाओ, क्योंकि एज सच मुझे मिनिमाइज करना है। तो एंड इक्वल्स टू मिड मिड -1 ये कर दो। और नहीं तो भाई ये तो हो ही नहीं पा रहा स्प्लिट, तो एक काम करो कि आगे चले जाओ, मतलब इसकी रेंज बढ़ा दो और फिर यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न आंसर जो भी है। अब मैं एक दूसरा एक बना लेता हूँ इस पॉसिबल करके, बोल इज पॉसिबल, कि क्या इसको इतने पार्ट में स्प्लिट करना पॉसिबल है कि नहीं। तो मैंने क्या लिया, एक मेरी इंट मिड वैल्यू ली है, ठीक है, और एक वेक्टर इंट, और यहाँ पे एक नम्स लिया है और एक इंट के ले लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि इंट, मेरे को क्या पता है कि मेरा इतना सम होना चाहिए और इतना सम होते ही मैं आगे चले जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने सम निकाला इंट एक्स और वट एवर द नम्स दैट आई हैव गिवन। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम्म तो मेरे को कितने पार्ट पे स्प्लिट करना है, पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा। तो इंट काउंट, अभी मैंने क्या किया कि इसकी वैल्यू 1 रखी है कि अभी मैं एक पार्ट में तो स्प्लिट कर चुका। अब एक पार्ट का जब मैं स्प्लिट करता हूं तो मैं सम निकालता हूं, तो सम प्लस इक्वल्स टू, वेट, सम प्लस इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ एक्स उसके अंदर जोड़ता हूँ, और ये जब सम निकाल आता है तो मैं देखता हूं कि क्या ये जो सम आया, क्या ये सम मेरा मिड से बड़ा हो गया। क्योंकि अगर जैसे ही सम मेरा मिड से बड़ा हो जाएगा, तो मेरे को क्या करना है कि काउंट को एक बढ़ा देना है, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, और अब जो नया सम एलोकेट होगा वो दूसरे एरे को होगा, तो एज सच वो दूसरे एरे को होगा, तो मैं सम इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई कर दूंगा। सॉरी, नम्स ऑफ आई नहीं करूंगा, यहाँ पे सम इक्वल्स टू एक्स कर दूंगा, आई थिंक। या लेट्स सी कि काम करेगा कि नहीं। और ये जो काउंट मैं बढ़ा रहा हूं, मैं ये भी देख लूंगा कि भाई अगर ये मेरा काउंट जो है, ये जो मेरा काउंट आया है, अगर ये ग्रेटर देन की हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं दो पार्ट से ज्यादा में स्प्लिट कर रहा हूँ, दो पार्ट से ज्यादा में तो करना ही नहीं है, तो फॉल्स कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, यानी सही सही एकदम स्प्लिट हो गई ये दो पार्ट में, तो इसका रिटर्न कर देना ट्रू। अब देखते हैं ये गलत है कि सही है, पता नहीं, ऐसा कुछ कुछ तो सोच लिया है। अ, हम्म क्या क्या क्या, अ, हो गया।
ऐसा कुछ करके सोचा गया था। तो मतलब मतलब ये सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ था मतलब। होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूं, मतलब कि ऐसा है, जैसे अगर बुक एलोकेशन किया होगा या पेंटर पार्टीशन वगैरह वाले क्वेश्चन किए होगे ना, तो उसमें ऐसा जैसे बोला गया है कि मुझे क्या करना है कि भाई ये केवे दे दिया कुछ, और मेरे को बोल रहा है कि भाई स्प्लिट करो, जैसे कि मान लो कि जैसे हाँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे चीज सोची, क्या मैंने ये सोची कि यार मेरे को के से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट नहीं करना, उससे ज्यादा स्प्लिट हो रहा है तो दिक्कत है। और यहाँ पे स्प्लिट लार्जेस्ट सब एरे सम का मतलब कि भाई मेरे को एक एरे के अंदर इतना ही सम चाहिए। तो अब मैं कैसे पता करूं कि भाई ये जो मैंने सम डिवाइड किया है वो सही किया है? तो मेरे को तब पता चल गया कि कम से कम मैं इतना लूंगा, ज्यादा से ज्यादा इतना लूंगा। कि ऐसा हो सकता है कि मेरे को एक ही पार्ट में स्प्लिट करना है तो सब एरे के सारे एलिमेंट्स ले लूंगा, मतलब एरे के जितने एलिमेंट है। और नहीं तो कम से कम मेरे को तो सबसे लार्जेस्ट वाला एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, वरना उसके बिना तो मेरे सारे एरे के एलिमेंट्स कवर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा करके और वहां से फिर मैंने कर दिया ऐसा कुछ सोच समझ के, कि फिर मैं स्प्लिट करते गया मिड मान के, कि देखा केसेस ज्यादा में स्प्लिट हो गया तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो कम कर दो ना ज्यादा कर दो। खैर वो सब में तो थोड़ा बहुत मेरा चलता है दिमाग, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये बिना किसी लॉजिक के जैसे आंसर आ गया इसमें, या फिर यहाँ पे मतलब मेरे को इस चीज पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वजह से गड़बड़ हो रही है क्योंकि इज पॉसिबल समझा दो एक बार, ओके। सो मैंने इस पॉसिबल का हम्म इज पॉसिबल का मेरा कॉन्सेप्ट ये था, एक सेकंड में क्वेश्चन खोलता हूँ वापस। ट्राई करता हूँ मैं कि कैसे था वो, 7 2 5 10। हम्म ठीक है भाई। तो इस पॉसिबल में सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक यहाँ पे आ, एक मेरा मैक्सिमम एलिमेंट था, मैक्सिमम मैंने यानी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट इक्वल्स टू मैंने क्या लिया यहाँ पे, स्टार्ट इक्वल्स टू लिया सबसे मैक्सिमम एलिमेंट 10। फिर मैंने एंड एलिमेंट लिया विच इज सम ऑफ ऑल, यानी कि मेरा 7 2 9 5 14 और 24 और 8 32, तो ये मेरा 32 हो गया। अब मैंने मिड निकाला, मिड निकालने के बाद 32 + 10 विच इज 42 एंड डिवाइडेड बाई 2 21 आ गया। तो ये 21 क्या बता रहा है मेरे को, 21 मेरे को ये बता रहा है कि भाई अगर मैं अगर 21 पे डिवाइड करता हूं, क्योंकि मेरे को क्या बोला गया है कि यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करना है बस, तो मैंने माना कि ठीक है 21 मेरा वो आंसर होगा जिसमें मैं क्या करूंगा कि अगर मैं दोनों सब एरे को 21 21 साइज का बनाता हूं, ठीक है, तो ये मेरा एक परफेक्ट आंसर होगा अभी तक के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि दोनों सब एरे जो है मेरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और ये दोनों सम ऐसा मिलेगा मेरे को 21। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं क्या मेरा कभी 21 सम बन पाएगा, तो जैसे कि 7 2 5, तो 7 और 5 कितना होता है, 7 5 12 और 2 14। ठीक है, अब ये 14 हो गया, या फिर मैं 10 + 5 ले लेता हूँ या 10 + 7 लेता हूँ, कुछ भी लूंगा 21 नहीं बनेगा। तो ठीक है, मैंने माना कि मेरा 21 एक ऐसा पॉसिबल आंसर है। नेक्स्ट परमुटेशन, अरे बाप रे और देखते हैं, रुको भाई रुको। तो अब मैं क्या करूंगा कि ठीक है मैंने 21 मान लिया, तो यानी कि मुझे क्या पता है कि मेरे पास ये दो सवेरे स्प्लिट हो जाएंगे और ये दोनों सवेरे का सम 21 21 आएगा। तो अब यानी कि अगर 21 मेरा आंसर है तो दो से ज्यादा सवेरेज नहीं बनने चाहिए। ठीक है, तो अब ये चेक मैं करूंगा कैसे? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ठीक है ये मेरे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और ये एलिमेंट देने के बाद सबसे पहले मैं चला गया 7 पे। तो मैं 7 पे आया, और 7 पे आने के बाद मैंने बोला कि अभी तक का मेरा सम है 7। ठीक है भाई, 7 सम हो गया। मैंने इसको चेक किया कि मेरी मिड की वैल्यू कितनी थी, 21। तो अभी एक सब एरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि ठीक है 7 को इंसर्ट कर दे रहा हूँ, कि अभी तो मेरा एक ही सब एरे है। ठीक है, एक सब एरे के अंदर 21 से ज्यादा सम नहीं होना चाहिए, तभी मेरे दो पार्ट में स्प्लिट हो पाएंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। फिर मैं 2 पे गया, 2 मिला मेरे को, मैंने 7 में जोड़ दिया 9, और यहाँ पे क्या हुआ कि 9 हो गया मेरा सम, 9 हो गया सम।
तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, अभी भी ये 21 से कम है, तो ये एक सवेरे में आ सकता है। अब एक सवेरे में आ सकता है, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, यहाँ पे 2 रख लो। ठीक है, इसको 2 रख दिया। फिर मैं आगे गया। आगे जाते ही मेरे को 5 मिल गया। 5 मिला तो मैंने 9 में 5 जोड़ा, और 5 जोड़ते ही हो गया 14। 14 मैंने देखा कि ये अभी भी सम 21 से कम ही है, तो एक सवेरे के अंदर अभी ये आ सकता है। तो मैंने 5 को भी रखा यहाँ पे। फिर मैं 10 पे गया। अब 10 पे गया तो 14 में जैसे ही 10 जोड़ूंगा तो ये 24 हो जाएगा। तो मुझे क्या दिखा कि अबे यार, ये तो 24 हो गया, लेकिन मैं एक एज सच मेरे को ये 2 पार्ट में ही सिर्फ स्प्लिट करना है। तो एक पार्ट में सिर्फ 21, मतलब ऐसे इतने एलिमेंट होने चाहिए कि उनका सम 21 आए, लेकिन ये 14 में 10 जोड़ते ही 21 से तो ज्यादा हो गया। तो अगर ये 21 से ज्यादा हो गया, तो मैं क्या करूंगा कि भाई अब मैं दूसरे सवेरे में डालूंगा। ठीक है, तो अब मैं जो सवेरे टोटल थे मेरे पे, उसकी काउंटिंग कर दी 2, कि अब मेरे 2 सवेरे हो चुके हैं। ठीक है, और ये दूसरे सवेरे में अब मैं वैल्यू डालना चालू कर रहा हूँ। तो अब दूसरे सवेरे में कौन सा पहला एलिमेंट डालूंगा, यही। तो अब मेरा इस टाइम पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, वेट, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जैसे ही सम मिड से बड़ा हो गया, तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने सवेरे का काउंट बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, कि अब मैं दूसरे सवेरे के अंदर ये सम देख रहा हूँ। तो जब मैं दूसरे सवेरे के अंदर जब मैं सम देखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अभी जो मेरा करंट एलिमेंट है वही मेरे सम के बराबर हो जाएगा। क्योंकि पिछला वाला सम तो गया, अब मैं वापस सम कैलकुलेट करूंगा। तो वापस कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को 10 देगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी करंट सम जो है दूसरे सवेरे के लिए वो तो 10 है। मैंने देखा क्या ये 10 21 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो दूसरे सवेरे में डाल दो। ठीक है, डाल दिया। फिर उसके बाद मैं 8 पे गया। 8 पे आते ही मेरा सम हो गया 18। तो 18 सम हो गया, ये भी अभी 21 से कम है, तो भाई दूसरे वाले सवेरे में ये डाल दिया मैंने 18, सॉरी 18 नहीं 8 डाल दिया। तो और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे खत्म हो गया। खत्म हो गया तो मुझे क्या देखा कि हाँ भाई, ये अगर मैं 21 लेता हूँ सम, तो 21 लेने के बाद मेरे 2 सवेरेस बन गए, जिनके अंदर मतलब सारे एलिमेंट स्प्लिट हो गए, मतलब 2 सवेरे के अंदर मैं सारे एलिमेंट्स को स्प्लिट कर पा रहा हूँ। तो ये जो मिड आया है, ये मेरा एक पॉसिबल आंसर है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे एक सवेरे के अंदर कम से कम सम चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सच मेरे को कम से कम सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब 21 ये मेरी मिड वैल्यू थी, तो मैं एक वैल्यू कम कर दूं। यानी कि मिड -1 जो हम लोग करते हैं, कि ये वाला आंसर जो भी आया है इसको रख लो, कि ये एक पॉसिबल ऐसा सम हो सकता है जिसको लेके मैं एक एरे को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 दिया था, 4 दिया होता तो 4 बोलते। तो ये मेरा एक पॉसिबल आंसर है। इस पॉसिबल आंसर को लेके मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर पाता हूँ, तो इसको रखो। और एक काम करो कि अब ये 21 से छोटी वैल्यू पे चेक करो कि क्या 21 से कम लेने पे भी क्या मैं इस एरे को सिर्फ 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ क्या। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि फिर एंड इक्वल्स टू मिड -1 करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी 10 ही है। तो फिर इसका मिड निकालूंगा, 30 15 आ जाएगा। अब वैसे ही हम लोग 15 लेंगे यहाँ पे, तो अब मिड की वैल्यू जैसे ही 15 होगी, हाँ 15 लिया। ठीक है, 15 लेने के बाद मुझे क्या देखा कि ठीक है, यहाँ पे 7 ले लेता हूँ। 7 लेने के बाद मेरे को क्या मिला कि ठीक है, अभी मेरा पहला सवेरे है, तो मैंने 7 देखा, 7 तो मेरा मिड इससे छोटा है। तो ठीक है, अभी इसके अंदर 7 डाल दो। 7 डाल दिया, सम अभी एक ही स्प्लिट अभी एरे बना रहे हैं, फिर ये 2 पे गए। ये 2 जोड़ने के बाद 9 हो गया, 9 देखा वो भी अभी 15 से छोटा ही है, तो दूसरा वाला भी डाल दो। ठीक है, दूसरा वाला भी डाल दिया। अब यहाँ पे गया जैसे ही तीसरे वाले पे, अब मेरे को यहाँ पे क्या देखा कि 5, चलो 5 आया तो भाई 7 2 9 और 5 और 5 14, 14 आया तो ठीक है, ये अभी 15 से छोटा ही है, तो इसी के अंदर डाल दो। अब इसी के अंदर मैंने डाल दिया। हाँ, एक सेकंड, हाँ इसी के अंदर डाला है। और यहाँ पे मैंने कुछ सही किया है ना, मैं जब आ जाता है तो मिड -1 करता हूँ, हाँ ये सब तो ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को क्या देखा कि चलो 5 डाल दिया, ये 10 आया। अब 10 आया तो सम आ गया 24। अब 24 मिड से तो बड़ा है, तो मैं दूसरे सवेरे को बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सवेरे बनाया, उसके अंदर मैंने 10 डाल दिया। 10 डालने के बाद मैं अगले वाले पे जंप कर गया। अगले वाले पे जंप करते ही मेरे को क्या देखा कि भाई 18, क्योंकि 10 यहाँ पे था पहले से ही, और ये जोड़ते ही 18 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 18 होगा, ये भी मिड से बड़ा हो गया, और मिड से बड़ा हुआ तो यानी मुझे एक और सवेरे चाहिए होगा। अगर मुझे एक और सवेरे चाहिए, यानी सवेरे की काउंटिंग हो गई 3।
अब 3 सवेरे हो गए, बट मुझे 3 सवेरे की तो जरूरत ही नहीं है। मुझे तो 2 ही सवेरे के अंदर ये स्प्लिट करना था। तो मेरे को बेसिकली अगर मैं ऐसा सवेरे बनाता हूँ जिसके अंदर सम 15 रख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 3 सवेरे चाहिए अगर मुझे उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये सवेरे का काउंट जो है वो हो गया मेरा ज्यादा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा जैसे ही काउंट ग्रेटर देन की हो गया तो फॉल्स, कि मैं स्प्लिट नहीं कर सकता भाई 15 सम लेके। तो एज सच में 15 सम लेके स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को बढ़ा दूंगा कि ठीक है कि भाई ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पाया ये सम लेके, यानी कि मैंने जो सम लिया है वो छोटा लिया है, मुझे सम और बड़ा लेना चाहिए। तो स्टार्ट इसको टू मिड प्लस वन करेंगे, तो भाई मिड की वैल्यू क्या है, 15, 16 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, मिड प्लस वन करके 16 आया, और 16 और फिर एंड है 20। तो ये 16 और 20 36 आ गए, और 36 का आधा कर देंगे, विच इज कितना आएगा, 17 आएगा ना, नहीं 18 आएगा, 18 आएगा। तो एज सच 18 आएगा, तो हम फिर यहाँ पे 18 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 18 में तो हम देखेंगे कि हाँ भाई ये 7 2 5, ठीक है, ये एक के अंदर आ सकते हैं, और 10 और 8 एक के अंदर आ सकते हैं, तो दो ये एक पॉसिबल आंसर है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि और छोटा कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि ये एक पॉसिबल आंसर है, इसको रख लो 18 को, और उसके बाद क्या करो, एंड डिस्कस टू मिड माइनस वन कर दो। ठीक है, तो फिर उसके बाद एंड डिस्कस टू मिड माइनस वन कर देंगे, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। आया। हाँ। मेरे को एक कोड फोर्सेस पे काम करना पड़ेगा, ये मेरा ज्यादा ही ढीला है, ये खेल खत्म हो जाएगा इसमें। ये मैं थोड़ा बहुत समझा इसलिए पाया क्योंकि ये मैंने लेक्चर से नहीं देखा था कहीं, ये मैंने खुद पढ़ा था। वरना जो लेक्चर वाली चीजें है ना वो तो मेरे उड़ गई हैं बिल्कुल, कि वो तो मुझे समझ में भी नहीं आई है और मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया है पूरा। मतलब वहां आ जाती थी, फिर बाद में दिक्कत हो जाती थी कि नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। कैन यू, ओके, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। हम्म। कहाँ से पढ़े यार, ये से अपने पढ़ा डीएन। अच्छा, मैंने लेक्चर जो था वो तो यार नाम नहीं ले सकता, मतलब नाम लूंगा तो फिर वही है कि भाई थोड़ा सा हो जाएगा, बट मतलब बेसिकली कैसे बताऊं यार। मतलब वैसे तो मैं डीएसए अब लेक्चर से जहां से ही पढ़ा था वहां से मेरे को समझ में नहीं आया, और लेकिन अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तो मैं जीएफजी से पढ़ रहा हूँ, और मेरे को अगर डाउट वगैरह होता है तो मैं ये क्या कहते हैं इसको प्रेफर करता हूँ, जीपीटी या जेमिनाई को अपना समझने के लिए। कैन यू एक्सप्लेन प्लीज होंगे। सो ओके भाई देखो, मेरे को ये करना है कि एक सवेरे दिया हुआ है, मतलब सवेरे नहीं दिया, एक एरे दिया है, और मेरे को बोला गया है कि के पार्ट में स्प्लिट कर दो इसको। भाई ये कोड फोर्सेस पर समझ है ही नहीं आता, कॉन्टेस्ट कैसे दूं, बड़ा कंफ्यूज। अरे भाई अभी देखो, अभी मैंने कॉन्टेस्ट दिया, अब इस कॉन्टेस्ट में हुआ गया, इसने क्वेश्चन मेरे को दिया कि ये करना है, लेकिन सॉल्यूशन उससे बिल्कुल मतलब कुछ अलग सोचना पड़ा, बिल्कुल ही अलग चीजें सोचनी पड़ी, और वो क्वेश्चन और इनके जो इनपुट आउटपुट है वो कुछ मैच नहीं खा रहे। तो बेसिकली बस आपको क्वेश्चन पढ़ के अपना दिमाग ये मारना पड़ेगा कि भाई आंसर कैसे आ जाए, कुछ भी। जैसे ये तो मतलब क्वेश्चन से ही आपको समझना पड़ेगा, आप इनपुट आउटपुट देख के मे भी नहीं समझ पाओगे। नहीं, नाम उसलिए बेकार नहीं, वो थोड़ा अच्छा खासा चैनल है, ठीक है। तो ये है कि भाई यूट्यूब पे ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किसी के यूट्यूब चैनल को डिफेम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को भी कई लोग देख रहे हैं और फिर मैं डिफेम कर दूं, और ये सब है भाई। वेटिंग फॉर नेक्स्ट मिनट। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस टुमारो, फाइन। सो माय स्ट्रीम इज स्टार्टेड फ्रॉम 2 to 2:30 एंड टिल 11 पीएम, मतलब मैं ऐसा है कुछ 8 9 घंटे की स्ट्रीम करता हूँ।
ठीक है, और बेसिकली मैं यहीं पे पढ़ता हूँ कि मेरे को भी लोग मिल गए जिनसे बातचीत कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। नो नो नो, स्ट्राइवर नहीं है, वो हिंदी में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। मतलब ये है कि इसलिए भी है कि क्योंकि भाई वो मुझे समझ में नहीं आया तो कोई जरूरी नहीं है दूसरे को भी समझ में ना आए। और मतलब बेसिकली ये है ना कि मैं बचपन से ऐसा सीन है मेरे साथ कि मोस्टली मैं खुद ही पढ़ता हूँ चीजें, ठीक है। और मतलब ना मैंने आज तक कभी कोचिंग लिया और ना कुछ किया है ऐसा। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं इस तरीके से ट्रेंड हूँ कि मैं हर चीज खुद ही सीख जाऊं। हाँ अबे ठीक है। अबे यार, ठीक है, तो मेरे को वही सारी प्रॉब्लम हुई है कि बेसिकली मैं यूट्यूब पे ज्यादा फोकस हो गया, यूट्यूब पे नहीं मतलब किसी लेक्चर पे, और मुझे लगा कि वो मेरे को सिखा देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे को खुद ही सारी चीजें वापस सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक डिफिकल्टी लेवल जैसे बढ़ता है तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। वो एक डोपामिन की तरह है कि आपको लगता है आप सीख रहे हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा आप सीखते नहीं हो, आप बस वो क्वेश्चन वो जो करा रहे हैं वो याद कर लेते हो। What your tech stack? So my for this my tech stack is that C++, and for development my tech stack is TypeScript. TypeScript Node.js. Now currently I'm learning Golang also. कितना नहीं बोलना था। अरे भाई, ठीक है ठीक है, जाने दो, जाने दो भाई। I'm in second year now. Till now, I have learned C, C++, and DSA is going on. What should I do? देखो बैकएंड डेवलपमेंट, कैन यू प्लीज। ओके भाई, तो देखो बैकएंड डेवलपमेंट में इसका आंसर तुम खुद ही ढूंढ लोगे। देखो बैकएंड डेवलपमेंट की मैं लैंग्वेजेस बता देता हूँ जो ज्यादा प्रेफरेबल हैं। वो है भाई मैं इसका आंसर दे दो फिर तो मैं बताता हूँ। तो ज्यादा प्रेफरेबल क्या है, अगर आप एमएनसी साइड देखते हो तो एमएनसी साइड में जावा ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर आप स्टार्टअप साइड देखते हो तो जेंगो और गोलैंग ज्यादा प्रेफरेबल है। अब दूसरी बात, मैंने नोड का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में जाते हो या आपको कोई सजेस्ट भी करता है कि भाई डेवलपमेंट सीख ले, तो सबसे पहले आपको, आप सीखने जाते हो डेवलपमेंट तो आपको सिखाया जाता है एक्सप्रेस नोड जेएस बेसिकली। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा अगर सीखने गया तो सबसे पहले यही सीखेगा। तो इसमें इतना कंपटीशन मिलेगा कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, और ये जो लैंग्वेजेस हैं जैसे जेंगो हो गया, गोलैंग हो गया, या रस्ट हो गया, ये सब ज्यादा सीखते नहीं है बिकॉज ऑफ हार्ड। तो अगर आपको बेटर जॉब चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आपको कंपटीशन से हटना पड़ेगा। और कंपटीशन से हटने का ये सब तरीका है कि आप बेसिकली हार्ड चीजों पे ज्यादा फोकस करें अगर आप अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर पे हैं तो, क्योंकि इजी तो आप सीख जाओगे, हार्ड सीखने में टाइम लगेगा। तो अगर तुम स्टार्टअप साइड जाना चाह रहे हो तो गोलेंग या जेंगो में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो। अगर तुम एमएनसी साइड जा रहे हो तो जावा प्रेफर करो। दैट्स इट। ये है डेवलपमेंट का, बैक एंड डेवलपमेंट। और इसके साथ एक और चीज ध्यान रखना कि सिस्टम डिजाइन भी। और डीएसए समझ नहीं आता क्या करूं, समझ नहीं आता तो भाई मैं बस जितना जो समझाऊं वो मैं समझा सकता हूँ कि लेक्चर मत देखना ज्यादा, ठीक है, और प्रैक्टिस करो भर भर के। क्योंकि मैं कर रहा हूँ मतलब थोड़ा बहुत मेरा दिमाग चलने लगा है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस भाई, अब कई लोग बोलते हैं ये शीट कर लो वो शीट कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई। वो शीट तुम करने जाओगे वो दो अभी ओए राउंड हो रहे हैं, ओए राउंड में नॉन स्टैंडर्ड डीएसए और स्टैंडर्ड डीएसए दो चीजें होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड डीएसए में क्या होता है कि अभी जो आप शीट में क्वेश्चन देखते हो या फिर एक पर्टिकुलर तरीके का क्वेश्चन कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस पैटर्न का है, ऐसे हो जाएगा। और नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्या होता है, कुछ नहीं पता क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम लगती है। जैसे कि ये कोड फोर्सेस वगैरह पे जो कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, ये नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं कि आपको खुद ही पकड़ना पड़ता है। अरे अरे भाई, ठीक है, तो ये बेसिकली आप ओए राउंड को अगर देखते हो तो ओए में नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पूछते हैं 80%, जिसमें मैथ्स वगैरह ज्यादा कुछ लगता है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन डिस्कस वगैरह तो हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली दोपहर वाला जो टाइम रहता है उस टाइम पे तो मैं पढ़ रहा हूँ। और ये है कि, और
जो ऐसे मेरा टाइम मिलेगा, जैसे कि अभी ये रात में हो जाता है कि मैं एक टाइम पे आके थोड़ा सा होता है कि चलो अब कुछ और कर लेते हैं, तो उस टाइम पे फिर मैं नए नए क्वेश्चन देख के उसको समझ के ट्राई करूंगा कि एक्सप्लेन कर पाऊं मैं। नहीं है, स्ट्रीम तो डेली होती है, स्ट्रीम डेली होती है, 2 बजे से 2 या 2:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक डेली। आया गया क्वेश्चन डिस्कस कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन डिस्कस करना होता है तो चैट, क्योंकि और कोई सोशल मीडिया तो मैं यार बिल्कुल भी यूज नहीं करता। फाइनल ईयर है, क्या करूं कुछ बताओ जिससे निकलते निकलते जॉब लग जाए, समझ लो मुझे कुछ नहीं आता। अभी से कहाँ से स्टार्ट कर, से पढ़े कहाँ से, क्वेश्चन करने के लिए भी तो थ्योरी पहले आना चाहिए। हाँ, तो देखो, तुम ये जैसे जीएफजी है, ठीक है, तो ये एक लिंक के रूप में शेयर कर देता हूँ इधर ही। ठीक है, ये जो लिंक है, तुम इस लिंक पे जाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली इतने ही टॉपिक्स है, ठीक है, और ये आपको पढ़ना रहता है। अब ये होगा कि पढ़ते पढ़ते जैसे कुछ समझ में नहीं आया बिल्कुल, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे गया और भाई मेरे को ये क्वेश्चन था सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव्स। अब मुझे दूर दूर तक ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है इसमें। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इस क्वेश्चन को उठाऊंगा और इसको उठा के जेमिनाई या जीपीटी किसी को भी दूंगा और ब्रूट से सोचना चालू करूंगा, ठीक है, ब्रूट से। मतलब कि ऐसा होता है कि आप भाई जेमिनाई पे जाओ और सीधे उससे बोलो कि भाई इसका सॉल्यूशन दे दे, ठीक है, तो वो सीधे सॉल्यूशन दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको उससे ये पूछना है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है और मैं इससे ब्रूट कैसे सोचूंगा। तो वो आपको मल्टीपल वेज बताएगा कि भाई ऐसे सोचा वैसे सोचा। भाई जैसे इससे ब्रूट कैसे सोचूं, ऐसा कुछ डालोगे तो मे बी ये बताएगा कहानी कि तुमने क्या ढूंढा है, एक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस जैसे 3 4 5 जैसे सम एन के बराबर। तो ब्रूट फोर्स का सीधा मतलब है सारे पॉसिबिलिटीज चेक करो, कोई भी सीक्वेंस किसी एक नंबर से शुरू होगी, वो नंबर क्या हो सकता है। तो ये तुम्हें बताएगा और ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो कि इससे ब्रूट पूछो, बेटर पूछो, ऑप्टिमल पूछो, जिससे आपकी आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन को सोचना कैसे रहता है। और हाँ, ये शीट आप कोई फॉलो करो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेजर जो फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है कि भाई आप जब तक ना सीखो तब तक आप दूसरी जगह मत जाओ, ठीक है। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, हमें क्या लगता है कि हम ये भाई शीट के 5 क्वेश्चन कर देंगे और हमें डीएसए आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। या 200 300 क्वेश्चन करने से भी डीएसए नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली आपको, मुझे जो लगता है कि अगर आप सही में डीएसए सीखना चाह रहे हो तो 500 600 क्वेश्चन तो करो भाई, ठीक है। और एक टॉपिक का ऐसे करो, ऐसे ऐसे समझो, जब समझ में आ जाए एकदम डीपली कि हाँ भाई ये चीजें ऐसी चीजें हैं, तो फिर उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, करते रहो करते रहो। अब बहुत लोग ये क्या करते हैं कि भाई मेरे को सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो आई वुड प्रेफर कि ठीक है तुम ये सब पढ़ लो, पढ़ के क्वेश्चन करने गए, क्वेश्चन जब कर रहे हो तो इजी पे भाई आधा घंटा दे दो, आधा घंटा 45 मिनट, मीडियम पे 1 1.5 घंटे दे दो, या हार्ड पे भाई 2 दिन दे दो। अगर 2 3 दिन में समझ में नहीं आ रहा तो उसका हिंट देखना, सॉल्यूशन मत देखने लग जाना सीधे, हिंट देखना कि मैं, या फिर उसको बताओ कि मैंने ये सोचा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो वो तुम्हें बता देगा खुद ही कि क्या क्या गलतियां हैं। और अगर तुम्हें खुद को टेस्ट करना हो तो बहुत लोग ये करते हैं कि भाई मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ तो इम्प्रूव कैसे करूंगा। इम्प्रूव करना है, जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें रजिस्टर करके बैठ जाओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम कितना इम्प्रूव कर रहे हो। क्योंकि आप 1000 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए मुझे आता है, बट आप बेसिकली आप जब डीएसए करने जाओगे आपको पता चलेगा, मतलब कॉन्टेस्ट में, कि अरे ये तो 1000 क्वेश्चन चेप दिए हैं। बाय वॉचिंग अदर जंप इन, खुद से कोशिश करो, व्हेन यू गेट बोर्ड एंड स्टक करो, या भाई सेकंड ईयर में हूँ कैसे स्टार्ट, लाइक बस हमें पैटर्न पता चलता है, बेस ऑन पैटर्न यू कैन सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन एंड लॉजिक बिल्डिंग। हाँ, यही तरीका है, इट्स लाइक टोटली मैथ्स, मैथ्स है भाई टोटली। कि अगर किसी ने मेंस वगैरह की प्रिपरेशन की होगी या एडवांस की, तो एक सेंगेज करके बुक आती है, सेंगेज या अरिहंत, ठीक है। तो वो वाली अगर किसी ने बुक देखी होगी, तो उसमें क्या है कि भाई 100 100 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं एक ही चैप्टर के ऊपर। तो मैंने मैंने वही बुक करी थी, ठीक है। और
बेसिकली वहां से मेरे को क्या आइडिया लगा, मेरे को पहले समझ में नहीं आते थे एडवांस के क्वेश्चन, लेकिन भाई मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन करे एक ही चैप्टर के, मतलब लगभग 250-300 क्वेश्चन, तब जाके मेरे को समझ एडवांस का क्वेश्चन भी लगने लगा कि अबे ये तो ऐसे होता है। सो हाँ हाँ, तो वैसा ही तरीका इधर डीएसए भी है। बेसिकली डीएसए कुछ नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथ्स इन डिसगाइज। मतलब आपको सोचना मैथ ही पड़ेगा। भाई यूट्यूब से कहाँ से करूँ? भाई देखो, हिंदी में करना है कोडर आर्मी, इंग्लिश में करना है तो स्ट्राइवर। मैं तो यही सुना है, ठीक है, और मैंने दोनों को फॉलो नहीं किया। ठीक है, मैंने सुना है कि कोडर आर्मी बहुत बढ़िया पढ़ाता है हिंदी में, और इंग्लिश के लिए स्ट्राइवर मोस्ट ऑफ द बच्चे फॉलो करते हैं, बट वो डिपेंड करता है। टिप्स, टिप्स तो यही है कि भाई ब्रेक मत ले लेना। टिप यही है। मतलब होता है कि भाई 5 दिन किया और फिर छठे दिन ब्रेक, या फिर वो छठे दिन का सातवां आठवां 3-4 दिन और मिला के ब्रेक ही ब्रेक, वो मत करना। वो नहीं करोगे तो बाकी सब ठीक है, फिर तो कंसिस्टेंसी मैटर। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है यार, वो तो डिपेंड करता है। फॉलो कुणाल कुशवाहा, इंग्लिश जावा बेस्ट। हाँ नहीं, कुणाल कुशवाहा बेस्ट है, वो तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि उन्होंने सारे टॉपिक्स नहीं कराए ना, तो बाकी टॉपिक्स कहाँ से? मतलब कुछ ऐसे होते नहीं है कि सिस्टमेटिक मैनर में जिन्हें करना है कि सारे टॉपिक्स ही मिल जाए, तो उनके लिए मैं ऐसा बोल रहा था। कुणाल कुशवाहा का तो मैंने भी सुना है कि वो बढ़िया है, लेकिन वही है कि उनके बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग हैं जो हैं डीएसए में। या नहीं, फॉर बिगिनर्स बिगिनियर, फोर्थ सेमेस्टर से शुरू कर सकता हूँ क्या ब्रो? हाँ भाई, कभी से भी शुरू कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट करना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट कर सकते हो भाई, बिल्कुल, करने में क्या दिक्कत है? मतलब बेसिकली अगर आप फ्रंट एंड तो बनाओगे ही, या नेक्स्ट जीएस वगैरह इन सब पे थोड़ा बहुत तो काम करोगे, तो आपको जावास्क्रिप्ट तो चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट एंड देन टाइप स्क्रिप्ट, हाँ ये बहुत, खाली जावास्क्रिप्ट नहीं, टाइप स्क्रिप्ट भी कर लेना साथ में, मतलब उसी के ऊपर है, रैपर ही है, इजी पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट तो मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, किसी को देखना हो पूरा ही पढ़ा दिया था, देखना हो देख सकता है। फिर मैंने रोक दी थी, टाइप स्क्रिप्ट वाली सीरीज नहीं पढ़ाई थी पूरी। जल्दी जल्दी जान जाओ जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट का काम करता, फिर आगे मूव करो। आपकी लीड कोड प्रोफाइल शेयर कर दो ताकि आपको फॉलो कर सकूं। हाँ, थैंक यू भैया। मैं फोर्थ सेमेस्टर से डीएसए शुरू कर दूंगा, उसके लिए पहले क्या प्रिपरेशन करूं बता दो। हाँ, तो कोई भी एक लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या जावा, इन दोनों का 4-5 चीजें होती हैं, बस वो पता कर लो। 4-5 चीजें का मतलब कि जैसे कि इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, इफ एल्स, और उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, और बस, और एरे वगैरह और स्ट्रिंग वगैरह कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और एक हैश मैप और हैश सेट, मतलब बेसिकली कलेक्शन। एक जावा में कलेक्शन बोलते हैं उसको, और सी प्लस प्लस में एसटीएल बोलते हैं। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा सही कर लो डीएसए चालू करने के पहले, तो थोड़ा सा तुम्हें इजी साइड पे पड़ेगा, क्योंकि पूरा डीएसए इतने में ही खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं लगता एक्स्ट्रा। आपके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो? सो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट इन फोर्थ ईयर, एंड मेरा ये है कि मैं पहले से डेवलपमेंट करता था, और डेवलपमेंट में बेसिकली मैं प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट वगैरह बनाता था। तो वो प्रोडक्ट वगैरह बनाए, लेकिन बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं उन प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाया। ठीक है, और दूसरी चीज ये हुई कि एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में जानता था, और जानता हूँ अभी भी, लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि मैं एक किसी कंपनी का ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के लिए रेपो को वो कर रहा था, मैं क्लोन कर रहा था अपने सिस्टम में। तो बिकॉज ऑफ वो डॉकर से मेरे को करना था, तो मैंने वो चीज की, और उसके वजह से क्या हुआ कि डॉकर पे इतना ज्यादा लोड पड़ा कि मेरा सिस्टम क्रैश कर गया, और क्रैश करने की वजह से उसकी मेमोरी लीक होने लगी, और ये प्रॉब्लम सब आ गई। तो उस दिन मैं डर गया, क्योंकि मेरा लैपटॉप पूरा बैठ गया था, और पता नहीं उसमें काफी चीजें अपने आप उड़ गई। तो उस वजह से बेसिकली मेरा पहले यही प्रोग्राम था कि मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करूंगा, और ये डीएसए वगैरह में उतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं था कि मुझे डीएसए करना है। ठीक है, तो मेरा कॉलेज ये केसीसी इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, मैं यहीं ग्रेटर नोएडा में ही है।
बना लो एग्जैक्ट सम का और एक डिस्टिंक्ट वाला देखा सेम वाला। अब बता तो दिया। केसीसी इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। सो यही हुआ, तो इसके वजह से भाई मेरे को थोड़ा डर लग गया, तो मैंने डेवलपमेंट बंद कर दी। मतलब बंद कर दी, मतलब वो जो प्रोडक्ट बनाता था या मैं रेपो क्लोन कर देता था कोई भी डॉकर वगैरह, उतना हैवी मेरा झेल नहीं पाया लैपटॉप और छोड़ दिया मैंने। तो इस वजह से छोड़ के अब मेरे पे ऑप्शन ज्यादा थे नहीं। ठीक है। और इस और एक और प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरे साथ क्या था कि इंटर्नशिप वगैरह, क्योंकि मैं मेरा ये है कि मुझे कुछ और चीजें भी सीखनी है, बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ा इंटरनेशनल का प्रिपरेशन करना है। तो अब ये है कि अगर मैं इंटर्नशिप करने जाता हूँ तो डेवलपमेंट में इतनी बेकार इंटर्नशिप है कि 2-2 हज़ार रुपए देते हैं महीने के। अब भाई तुम एक मेहनत करो और तुम बहुत कुछ जानते हो, एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लेवल पे तुम चीजें जानते हो, और फिर एक बंदा तुम्हें 2 हज़ार रुपये महीना देता है, तुम काम करोगे कभी नहीं। तो वही वाला मेरे साथ थोड़ा हुआ कि नहीं भाई, इतने कम में तो मैं काम धंधा नहीं करने वाला। तो इससे बढ़िया है कि मैं कहीं और शिफ्ट कर जाता हूँ जब तक कि मैं एक नया लैपटॉप ना खरीद लूँ। तो इस वजह से मैंने डीएसए पे थोड़ा स्विच किया। और ये इतना ज्यादा सिस्टम हैवी चीज नहीं है, तो मैं आराम से इसको कर सकता हूँ। और बिकॉज ऑफ मेरे को ये है कि डीएसए बहुत लोग अकेले अकेले करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती कि अभी डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो मैंने क्या किया कि मैं अगर डेवलप नहीं हो रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा, या डेवलप हो भी रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा। तो बिकॉज ऑफ मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल खोला, और इसलिए भी खोला क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कॉलेज में जिनको कलीग्स नहीं मिलते, ठीक है, जिनके साथ वो प्रिपरेशन कर पाए या डिस्कस कर पाए चीजें। तो यहाँ पे वो सारे लोग कलेक्ट हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन, एक दूसरे से बातचीत भी कर पाएंगे, डिस्कस भी कर पाएंगे, ऐसा कुछ है। तो अब मैं ये डीएसए कर रहा हूँ, जब तक मैं फोर्थ ईयर में हूँ भाई। फोर्थ ईयर अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। हाँ। खैर धीरे धीरे सबकी इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगी, जॉब वॉब तो लग जाती है यार। हाँ, बहुत लोग ये भी करते हैं कि जॉब के लिए पढ़ते हैं, एक ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई। जॉब के लिए मत पढ़ो, आप एक्सीलेंस के लिए थोड़ा पढ़ो, कि भाई आप जानोगे तो आपको कैसे निकाल दिया जाएगा जॉब से। मतलब जॉब से तो उसको निकाल देते हैं जो भाई फंस जाता है, उसे पता ही नहीं है चीज क्या है। लेकिन जब आपको उस चीज की एकदम इन डेप्थ नॉलेज होगी, आपको कभी नहीं निकालेंगे। या आप स्पेसिफिक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना सकते हो प्लीज। किस टॉपिक तक कवर कर चुका? अब मैंने यार वैसे देखा जाए तो लेक्चर से तो मैंने ग्राफ तक कवर किया है, लेकिन मैं फंस जाता हूँ क्वेश्चन करने में, तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। अ, कौन से स्पेसिफिक एक्चुअली मैं बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, स्पेसिफिक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाने के लिए लैपटॉप उतना हैवी नहीं है। क्योंकि चलो अरे ठीक है, लैपटॉप की भी यहाँ पे मेन बात नहीं है, बेसिकली ये है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब इसी वजह से मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, वरना मैं वीडियोस बना बना के डाल सकता। क्योंकि फिर लाइव स्ट्रीम में किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ऐसा है। और फिर मेरे को जब जैसा मेरे को टाइम मिलेगा या, तो उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें। ये आई विल ट्राई कि मैं कोई क्वेश्चन में से कोई पूछता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और बेसिकली मैं अगर नहीं भी कर पा रहा हूँ तो मैं तरीका बता देता हूँ कि कैसे तुम खुद ही समझ सकते हो, ये वाली चीज है। खैर आज के लिए तो इतने रखते हैं, और थोड़ा मिलता हूँ मैं कल। ठीक है। कल ऐसे ही 2-2:30 बजे मिलते हैं। एंड हेलो बडी। हेलो। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू टुमारो। गुड नाइट।